Hello. Test. Test one. Test one. Test. 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 Test one. Test one. Test. Test one. Mic checking. Check. Check. Test. Test one. Test. Test one. Test.
ट्रॉफी 2023 आजचा पहिला दिवस. काही वेळातच या स्पर्धेचा उद्घाटन सोहळा मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये होतोय. संपूर्ण देशभरातील टेनिस बॉल क्रिकेटपटू या क्रिकेटच्या मैदानावरती, या हिरव्यागार अशा मैदानावरती काही वेळातच आपल्याला खेळताना दिसेल. आजचा पहिला दिवस या स्पर्धेचा आणि या ठिकाणी काही वेळातच मान्यवरांच्या हस्ते या स्पर्धेचा शुभारंभ या मैदानावर केला जातोय. दोन्ही टीम या जातीतले बेगीन लायनअप जावची. आमच्या आयच्या उक्तावण सोहळ्याची मुखेल सोयरी श्रीमती दलायला लोबो आमदार शिवोलीची तशीच सीएसची वायस चेअरमॅन हांगा पाविल्ली आसा. आणि आमचे जे ऑर्गनायझिंग कमिटीचे मेंबर आसा मोहित बाब चोपडेकर जो चेअरमॅन, तो तशेंच ताजे जे सहकारी आसात ते मॅडमीक घेवपाक येतात असो रिक्वेस्ट करता. दोन्ही ज्यो टिमी आसा मातशें लायनअप रावचे. ध्रुव पारशे तुमकां हो लास्ट कॉल वता. साई समर्थ ऑलमोस्ट रेडी जाल्ले आसा. ध्रुव पारशेक हो लास्ट कॉल होता. तुमचो जो डगआउट आसा तो मातसो जातीतले बेगीन घेवचो. आमची मुखेल सोयरी हांगा पाविल्ली आसा, सो तुमकां तितलो रिक्वेस्ट करता जातीतले बेगीन तुमी हांगा रेडी रावचे. एक गोंयचो असो मोठो टुर्नामेंट ह्या वर्साचो, ह्या सिजनाचो अशें म्हणपाक हरकत ना, कारण गोंयचेच न्ही जाल्यार अख्ख्या भारताचे व्हडले व्हडले खेळाडू आसतले ते ह्या टिमीक ह्या टुर्नामेंटाक हांगा आपली जी टॅलंट आसा क्रिकेटीची ते सादर करतले. म्हाका दिसता ज्या तरेन एक बरो माध्यम आनी एक बरो सुंदरसो ग्राउंड आनी एक बरी पीच जी आमकां दिल्ली आसा, ज्या ऑर्गनायझिंग कमिटीन तांकां तितली दाद दिवपा जाय आनी तितलोय आमी तांकां तेंको दिवपा जाय. उज्वला तुकाराम चोपडेकर मेमोरियल ट्रॉफी जो हांगा ह्या ग्राउंडार आज फाल्यां परवा म्हळ्यार 12, 13 आनी 14 मेक खेळिल्लो वतलो. ताच्या पयलीं हांगा जो टुर्नामेंट जाल्लो तो इंटर वर्ल्ड क्रिकेट टुर्नामेंट जाल्लो 30 एप्रील आनी 7 मे आनी ताची फायनल आसतली 14 मेक. सो तोय बी एक टुर्नामेंट हांगा घडोवन हाडिल्लो ह्या ऑर्गनायझिंग कमिटीन. बरेचशे सुंदरश्यो ट्रॉफी, बरे गडगंज ट्रॉफीज, तशेंच अशे नामवंत अशे खेळाडू आनी आमची जी मुखेल सोयरी आसा तांकांय इंट्रोडक्शनाची गरज ना. गोंय राज्याची एक शिवोली मतदारसंघाची आमदार तशेंच ईएचची वायस चेअरमॅन श्रीमती दलायला लोबो हांगा पाविल्ली आसा. आमी व्हडा दबाजान आनी मोठ्या काळजान तांकां येवकार करता. हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक जोरान ताळी दिवन मॅडमीक येवकार करचो ह्या उक्तावण सोहळ्याक. ध्रुव पारचे तुमकां हो लास्ट कॉल, मातशी जातीतले बेगीन ग्राउंड घेयात. ध्रुव पारचे टिमीक रिक्वेस्ट करता जातीतले बेगीन लायनअप करचे.
नमस्कार. उज्वला तुकाराम चोपडेकर मेमोरियल ट्रॉफी जाका अख्खें गोंय आतुरतेन वाट पळयतात कारण गोंयचोच न्ही जाल्यार म्हाका दिसता ऑल इंडिया लेवलाचो जो टुर्नामेंट केला थंय आमकां मोठे मोठे अशे इंडियाचे प्लेयर गोंयचे बरे प्लेयर खंयच्या खंयच्या टिमीक वेगवेगळ्या टिमीक मे बी आज फाल्यां अशें आमकां दिश्टी पडटलें. आनी ज्या मोठ्या काळजान ज्या मोठ्या दबाज्यान हो मोहित चोपडेकरान टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाचें थारायल्लें आसा ताचें उक्तावण सोहळोय बी बरो मोठो गडगंज असो जातलो. मोहित बाबाक दिसलें की जेन्ना आमी क्रिकेट म्हणटा क्रिकेट आज असो खेळ जाल्लो आसा जो सगळ्या कम्युनिटीक तूं जावं खंयच्या कास्टाचो तूं जावं खंयच्या रिलीजनाचो तूं जावं खंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतलो तूं डिफरंट एजीचो सुद्दां असलो जाल्यार क्रिकेट हें एक अशें माध्यम आसा जो सगळ्यांक बरोबर हाडपाक शक्य आसा. आनी खंय तरी तांकां दिसलें की आज आमचे जो सोडयेचे शिवोलेचे भुरगे आसात तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवपाचें क्रिकेटीचें खंय तरी तांकां फिटनेस लेवल दवरपाचें. आनी सगळ्यांत व्हडली गजाल म्हणटा ती आमी टुर्नामेंट जेन्ना करता तेन्ना पळयतात की टुर्नामेंट जे असतात ते आपल्या क्लबाच्या नांवाचेर असतात पूण हांगा एक वेगळें अशें कितें तरी चित्र दिश्टी पडटा कारण हो जो टुर्नामेंट आसा तो आपल्या आवय आनी बापायचें नांव फुडें व्हरपाचें तांची याद काडपाची आनी तांकां तांची जी आस्था आसा मोहित बाबाची तांच्या आवयच्या आनी बापाय बद्दल जे आज तांचे मदीं ना पूण खंय तरी तांकां दिसलें की जशें आमी पळयतात की जर आपल्याचें नांव खंय तरी आपल्या आवय बापाचे मुखार येवपा जाय जाल्यार खंय तरी असो जेन्ना आमी टुर्नामेंट घडयतात तेन्ना ताका प्रोफेशनलिजमा बरोबर ताका काळिजी आसता. कारण जसो एक भुरगो चिंत्ता की आज आवय बापूय आपल्या मदीं ना पूण एक जर क्रिकेट माध्यम आमी धरलें आज क्रिकेटर्स जे आसा तांकां रणजी ट्रॉफी CK नायडू ट्रॉफी अश्यो व्हडल्यो व्हडल्यो ट्रॉफी बऱ्या बऱ्या क्रिकेटरांच्या नांवाचेर जातात. पूण मोहित बाबाक दिसलें की जर आपल्या आवयचें आनी बापायचें नांव मुखार येवपाक जाय आनी तांची याद काडपाक जाय जाल्यार हो एक बेस्ट प्लॅटफॉर्म हो एक बेस्ट माध्यम. आनी म्हाका दिसता आमचे जे मानेस्त हांगा आमकां लाभिल्ले आसात आयच्या उक्तावण सोहळ्याक श्रीमती डेलायला लोबो जी आमदार आसा शिवोली मतदारसंघ तशेंच ESCचे वायस चेअरमॅन आनी श्रीमती दीपा बाय पेडणेकर सरपंच सोडयें निलेश बाब वांयगणकर डेप्युटी सरपंच सोडयें ओमकार बाब हळमळकर पंच सचिन बाब मांद्रेकर तशेंच आमचे एक मानाचे सोयरे अशे संजय बाब हरमळकर आनी आशा हरमळकर तशेंच चोपडेकर दंपती हांगा आमच्या मदीं हजर आसात. रिक्वेस्ट करता खरें म्हणटा तें येवकार अशा मनशान करपा जाय जाणें तशेंच मेघश्याम बाब मडगांवकरी हांगा आसात तांचे बी आमी येवकार करतात पूण येवकार खरें अशा मनशान करप जेन्ना हो टुर्नामेंट चिंतता घडयता कितें ताका घडलें कितें ताका दिसलें हें तोच मनीस करपाक शकता जाणें हो टुर्नामेंटाचो पांयंडो घाल्लो आसा. हांव रिक्वेस्ट करता मोहित बाब चोपडेकर तूं मातसो माचयेर यो आनी आमचे सगळे जे मानेस्त आसा तांचो येवकार कर. Hello. Good morning. Hello. Hello. आज आमचो हॅलो हॅलो टेस्ट टेस्ट हॅलो हॅलो टेस्ट हॅलो. हॅलो. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आयज आमी हो तुकाराम उज्वला तुकाराम चोपडेकर मेमोरियल ट्रॉफी आमी आयच्यान स्टार्ट करतात तेन्ना फर्स्ट ऑफ ऑल आमची ऑनरेबल MLA डिलायला लोबो मॅडम हिजो हांव वेलकम करता आनी आमचे जे मानेस्त आसा आमचे संजय बाब बाई आमची आशा हरमळकर मॅडम दीपा पेडणेकर
आमचो पंच ओमकार, सचिन, डेप्युटी सरपंच, आमचो निलेश बाब आनी म्हाजी चोपडेकर फॅमिली, तसोच आमचो मेघाश्याम मडगांवकर. आयज हो टुर्नामेंट जो स्टार्ट जाता तेजेर हे मनांतल्यान म्हाका खूब बरें दिसता की हो फक्त विचार म्हाज्या तकलेन आसलो, आयज हो प्रत्यक्षान जाता. तेका लागून म्हाजी सोडियम स्टाराची टीम आनी आमचे सगळ्या ऑर्गनायझरांचे हांव मनांतल्यान आभार मानता. आनी हो टुर्नामेंट आयज फक्त स्टार्ट जाला, 14 तारखेर फायनल आसतली. सो सगळे बऱ्या भाशेन जावचें म्हणून देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी ह्या प्रोग्रामाक स्टार्ट करता. म्हाका दिसता मोहित बाबाक उलोवपाची आणि ह्या वेळार संजय बाब तुमची उतरां जावन दी. मॅडम म्हणटा संजय बाबान 2 उतरां दिवनी. संजय बाब. आयच्या ह्या व्यासपीठाचेर उपस्थित आमची शिवोल्य गांवची लाडकी आमदार डिलालाजी, तेच्या वांगडा आमचे सरपंच, बाकीचे सगळे पंच, चोपडेकर फॅमिली, हरमलकर फॅमिली आणि तुम्ही हांगा उपस्थित सगळे रोहिताक हेल्प करपी त्याची टीम. हांगा उपस्थित 2 टिमी आसा जे आतां खेळपाक सुरवात करतले. हांव चड उलयना, हो भाशण करपाचो टायम न्हू. भाशण करतली आमची डिलायला मॅडम बरी उलयता. तर हांगा हांव दोनूय टिमींक पयलीं शुभेच्छा दिता. आणि एक खेळ खेळताना एक दोनूय टिमींनी आपसा भितर एक बरें रिलेशन दवरचे आणि हे बरें रिलेशन दवरपाचें काम सगळ्योच गेमी करीत असतात, सगळे खेळ करीत असतात. आणि एक चोपडेकारान जशी सुरवात केल्या तशी आपल्या गोंयान आमच्या सरकारान सुद्धा ह्या अपकमींग भुरगे आसात, नवीन भुरगे आसात, शिकतात, खेळोंक सोदतात, सगळे खेळ, ओन्ली क्रिकेटूच न्हू तर सगळ्या तेतून सरकारान एक त्यांच्या फाटल्यान एक आधार म्हणून उबो रावचो आणि आमी सगळे समाजान त्यांच्या फाटल्यान उबे रावचे. जशे आता सडये गांवचे सगळे रोहिताच्या फाटल्यान उबे रावले, तशेंच सदांच खेळाडू आमच्या गोंयसून आता क्रिकेटीन ऑल इंडिया क्रिकेट टिमीनूय खेळपाक लागल्यात भुरगे. अस्नोडकर म्हणून आसा, खूब जाण खेळटात. तर आता अशा गेमींनी आनीक नये भुरगे येवचे आणि आमच्या इंडियन टिमीन पावचे इतलेच तुमचे कडेन विनंती करता सगळ्या भुरग्यां कडेन. मनलान खेळा, बरे खेळा, व्यायाम हो जावोच, खेळूय जावोच, हो लक्ष दिवन करचो आणि आमच्या भारत टिमी मेरेन पावचे तुमी अशी आशा बाळगता आणि हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. जय हिंद, जय गोमंतक. जशें संजय सरान सांगलें की प्रत्येक जाण आपापल्याचे कितें तरी ट्राय करता, जावं ते सरकार. आज आमी पळयल्या की खासदार चषकाचें पळय मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते उक्तावण जाल्लें आसा. तशेंच अशें टुर्नामेंट जेन्ना घडयतात आमी म्हणटा उज्वला तुकाराम चोपडेकर मेमोरियल. आज क्रिकेट म्हणटा तो एक खेळ उरलो ना जाल्यार प्रोफेशनल माध्यम आसा जातून तूं आपल्याली फूल जी फॅमिली आसा तांकां सुद्दां पोसपाची ताकद आज क्रिकेटी भितर आसा. कारण आज प्रोफेशनल क्रिकेट म्हणल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक कडेन जेन्ना येता तेन्ना तांकां खंय तरी पेमेंट आसता, विनींग आसता, ताजो शेअर आसता. तो जावं टेनीस क्रिकेट, जी जावं लेदर बॉल क्रिकेट. पूण क्रिकेट जर तर तुवें खरें बऱ्या रित्या मनांतल्यान एक प्रोफेशनल आपूण वयर सरतलो अशें जर चिंतलें जाल्यार क्रिकेट तुका खरेंच वयर व्हरपाक शकता असो एक खेळ. आनी आज हो येदो व्हडलो टुर्नामेंट म्हाका दिसता जेन्ना आमी सदांच म्हणटा की आपल्या चल्या फाटल्यान नाल्यार भुरग्या फाटल्यान बापायचें नांव आसता आनी तें सदांच मुखार आसता. पूण म्हाका दिसता मोहिताची जी संकल्पना आसा ती इतली सुंदर आसा की जेन्ना आमी म्हणटा बापायचें नांव आमच्या फाटल्यान आसता जाल्यार आवयच्या फाटल्यान बापायचें नांव आसता सदांच. सो जेन्ना उज्वला तुकाराम चोपडेकर हें मेमोरियल जाता तेन्ना ताका दिसलें की आवयचें नांव आयलें आनी बापायचें नांव आयलें अशी सुंदर संकल्पना घेवन मोहित बाबान हो टुर्नामेंट सुरवात केल्लो आसा. आनी आयच्या दिसा जी मानेस्त आसा आमची मॅडम डिलायला लोबो हांणी ह्या वेळार सगळ्यांक संबोधचें. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडटा. आमचे मध्ये हा आमचे सरपंच बाय दीपा पेडणेकर, डेप्युटी सरपंच बाब निलेश वैगणकर, ऑल द वॉर्ड मेंबर्स बाब सचिन, बाब ओमकार, आमचो आर्टिस्ट फेमस आर्टिस्ट बाब संजय हलमलकर, बाय आशा हलमलकर,
आमचे मृणाली चोपडेकर, मिसेस चोपडेकर, आमचो मडगांवकर बाब मोहित चोपडेकर, द मेन स्पॉन्सर of this Ujwala Tukaram Chopdekar Memorial Trophy, where we have come to inaugurate today. Aaj ami Ujwala Tukaram Chopdekar Memorial Trophy 3 days tournament to आयच्या दिसा सुरवात जाता 12, 13, 14. 14 will be the grand finals. आणि 2 दीस पयलेच आमी ट्रॉफी आनी जर्सी अनवेल करपाक येयल्ले आणि आयच्या दिसा या सोबीत वाठारान आय नेवर न्यू सच अ ब्युटिफूल प्लेस एक्झिस्ट इन हियर इन सोडिया. बाब मोहिताक आनी नीलूक रिक्वेस्ट करता, वी नीड अ प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड एंड इफ द ओनर्स ऑफ दीस प्लेस आर रेडी टू help us to develop this as a cricket ground, a dedicated cricket ground for the cricket players of Sodiem. Our help will always be there. आयच्या दिसा जे आमचे बाब सांगला ते प्रमाणे उज्ज्वला तुकाराम चोपडेकर मेमोरियल ट्रॉफी जो बाब मोहितान ऑर्गनायज केल्या ही आपल्याच्या आईच्या आणि बाबाच्या नावान. And especially where he has invited teams from outside the state. कितल्योच टीमी पुन्हा दुसऱ्या राज्यांतल्यान येयल्या, which is a very good platform for our youth from Shioli constituency as well as Goa to learn the best of cricketing skills from them. आणि आयच्या दिसा आणि ह्या टोर्नामेंटान जितले टीम्स आहा तांकां फकत एक रिक्वेस्ट माझे, लेट द स्पोर्टिंग स्पिरिट प्रिवेल. विनिंग एंड लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ गेम, बट यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक एंड प्रॅक्टिस हार्ड. सेकंडली आयज आमी हे टोर्नामेंट ओपन करून सोडियाचे जितले इंटरचे हॉट मिक्साचे काम चालू करूंक वयतली. सो आय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू कम देर नियर सोडिया न्यू पंचायत घर फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ हॉट मिक्सिंग ऑफ ऑल द इंटरनल रोड्स ऑफ सोडिया. थर्ड, आमी आयच्या दिसा कासदार चासक आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जितले क्रिकेट क्लब्स आहा तेणी ते लिंकाचेर रेजिस्टर केल्ले आहा आणि आयच्या दिसा तो टोर्नामेंट चालू आहा आसगांव. 5:30 will be the finals. I again request you all of you all to please come there and be a part of this celebration. जो फायनल जिखता एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो स्टेट लेवलाक पार्टिसिपेट जातलो. कालूच आमच्या CMन ते इनॉग्रेट केल्ले आहा. एंड अगेन मोहित बाब, द मेन आय एम शुअर मेन एम ऑफ ऑल दीस ऑर्गनायझिंग टोर्नामेंट्स शूड बी वी आमचे कडेन सोडिया स्पोर्टिंग क्लब म्हणून कितें तरी आसूंक जाय. नीलू आमचे कडेन सोडियान स्पोर्टिंग क्लब आहा दिसता म्हाका. हां. And then when you are organizing these tournaments, we have to look who are the best cricketers, who are the best footballers. आमचो youth जो best खेळता तांकां ह्या क्लबांनी भितर घेवंक जाय, ट्रेनिंग घेवंक जाय. ओन्ली देन बाब संजयान सांगला ते प्रमाणे ते स्टेट लेवलाक वयतले, ते नॅशनल लेवलाक वयतले. दॅट शूड बी द एम. नाल्यार टोर्नामेंट जाता आणि नेक्स्ट इयर पडतो तो टोर्नामेंट. आर एम शूड बी टू ट्रेन आर यूथ हू हितून कितें हेल्प जाय आमचो हेल्प आसतलो. बाब आमची पंचायत आख्खीच आहा एवरी टायम टू सपोर्ट ऑल दीस इव्हेंट्स. आणि आमचो मोहित आमकां ब्लेसिंग म्हणून मेळिल्लो आहा. God bless the good work you are doing. God bless your family,
युअर लिटल बेबी आणि ऑलवेज टोर्नामेंट आमच्या सोडिया गांवान आणि शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जितलो हेल्प आमी टुगेदर वी वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी. लेट्स वर्क टुगेदर अँड ऑल द व्हेरी बेस्ट टू ऑल द ऑर्गनायझिंग all the participating teams आणि आमच्या ऑर्गनायझरांक a big round of applause to them headed by Mohit and God bless you all. Thank you for inviting me for the tournament. Keep smiling and देवाचो आणि आई बाबाचो आशीर्वाद तुजेर सदांच आसतलो. Thank you very much. सारकें मॅडमीचे ज्या जाग्यार आवय बापाचें नांव आसता आनी वयर काडपाचे एक विचार बरे आसता तेन्ना देवाचो आशिर्वाद त्या टुर्नामेंटाक लागता, हातून काडी मात्र शंका ना. आनी मॅडमीचें म्हाका खरेंच बरें दिसलें की ती हांगा आयल्यान सांगलें की असो ग्रावंड तिका आसा म्हणून खबर नाशिल्लें. एक्चुली हांव अख्ख्या गोंयान करता, अख्ख्या गोंयान खंयचो पाठारो आसा हांवें कॉमेंट्री केली नासतना, पूण म्हाका दिसता वन ऑफ द बेस्ट ग्रावंड जर म्हणपाक शकता जाल्यार हो ग्रावंड. हातून काडी मात्र दुबाव ना, कित्याक जेन्ना आमी लायव्ह पळयतले, तुमी कोणी पळयात युट्यूबाचेर, इतलो बरो दिसतलो हो ग्रावंड की बाकीच्या सगळ्या सायडीच्यान चौकोनीन ग्रीन आसतलें आनी मदीं पीच जशी फक्त हांगा स्टँड सगळे मानेस्त आसा ताणें मातशें सकयल देवया आनी हो उक्तावण सोहळो आसा तो पूर्ण करया. रिक्वेस्ट करता दोन्ही टिमीक मातशें मदीं येवचें. ध्रुव पारचे, गुरुप्रसाद आरोसकर तशेंच ताचे वांगडी मातशें मदीं येयात. हांव मॅडमीक रिक्वेस्ट करता ध्रुव पारशे टीम कॅप्टना सायडीच्यान कॅप्टन आनी बाकीचे टीम मेंबर्स ग्रीट करचे. ध्रुव पारशेची टीम इनॉग्रल मॅच खेळटा साई समर्थ आनी ध्रुव पारशे. सो आमचे सगळे मानेस्त जे आसा तांकां बेस्ट विशीस दितात. तशेंच आमच्या मानेस्तांक रिक्वेस्ट करता मातशे आमी पिचीच्या फाटल्यान येवया, अशें येवया ह्या सायडीच्यान. सो आमी श्रीफळ त्या सायडीच्यान करया. ओके फायन. म्हाका दिसता श्रीफळ फोडया आनी
बरे तरेन आमी ह्या टुर्नामेंटाची एक देवाक याद करून ह्या वाठारांतल्या सगळे जे राखणदार आसात, देव आसात, तांकां सगळ्यांक याद करून आमी ह्या टुर्नामेंटाची सुरवात करया. आतां संजय बाब हरमळकर. बेस्ट. तशेंच हांव रिक्वेस्ट करता गेस्टांक, सगळ्या मानेस्तांक हांगा येवन मातशें मदीं रावचें. आमचे जे सगळे गेस्ट आसात, मॅडम तशेंच संजय बाब हरमळकर, आतां हांगा तुमकां बलून्स दिश्टी पडटात. सो आमी जे हे बोमाडे आसा, जे बलून्स आसा, जे रंगबिरंगी आसा, असोच रंगबिरंगी अशी आमकां क्रिकेटीची शैली हांगा दिश्टी पडटली. रंगबिरंगी जे प्लेयर्स आसा, वेगवेगळ्या वाठारांतले हांगा आयिल्ले आसात. आनी आज हे बलून्स जे आसात मानेस्त वयर चडटले आकाशान. एक बरे स्पिरीट ऑफ द गेमान सगळ्यांनी खेळ करचो अशें हांव सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता. सो म्हाका दिसता बलून सोडचे. सो मातशें सगळ्यांनी मातशें फाटल्यान रावचें. सो काउंटडावन दिता. 5, 4, 3, 2, 1 सोडात. माता की. सो आतां म्हाका दिसता आतां टॉस उडोवपाचो टायम आयिल्लो आसा. दोनी जे कॅप्टन आसा तांकां रिक्वेस्ट आसा मातशें मुखार येवचें. कॅप्टन ऑफ ध्रुव पारशे, कॅप्टन ऑफ ध्रुव पारशे मातसो बेगीन यो. गुरुप्रसाद आरोसकर, तसोच कॅप्टन ऑफ साई समर्थ. सो पयली मॅच ही गुरुप्रसाद मागता म्हणटा. हेड्स इज द कॉल्स, हेड्स इट इज.
सो गुरुप्रसाद कितें फिल्डिंग कित्याक येदो व्हडलो टुर्नामेंट 8 ओव्हरीचो मॅचीस आसतल्यो सो मातशें डिफरंट कॅल्क्युलेशन नॉर्मली 3 ओव्हरीचे 4 ओव्हरीचे 5 ओव्हरीचे मॅची ना सो कितें आसा तुज्या विचार फस्टूच गेम टोर्नामेंटाची कितें ग्रावंड एक्झॅक्ट सारको खबर ना तेका लागून फिल्डिंग पूण म्हाका दिसता तुवें खूब टुर्नामेंट खूब ग्रावंडार खेळिल्लो आसा ग्रावंड कसो दिसता खूब बरो दिसता ग्रावंड पळोवपाक आउटफील्ड बी बरी आसा चड बरी आसा आनी म्हाका दिसता हांगा फिल्डिंग करपाकूय मजा येतली हय सो गुड लक तुका साईद समर्थ कॅप्टन तूं जर टॉस जिखलो तूं कितें करता आशिल्लो फिल्डिंगूच घेवन सोदताले आमी सो फिल्डिंग तुमी घेवन सोदताले सो पूण टॉस तो जिखला फिल्डिंगेचे सगळे मॅची आसना हालीं आमी पळयल्ले आसा की बरो स्कोर टोटल स्कोर केलो जाल्यार तो चेस करपाकूय डिफिकल्ट आसा पीच एकदम सुंदर आसा आनी तिनूय दीस पर्यंत पीच बरी घट्ट उरतली सो तुका कितें दिसता कितलो टोटल बरो 70 आमी तेंच्या 17 भितर दवरूंक सोदता पळोवया आतां काय कितें तें आनी स्पेशल कोण प्लेयर हाडल्या गोंयचे गोंया भायले आमी सगळे गोंयचे आतां सगळे गोंयचे सो गुड लक टू यू पयली ही टॉस आसा ती ध्रुव पार्शे जिखिल्ली आसा आनी टॉस जिखून फिल्डिंग घेतिल्ली आसा सो दॅट्स स्वीट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द इनॉग्रल मॅच रिक्वेस्ट करता सगळ्या मानेस्तांक तांणी माचयेर येवन आपली बसका घेवची सो रिक्वेस्ट करता पयली मॅच जी आसा ती ध्रुव पार्शे सो आता टॉस जिखून पयली फिल्डिंग घेतिल्ली आसा ध्रुव पार्शेक बरें दिसता एक टुर्नामेंट बरें दिसता एक टुर्नामेंट जो आसा तो 8 ओव्हरीचो ऑल इंडिया लेवलाचे टुर्नामेंट म्हणल्यार आमकां गोंयचेच न्ही महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटका अशे वेगळे भिन्न वाठाराचे प्लेयर्स हांगा दिश्टी पडटले ह्या 3 दिसांत आनी 8 ओव्हरीची जेन्ना संकल्पना आमी टुर्नामेंट म्हणटा तो डेफिनेटली एक बरी क्रिकेट पळोवपाक मेळटली जी सजासजी आमकां शॉर्टर फॉर्मेटाक पळोवपाक मेळना
तशेंच 12th मॅन जे आसा तांकां रिक्वेस्ट आसा 12th मॅन हांगा आसपाकच जाय 12th मॅन कारण स्कोरिंगाक वयर सकयल जालें ना जाल्यार नांवां आसा आमकां जी ऑनलायन वचपाक जाय ती कळ्या शिवाय आमी फुडें वचपाक शकना लायव्ह युट्यूबाचेर अख्ख्या गोंयांत न्ही जाल्यार गोंया भायर सुद्दां हांगा सो तुमकां रिक्वेस्ट आसा 12th मॅन म्हणटा ते हांगा पयलीं आसपा जाय मॅच स्टार्ट जावच्या पयलीं साई समर्थ आनी ध्रुव पार्से दोनूय टिमीक रिक्वेस्ट करता तुमचे 12th मॅन आसा ते हांगा पावपाक जाय कॉमेंट्री बॉक्सान हॅलो कृपया दोन्ही संघाच्या अतिरिक्त खेळाडूं कॉमेंट्री बॉक्समध्ये यायचं आहे नियम आहे या स्पर्धेचा सामना सुरू होण्यापूर्वी दोन्ही संघाचे अतिरिक्त खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्समध्ये येणं या ठिकाणी बंधनकारक आहे या क्रिकेट स्पर्धेमधील नियम मित्रांनो दोन महत्त्वाचे नियम तुमच्यासाठी असतील ते म्हणजे तुमचं 8वं षटक हे 35व्या मिनिटाला या ठिकाणी सुरू व्हायला पाहिजे अन्यथा प्रत्येक मिनिटानंतर या ठिकाणी एक खेळाडू हा 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये घेतला जाईल त्यानंतर बाद झालेला खेळाडू जो असेल त्याने न थांबता डगआउटच्या दिशेने वाटचाल करावी लागेल या ठिकाणी डगआउटच्या समोर तुमच्या लाईन दिसत आहेत तो बॅट्समन ती लाईन क्रॉस करण्या अगोदर दुसरा नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये न गेल्यास त्या ठिकाणी धावांची पेनल्टी तुम्हाला देण्यात येईल So here we go. We are starting with Ujwala Chopdekar Memorial All India Tournament. This match is played between Sai Samarth and Dhruv Parche. Dhruv Parche captain won the toss, deciding to field first. Here comes the first ball. Starts off, and that's a wonderful heave over the mid-wicket region. Might go for 6 runs, and it starts in the grand fashion. 6 off the very first ball.
Kedar on strike. Vicky, the bowler. And on strike, it is Tushar. This time it was a slow off-cutter, but what a start. If you want to witness a big tournament like this, and if you start with the 6 runs, then I think that's the best possible start you could have ever witnessed in a tournament like this. Vicky Pujari. But one thing for sure, I was looking at the wicket. I think a lot of hard work has been done. You don't get such wickets in tennis ball cricket. You can even play leather ball if you play a mat on that. So that's the effort that has been taken by the organizers. This is outside edge, but I think you can have a look at the field. There is one in the deep point region, especially for the switch hit that Kedar Zamalikara likes to go in that region. He is a very good switch hitter. When you got a shot like this, it sometimes runs as a worry into the opposition camp, where to place the fielders. There's the worry here for Dhruv Parshe. No doubt that Dhruv Parshe are a very strong unit. They have got Guru Prasad Aroskar, the top-rated batsman of Goa, and also Ghungru, Gaurish Nagwekar. And Vicky Pujari just starts off. He starts off with a 6, but there is always a time of comeback in any sort of cricket. And if you get a wicket or if you bowl decently enough, then I think even these power play overs can be bowled economically. Goes for the switch hit. This time it was a slower ball, maybe a leg cutter bowled here by the bowler. So umpire maybe just having a look at where the leg is falling and maybe just signaling the bowler. We have got the top umpires of Goa, Abhijit Thalekar and Sujitha Rane. And Raju Dabholkar. So top rated umpires are there, so you can expect rules and disciplines to be followed by everyone, otherwise there will be definitely a penalty. They know each and every rule in the rule books. So players not only in Goa but all India should be aware that you have got some of the most highly rated not only players but also the umpires. That's a good bowling here. In spite of giving a 6 of the first ball, he comes back strongly. That's why I say that it's such a tournament like this, there is always a time for comeback. And Vicky Pujari makes a good comeback after giving the first 6. At the end of 1 is 7 without loss. So now the change of ends. But I guess umpires will definitely tell them later on that during the evening time when the sun goes down, it will be only one end that they will be playing on. And this time, both the ends looks nice. Here comes one of the highly rated all-rounders. You can say right now is that in top 3, Gaurish Nagwekar, known as Ghungru. That's a good delivery here. You may be thinking of the switch hit and he bowled in the full ball just outside the off stump. So that's very nicely bowled here by Ghungru and has got the pace. In the recently concluded Tukaram Champions Trophy where there were 3 outstation players and 2 outstation players from KPM and Samgem Taluka, he was awarded as the best bowler of the tournament.
This is in the air. This might be a catch or might go for 6 runs. Fantastic shot. Oh, catch dropped. Goes outside the fence. Very well timed here by Kedar Zamaulikar. This guy is showing that even if you provide me more pace, I am going to hit you more harder. So don't know whether it was a catch. From here it's very difficult to tell whether it was inside or just going outside. But definitely Kedar has timed it very well. This is the second 6 of Kedar in just the 2 overs. And the first match, we just getting to see the first match. So we don't know exactly what sort of total is good enough on this surface. Once again, this time goes for the switch hit. He likes that shot. He likes that shot very much. And he plays it regularly, whether it is this tennis ball cricket. Also in leather ball, I've seen him many a times playing that shot. And he plays it very well. But I think it's good from Gaurish Nagwekar here. He has not kept a fielder for that. Most of the times, it is the missing percentage of the switch hits is more than hitting the balls. This time an outside edge and catch taken and the first wicket down. First wicket down going back in the pavilion. So in comes Babal Zori, the player hailing from Sangem, has come here in Sholim. So after Kedar Zamaulikar back in the pavilion, now it is up to Tushar and Babal Zori to resurrect this innings. This is going to be 8 overs match. We are just into the second over and Gori strikes back in spite of scoring a 6 from the bat of Kedar. This is in the air. This might be 6 runs. He's timed it very well. Babal Zori hits a 6 to Gaurish of the very first ball in the mid-wicket region. Well, we are witnessing some very good sixes, a flurry of sixes. And who is better than known as Goan Mr. Sixer? Rajesh Wangankar was here just now in the commentary box and he is having a look at this wonderful tournament. So Rajesh Wangankar, known as Mr. Sixer, will certainly like sixes being hit by the players around. This time very nicely bowled, and the only player from Goa, Rajesh Wangankar, to score 14 centuries. The only player from Goa to do so, 14 centuries, you can imagine in tennis ball cricket is something unheard of. So big star Rajesh Wangankar, and he is now watching this cricket from the top. So now second over has gone back, is 19 for 1. So Omkar Patil. So some of the Australian players are also playing for Dhruv Parshe here. Here is Omkar Patil. So they have strengthened their team. Some players from Goa, some players from Maharashtra as well playing for this team. So let's see. Here is the first look at Omkar Patil.
That's a good shot. Maybe he wanted to play in the covers region. The ball getting an inside edge. Now the field restrictions are eased off. The first over was a bowling power play. And the batting side also can take the batting power play, which is going to be between over number 5 to 8. So it's a different concept, little bit different. Maybe if the bowling side feels that yes, we can take in the first over, or if the bowling side feels they can take between the first to fourth over. That is what all the bowling sides must be aware of or must be thinking. He missed an easy ball by signal here by umpire Abhijit Thalekar. So Omkar Patil starts off well. This time an outside edge, but just going on top of the keeper over there. So just a single taken here. The single will take the score to 22. And wonderful pendle here, wonderful setup here, you can say, for everyone around, not only the players, but also for the commentators and the spectators. The gazebos being placed across opposite side of the commentary box. This is good shot here. This is good shot. He tried hard, but in vain. The sixes are coming and coming in succession. That takes the score to 28. This was the fourth six. 2 hit from the bat of Kedar, 2 hit from the bat of Babal Zore. This is in the air. This might be a catch in the covers region. Switch hit not connected well. Getting a top edge and a wicket for Omkar Patil. This is the second wicket going down at the score of 28. So third over in progress still. Just 1-6, total 9 runs taken of this over. And it's not a bad score. It's 28 for the loss of 2 wickets. You expect with the batting order being strong of the teams who have combined the players from across Goa and outside Goa as well. You can expect the batting depth to be definitely there. Sam nicely bowled, fuller length, loopy ball, just given the defense and respect to the bowler to finish that over on a high note for the bowler. The dot ball is 28 for 2 in 3. So in comes Santosh.
to bowl the fourth over, and the keeper is standing in front. The left armer coming in and might be catching the hands and straight to him. So one more wicket in trying to get one more six. Perishes, third wicket going down of Sai Samarth. So in spite of getting a good start, they are still losing the wickets. Top three order back in the pavilion. In comes Viraj, the new batsman. Just plays a cut shot in the backward of point region for a single. So I think there is something in for the bowlers, there is something in for the batters. If you play nicely, there are lots of open spaces. You can get value for your runs, you can get the boundaries, you can get the sixes. This is one of the best wickets that I have seen as a commentator and as a cricket analyst so far. If you bowl the cutters, there is definitely going to be a turn on this wicket. So that's the best wicket that can be produced by any of the organizers. Maybe they have got some specialists here to get at such kind of a pitch. And this is the best outfield that not only the cricketers but also viewers who are watching this live on 70/70 will certainly enjoy this All India Tournament Ujwala Memorial, Tukaram Memorial Trophy. नाम निर्देशन हो चुका था और ये 2 गेंदे 10 रन देकर चुके हैं और टोटल जो कि पहुंचा 53 रन 53। सूरज के बल्ले से निकले एक छक्का एक चौका। व्हाट इज नेक्स्ट? ओ ये तेज रफ्तार वाली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर खींचकर खेलना चाहा, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम पूरा करते हुए राम नागवेकर विकेट के बाद तुषार 2 रन बनाकर आउट हो गए। साथ साथ जो कि बाबल जोरे ने बनाए 12 रन, तो उसके बाद इस जोड़ी ने संभाला है टीम को। अच्छी गेंद पूरी तरह से चकमा दिया था, शायद तो थोड़ा सा इनवाइट कर दिया था आगे खेलने के लिए, शायद खुशकिस्मत रहे बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लगा। शानदार गेंदबाजी, बहुत ही शानदार वापसी करी है। 2 गेंदे डॉट निकली है इस ओवर की। ये पावर प्ले का ओवर है, यानी कि 2 खिलाड़ी सिर्फ 30 यार्ड घेरे के बाहर रखने की अनुमति, जिसके चलते वो बल्लेबाज के लिए मौका था वो 2 बड़े शॉट खेलने का, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी गौरेश नागवेकर की इस मैदान पर। ओ फिर एक बार शायद यहाँ पर जिस तरह से डाइव लगाई थी राम नागवेकर ने और जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज दिख रही, शायद बल्ले का कुछ ना कुछ हिस्सा लगा था, शायद जीवनदान मिल चुका है यहाँ पर सूरज के लिए। 53 रन यहाँ पर बन चुके हैं, 10 रन निकले थे 2 गेंदों में, लेकिन उसके बाद बहुत ही शानदार गेंदबाजी गौरेश नागवेकर की। अच्छी गेंदबाजी, इसलिए तो इन्हें अच्छा ऑलराउंडर कहा जाता है। बल्लेबाजी कर लेते हैं अच्छी खासी, लेकिन गेंदबाजी इनका प्रमुख अस्त्र है। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद इस बार खेल दिया हवा में, गुरु प्रसाद आरोस्कर सेफ एंड सीधे उसके हाथ में। विकेट का पतन, इसके पहली गेंद के ऊपर जीवनदान मिला था, लेकिन अगली गेंद के ऊपर यहाँ पर शॉट को नीचे नहीं रख पाए। गौरीश नागवेकर ने एक तोड़ लगाने की कोशिश, लेकिन फील्डर को ढूंढ लिया। गुरुप्रसाद आरोस्कर लगभग मिड विकेट के ऊपर तैनात थे, सीधे उसके हाथ में और एक विकेट, एक शानदार पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई। यहाँ पर सूरज के बल्ले से निकले 2 छक्के 1 चौका, एक शानदार पारी को अंजाम दे दिया, अपनी टीम को अच्छी स्थिति में लेकर आए और एक विकेट। लगभग 6 ओवरों का खेल अब समाप्त होता हुआ 53 टोटल स्कोर बोर्ड पर 10 रन बने इस पावर प्ले के ओवर में।
न्यू बैटर अब मैदान पर जा चुके हैं तुषार का विराज का साथ देने के लिए, और गेंदबाजी के मोर्चे पर संतोष ये गेंदबाज। ओ अच्छी गेंद घूमकर खेलना चाह रहे थे, शायद रनआउट का खतरा, लेकिन ये थोड़ा सा वाइड थ्रो, और जिसके चलते हुए जहां सिंगल था और थ्रो के रूप में एक और सिंगल खाते में। लेग बाइट्स का इशारा हमारे और आता हुआ अंपायर का। कुल 2 रन खाते में लिख के जाएंगे, और 2 रन के साथ साथ 55 रन पर पहुंचा है टोटल 4 विकेट गंवाने के बाद। अभी भी 11 गेंदों का खेल अभी भी शेष है पहली इनिंग का। संतोष है गेंदबाज, स्लो और वन डिलीवरी हल्के हाथों से खेल दिया पॉइंट और गली के बीच में से खिलाड़ी आकर जब तक फील्ड करते हैं, और एक सिंगल, और इस सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा अब तक 56 लॉस ऑफ विकेट। न्यू बैटर अभी भी मैदान में जा चुके विनायक गावड़े ये सामना करेंगे संतोष की अगली गेंद का। एक तगड़ा मुकाबला देखने को शायद मिल सकता है, और इस बार बड़ा शॉट सीधा कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से गेंद निकलती हुई 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ टोटल अब पहुंचा है 59। क्या शॉट था, क्या आवाज जैसे लगे, गेंद के ऊपर 6 रन का टप्पा लगा, क्या बेहतर स्ट्रोक था इस विनायक का। ये थोड़ी सी स्लो और वन डिलीवरी, फिरकी गेंदबाजी, थोड़े से फिरकी के जाल में फंसाना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं, डॉट गेंद निकली, बिंदी गेंद निकली। 59 रन पर पहुंचा है टोटल, और 48 गेंदों का ये मुकाबला जरूर है, लेकिन पहला मुकाबला आप देख रहे हैं इस मैदान पर थोड़ी सी धूप खिली हुई तो जरूर है, लेकिन चारों तरफ देखा जाए पूरी तरह से हरा भरा मैदान, मानो ईडन गार्डन का मैदान हो, चपॉक का मैदान हो, जिस तरह से मैदान की रूपरेखा देखती हुई। और इस बार खेल दिया हवा में जरूर, लेकिन डीप में कोई डीप में काफी दूर थे खिलाड़ी, और एक सिंगल, और सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा 60 रन 4 विकेट की 63 जो कि टोटल स्कोरबोर्ड पर लगभग 60 का आंकड़ा तो पार कर चुके हैं। आने वाले देखने वाले गेंदों में कितने रन बन पाते हैं। और इस बार थोड़ा सा हटकर खेला तो पॉइंट की दिशा से डीप एक्स्ट्रा कवर पर जा रही है। स्वीपर एक्स्ट्रा कवर से गेंद को जब तक फील्ड किया जाता तब तक 2 रन, बहुत ही शानदार फील्डिंग वहां पर देखने को मिली। 2 रन और खाते में जुड़े, 7 ओवर समाप्त होता हुआ 7वां, और 7 ओवरों का खेल समाप्त होने तक टोटल 65 रन स्कोर बोर्ड पर, जो कि 4 विकेट गंवाने के बाद आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी। आखिरी ओवर डालने के लिए नितेश गड़ेकर आपको नजर आएंगे। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, बल्लेबाजी और आजकल गेंदबाजी भी अच्छे कर लेते हैं। मैं एक तगड़ा स्ट्रोक देखने को मिला 6 रन का, विनायक के बल्ले से निकलता हुए दूसरा छक्का। जो 70 का प्रेडिक्शन था वो 70 का आंकड़ा पार हो चुका है। टोटल यहां पर पहुंचा हुआ 71 रन। गेंदबाज है नितेश गड़ेकर, उनका स्वागत कर दिया इस छक्के ने। विनायक तगड़ी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। फिर एक बार ये देखे मेरे का स्ट्रोक सीधी निकली लॉन्गन के सर के ऊपर से, बैक टू बैक सिक्सर। थैंक यू डीजे। इस प्रतियोगिता का आयोजन जो कि पूरी तरह से स्पॉन्सर मोहित चोपड़ेकर, और इस मैदान पर चलता हुआ पहला मुकाबला
इस बार थोड़े से ऑफ स्टंप से बाहर गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी वापसी करना चाह रहे हैं। एक गेंद तेज रफ्तार वाली इंतजार कर रहे थे शायद विनायक, और एक छोटी गेंद का थोड़ी सी इससे पहले गेंद थी ओवर पिच थी, और एक मिनी हेलीकॉप्टर स्ट्रोक आपको देखने को मिला मैदान पर। और इस बार जमीन के सारे विजय कारपेट कॉपी बुक स्टाइल का बैटर लॉन्ग अप से खिलाड़ी ओमकार गेंद को जब तक फील्ड करते सिंगल और खाते में लिखा जाता हुआ, सिंगल के साथ साथ टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 78 रन स्कोर बोर्ड पर। ये पिछले 2 ओवर में ज्यादा रन निकले हैं। और इस बार खेल दिया, फिर एक बार खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से, गेंद निकली लगभग लॉन्ग ऑफ कवर पर, और जब तक फील्डर और फील्ड करते 1 रन और खाते में, टोटल पहुंचा 79 रन पर। लगभग 10 के औसत से रन बनाते हुए नजर आ रही है टीम। एक तगड़ा मुकाबला, पहली थोड़ी सी धीमी शुरुआत पहले 3-4 ओवर में, लेकिन उसके बाद ये आखिरी ओवर अच्छा। फिर एक बार सीधा उसी दिशा में ओमकार पाटिल, उनके सर के ऊपर से गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए पहले इनिंग का खेल समाप्त होता हुआ टोटल पहुंचा है 83 रन पर। जीतने के लिए 84 रनों की है आवश्यकता। पहला ही मुकाबला यहाँ पर देखिए 48 गेंदे और जीतने के लिए 84 रनों की आवश्यकता। ध्रुव पार्सेन और साई समर्थ के बीच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का ध्रुव पार्सेन टीम का फैसला। पहले 5 ओवर में अब तक बेहतरीन था, लेकिन उसके बाद क्या शानदार बल्लेबाजी विनायक गावड़े की, शानदार बल्लेबाजी देखने में मिली यहाँ पर सूरज गावड़े की, और जिसके चलते हुए एक सम्मानजनक टोटल, फाइटिंग टोटल स्कोर बोर्ड पर नजर आता हुआ 83 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 84 रनों का लक्ष्य। किस तरह से होगा पीछा, किस तरह से रोक पाएगी साई समर्थ की टीम, ध्रुव पार्सेन टीम की, यहाँ पर देखने वाली बात होगी। शैलेश जी, आपकी जरूरत है यहाँ पर, आइए कमेंट्री बॉक्स में शैलेश जी। तो 84 रनों का किस तरह से पीछा किया जाएगा, क्योंकि वो 2 ओवर काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। एक बैटिंग साइड वाला पावर प्ले और दूसरे साथ साथ बॉलिंग टीम की ओर से लिए जाने वाला वो पावर प्ले का ओवर, और वहां से जिस तरह से बल्लेबाजी ध्रुव पार्सेन टीम के पास मौजूद है, शायद मैं कहूंगा ये मुकाबला कांटे का होगा। अगर हेलो हॅलो, यानंतरचा सामना होतोय ए स्ट्राइकर्स वर्सेस सातेरी क्रिकेटर्स। दोनों टीमों के कप्तान कृपया टॉस के लिए संपर्क करें। एक स्ट्राइकर्स और सातेरी क्रिकेटर्स। किस तरह से पीछा किया जाएगा इस मुकाबले के दौरान, दूसरी इनिंग में ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। फिर एक बार जुड़ जाते हैं अंग्रेजी में विवरण देने के लिए सर हरीश काकोडकर के साथ। धन्यवाद।
So immediately bowling power play has been selected here. And it's going to be for first over. So let's see. Target of 84 runs in 8 overs. This is the first match, so exactly we don't know whether 84 is good enough or 84 is maybe just not too good enough. So let's see. The openers have come out in the middle. Viraj with the ball in his hands. Omkar Patil and Ram Nagvekar. Ram Nagvekar is one of the highly rated batsman. Starts off with the full toss. There's no ball above the waist height. No ball signal and by the leg umpire that was transformed to the main umpire, and it's going to be free hit. Not a great start. The ball did not release from the hands nicely. They have got already a mid wicket and a wide cow corner region or wide long on region, you can say. But if you bowl full toss, that's going to be easy. Omkar is a very good all-rounder. I've seen him many a times in Mandrem tournament, recently held plays for his team. This time he has been included in Dhruv Arche team as an opener. This time, nicely played. And in fact, very well bowled. This is the best ball that you can bowl. Whether it's off a free hit or whether it's a normal ball, don't get time for the batsman to just swing the bat and get the full swing of the bat. So starts off with a single, 2 runs on the board. 84. Yeah, very nicely you can say the batted by especially the middle order batsmen Suraj and Vinayak gave it a wonderful mold to the innings of 83. Started off very well by Kedar with those 2 sixes. So most of the batters have at least had 1 or 2 sixes in their innings. And this is the style of Ram Nagvekar that everyone knows. He's not the one that is going to go for sixes right from the start. He's going to be very calculative. He plays with the fields. He sees where are the gaps in the fields and plays according to that. He can play both sides of the wickets. So a dangerous customer here. That's it, that's it. I told you, he waits for his opportunity. That was shot, immediately using the depth of the crease and pulls it away towards the backward square leg region. Magnificent strike from Ram Nagvekar. So you can see, I told you, this guy is a very cool customer. And he likes run chases, Ram Nagvekar. He knows how to take singles, he knows how to put in the gaps, the ball. You can see that. This is the style of Ram Nagvekar. After getting 6, he can immediately rotate the strike with singles. So even if they get around 10 runs per over, 10, 11, which is going to be a very good measured and calculative run chase by this team. So far, these calculative men are out here in the middle, which is going to be a soothing influence. 9 on the board and still 2 balls left. This is in the air, might be a catch, but away from the fielder. Oh, nicely taken. Maybe I thought it's going away from that fielder, but he came in quickly and pouches it before it lands on the ground. So first wicket down in the first over itself. Omkar Patil goes back. A strikers versus Satheri cricketers requesting the captain to please come for the toss. A strikers and Satheri cricketers requesting please take the team list, give the team sheet and come for the toss. Requesting the captains of A strikers, Satheri cricketers. This is the first call for you. A strikers, Satheri cricketers.
If you don't come on time, if you don't give us the team sheet, and if you don't come on time for the toss, overs will be reduced. Please take a note. This time, oh, chance for a now direct hit. Oh, that was close. One hand from the left hand, he has to turn around, throw it at the right hand. It was almost there. But you can say, you cannot blame the bowler. He did almost absolutely fantastically right over there. Just at the last touches was missing. And that will finish the over in a dramatic fashion. The completion of one is 10 for 1. Well, it's such a hot and humid climate, and I guess Sujit Rane will accept the thing that you must have done so much of commentary, and I've done so much of the umpiring, and I've done so much of commentary. This is the first time we are seeing coolers here for the commentary box and also for the umpires. That's the first time in Goa we are witnessing something like this. It's a big cooler set here for all to have a little calming influence. It's not easy in these hot and humid conditions, not only for the players but also for us. I think you need to appreciate the organizers and Mohit Chopdekar for this wonderful thing. That's so kind of you, the organizing team. It's really, really humid conditions. We understand that the sun is also not bright. If it was bright and there was wind on this ground, it could have been much smoother. In comes the second over. So just gets a single, Nitesh, and gets a Ram on strike. So at 10 runs per over, if they go by this, then I think the last over they will require 14 runs. And maybe they will be hoping that they don't lose too many wickets in the middle overs. That's going to be the key. Keeping wickets in hand, having a partnership is going to be the key here in this match. And who better than Ram Nagwekar on the wicket? So many times I've witnessed him taking the game deep. And this time, just fiddling with that. Nothing short as far as I'm concerned. The back foot did not go across to play that cut shot. Trying to just stand and just use the bat and glide it for a single dot ball. And this time just bowled wide, so pretty good bowling here, trying to go for the switch hit. And he saw the batsman at the last moment bowling, fired it down the leg side. So this is a great battle here. Second over bowled by Sarvesh, pretty decent so far. And this time a fine shot. This time he hits it perfectly. Just using the crease, goes behind and goes for the switch hit, a long one. And that's a good hit. This time just a flick. You can see that running. He runs quickly. Might go for the second. No, decide against his. Don't want to risk here. We have witnessed, well, so many battles have been fought, Sujit Rane, because of water. Now we are seeing that there is battle for air. 70-70 is taking 70% of the air. So finally finishes off on a good note. That will finish over number 2. It's 18 on the board for the loss of 1 wicket.
So in comes Madhu. Looks to be a bowler of a short stature. Let's see whether he is the one who can bowl a pretty decent pace, or maybe he bowls the cutters. In having a first look at Madhu. Left armer bowling shot, might be a chance. No, it might go away, and it's taken. Ram Nagvekar is shocked, and so am I. I thought it might be going outside the fence, but very nicely judged at the backward square leg region. Maybe because of the wind getting the ball inside. Never mind, it doesn't matter. But second wicket going down, and a big strike here for Sai Samarth. So now it's time for the toss of A strikers versus Satheri cricketers. Requesting to please come with the team sheet. A strikers, Satheri cricketers, we are waiting for you. This is the second call for both the teams. Please come fast. So very well balanced match, and in comes Guru Prasad Arochkar. Such a good and clean striker. A great player to watch, but Madhu strikes. Madhu strikes a big blow. Shot here, just outside. Maybe he thinks that it is the first ball. So just play around. It's an 8-over match. Sometimes in trying to go after the shots a little early, you can tend to lose the wickets. And early wickets, if lost here by Dhrupashi, is going to be very difficult because they are chasing. They are not batting first. So that's the reason why this player out in the middle, especially Guru Prasad Arochkar, is going to be the key. He can just take that game deep, just like Ram Nagvekar. Although the shot that was played by Ram Nagvekar, the fielder first thought maybe it's going above his head for 6 runs. Then he thought maybe, yes, I might be in the hunt here for the catch. And then he judged it very well. It was not that easy, which he made it to look like. But that wicket is going to be the key. Goes for the big one. This time he strikes. This might be 6 runs. And this time that fielder is just a mere spectator. Clean strike here from the bat of Nitesh. For 6 for him. This time once again he was going for the big hoik. Just the ball turned a little, and that was enough for the batsman to get a single down and takes the score to 26. So meanwhile आनी एक व्हडलो announcement आसा जे स्पेक्टेटर्स हांगा भायर आसात स्पेक्टेटर्सा खातीर अनाउन्समेंट जर कोणी कॅच धरता जाल्यार ताका डायरेक्ट 100 रुपयाचे कॅच इनाम इमिजिएटली हातान बॉल धरचो हांगा घेवन येवचो आनी 100 रुपया घेवन वचचे असो तुमकां अनाउन्समेंट जाला. This time in the air might be an important catch. Guru Prasad Arochkar goes back. Look at the jubilation. Madhu has changed the complexion and scenario of this first match of this Ujwala Tukaram Memorial Trophy. Guru Prasad Arochkar and Ram Nagvekar both back in the pavilion in the third over, bowled by Madhu, and it's the third wicket down at the score of 26.
So now it's time for the toss of the second match. Ace Strikers versus Sateri Cricketers. Well, this match is also an interesting one. Still the third over in progress is 26 for 3. Not looking good here for Dhruv Pashe, but they've got a batting depth. This over has literally made this match alive for Sai Samarth. If any two batters would have taken the game a little bit deeper with those singles, doubles, boundaries, and it was Guru Prasad Aroskar and Ram Nagvekar, and both faltered in their attempt going for the big shot. And both were going for the full shot. So now in comes Santosh. This time just flick off the wrist, and it is a lush green outfield. So the ball is not going to fly across for a boundary so easily. You need to time it very well. Single to finish over number 3. Very, very good over here for Sai Samarth from Madu. Takes 2 wickets and just concedes 9 runs. 27 for 3 at the end of 3. Just plays a single down at the long off region. So we are having a look at the toss of the next match. Ace Strikers versus Sateri Cricketers. Umpires and Mohit Chopdekar are having a word with both the captains about the rules and regulations of this all India level tournament. So Satyendra comes on. A full toss ball, he didn't time it that well. Might be a catch inside, and it's been taken. So we are going for the referral of the third umpire, Sujit Rane. We are having a referral of the third umpire. So referral maybe because of the umpire having a doubt above waist or maybe below waist. So the third umpire Sujit Rane will come into action. There will be referrals for the teams, and there will be referrals for the umpires as well for above waist, no ball, stumps, and a run out. And we want to be absolutely sure in a big tournament like this, small decisions matter a lot. So third umpire having a close look at this. And the decision is out. So the ball was dipping down and below the waist height as per the third umpire after having a look at the shot. So the wicket goes down, a fourth wicket going down, and not looking good here for Dhruv Pashe. This is just the fourth over in progress. Another one departs back in the pavilion.
This time just drives it in the covers region for a single. I think wickets taken here by Sai Samarth in successive intervals against Dhruv Parche has got them a little bit ahead of Dhruv Parche at the moment. But if at all there is one good innings of maybe 20-25 runs, quick fire 25 in just maybe 7, 8, 10 deliveries, so you can get back in this match. Teams have certainly made their batting and bowling department quite stronger in a tournament like this. All India level, which is not only watched here in Goa, but across the globe. Sometimes you bowl a good ball, you don't get a wicket. Sometimes you bowl not a so good ball, and you can get a wicket off even the full toss ball. That had just happened in the previous ball. Batsman just maybe going for the second run. Might be a chance, and it might be whether the decision is going towards the third umpire, whether the ball was in the hands or it was not. So umpires are going down to the third umpire, having to be absolutely sure about the decision making. So not out is the signal from the third umpire going to the main umpire, and the 2 runs have been taken. So the ball could not be taken in the hands cleanly by the bowler, and that's the reason why it was declared as not out. So 2 runs taken here, taking the score little ahead to 31 at the moment, 4th over in progress. Wickets are being lost more than the 6 count at the moment so far. This is in the air, might be straight in the hands, and Kedar doesn't drop too many catches. Once again another one depart. This was a lower full toss ball, and the left-hander in trying to get one more 6. This is half the side going back into the pavilion before half the overs having bowled. So in comes Gungru, Gaurish Nagvekar. Slightly expensive compared to the standards that he set himself in bowling, but the fine switch hitter and also plays the big shots on the leg side. I told you the batting is very deep of Dhruv Parche. They've got one more good all-rounder. Simon just steps around for a single off the back footer. And if you can have a look at the first 4 overs, I think the match definitely well in poise for Sai Samar. They've got half the side back in the pavilion of Dhruv Parche, and completion of 4 is 32 for 5. So you get the players outside, you get the taste of good cricket, you will get the taste of good commentary, you will get the taste of good sound and music as well on this ground, and with the sweet taste of the work and the voice in Hindi. Jay Bosle is coming all the way from Maharashtra for this All India tournament. It's 32 for 5 to start the proceedings of this 5th over. And in comes the batting power play, and in comes Jay Bosle as well.
धन्यवाद हरीश। 32 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर 84 रनों के जवाब में 4 ओवरों का खेल यानी कि आधे ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। अभी भी 52 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। ऐसा नहीं मैच अभी भी हाथ से निकला नहीं है ध्रुव पारसे टीम का, लेकिन घुंघरू का खेल नहीं है एक पारी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कारनामे वैसे कर दिखाए। ये ऑलराउंडर की हैसियत से जाने जाते हैं। गेंदबाजी उनकी थोड़ी सी खराब रही, लेकिन उसका पूरा भरपाई उनको बल्लेबाजी में करनी पड़ेगी। 24 गेंदे और 52 रनों की आवश्यकता, और गेंदबाजी के मोर्चे पर सर्वेश ये बैटिंग पावर प्ले का ओवर स्ट्राइक पर रहेंगे घुंघरू। ओ अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। अपील जोरदार कर रहे हैं, लेकिन अंपायर को पता है गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं है। इस अपील में उत्साह ज्यादा और आत्मविश्वास कम। शायद मैच कहां से पलटा मारा, और राम नागवेकर का शॉट निश्चित रूप से छक्के वाला स्ट्रोक था, लेकिन हवा का थोड़ा सा परिणाम देखने को मिला। बाहर जाने वाली गेंद सीधी फील्डर के हाथ में जा बैठी और वहीं से विकेट गिरना प्रारंभ हुआ। और इस बार हवा में खेल बैठे खिलाड़ी वहां पर तैनात, केदार थे वहां पर था, लेकिन जमीन पर दान कर दिया कहीं से। घुंघरू को जीवनदान मिला है जरूर, सिंगल जरूर निकला। इस ओवर की 2 गेंदों का खेल समाप्त। 33 रन, आधी टीम वापस खेमे में आराम फरमा रही है। 14 रन का योगदान राम नागवेकर का, बाकी बल्लेबाज थोड़े से खामोश रहे। गुरु प्रसाद आरोजकर कुछ नहीं कर पाए। नितेश करेकर ने एक छक्का लगाया, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। फिर एक बार सर्वेश निकलते हुए, ओ ये अच्छी गेंद गिरता है ना, गेंद थोड़े से हरकत कर जाते हैं और थोड़े से दिक्कत में आ जाते हैं बल्लेबाज। पहली इनिंग में भी आपने देखा कुछ गेंदें ऐसी थी, बल्लेबाज पूरी तरह से चारों खाने चित हो चुके थे। फुल टॉस गेट इस बार खेल दिया है हवा में। केदार का ये दमदार फील्डिंग, आज केदार ने चुंबकीय क्षेत्र बना लिया है। बल्लेबाजी के पास आप लगभग 3 कैचेस पकड़ चुके हैं केदार, और 1 विकेट का पतन। 6ठा विकेट वापस खेमे में लौटता हुआ। टोटल 33। थैंक यू। न्यू बैटर विकी पुजारी मैदान पर। गेंदबाजी अच्छी करी थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए उनको मौका मिला है। 33 रन बन चुके हैं, 51 रनों की और आवश्यकता, और विकेट निकले हैं 6 विकेट डाउन। 84 रनों का जवाब देते हुए सोचा नहीं था इस तरह से, पर इस बार खड़े खड़े खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं। जिस खिलाड़ी के लिए पावर प्ले लिया गया था वो मात्र नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर खड़ा है, गौरीश नागवेकर। और एक डॉट निकली, बिंदी निकली इस मैदान पर। इस बार अच्छी गेंदबाजी, शायद यहाँ पर निकलते विकेट कीपर के हाथ पे, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। हेलो 5, अब 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है और 51 रनों की और आवश्यकता। 18 डिलीवरीज लेफ्ट एंड 51 रन रिक्वायर्ड। प्रति ओवर 17 के औसत से रन, यानी कि 3 बड़े शॉट आपको प्रति ओवर चाहिए। 2 शॉट आप लगाकर मैच नजदीक ले सकते हो। ओ ये देखिए, ये गेंद निकली जाए, दर्शक बने रहे खिलाड़ी, सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। उम्मीदों पे खरा उतरना पड़ेगा गौरेश को, ऐसे बड़े शॉट और लगाते रहने, लेकिन साथ साथ बॉल वाला रहा गेंदबाजी का। लेकिन अब देखना है सत्येंद्र गेंदबाजी के लिए।
ओ इस बार फिर एक बार खेल दिया, लेकिन डिप में खिलाड़ी तैनात है। गेंद को जब तक फील्ड करते 1 रन और खाते में जुड़ जाएगा। 1 रन के साथ साथ टोटल अब पहुंचा है 40 रन पर। ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अगर घुंगरू को मिल जाए तो शायद ध्रुव पारसे का खेमा काफी खुश हो जाएगा। शायद मैच अगर कोई जीत दिला सकता है तो एकमात्र खिलाड़ी अब बचा है वो एक घुंगरू मैदान पर गौरेश नागवेकर। लेकिन सत्येंद्र गेंदबाजी के मोर्चे पर वापसी करना चाह रहे अपने टीम के लिए। और इस बार विकी पुजारी के तेज गेंद थी, तेज रफ्तार के साथ बल्ला भी घुमाया। स्क्वेलिंग अंपायर के बगल में से जब तक फील्ड की जाती गेंद को 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 41, 41 रन। अभी भी और 43 रनों की आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। यानी कि देखा जाए तो ये 7 बड़े शॉट का खेल बाकी है, लेकिन वो 7 बड़े शॉट आएंगे कब और किसके बल्ले से, ये मात्र समय की मांग है, समय की पुकार है। और गौरेश नागवेकर तैयार सत्येंद्र की अगली गेंद का सामना करने के लिए मैदान पर। फिर एक बार, इस बार हवा में खेल बैठे, ताकत नहीं, खड़ी हो गई है गेंद के नीचे खिलाड़ी और एक आसान सा कैच जिसके ऊपर पूरा दारोमदार था। वो गौरेश नागवेकर भी आउट होकर पहले वापस और आशाओं को यहां पर एक सुरंग लगता हुआ मैदान पर। विकेट नंबर 7। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। बड़े बड़े शेर थे ध्रुव पारसे टीम दे। ऊपरी क्रम वाली बल्लेबाजी पूरी तरह से ढेर हो गई और जिसके चलते हुए न्यू बैटर मुन्ना दाभोलकर मैदान पर। ऑलराउंडर खिलाड़ी जो कि आउट होकर पहले में वापस यहां से मैच में वापसी करना कोई चमत्कार की अपेक्षा होगी। चमत्कार को नमस्कार किया जाता है और चमत्कार शायद वापसी करेगी ध्रुव पारसे के लिए, लेकिन देखना पड़ेगा। विकी पुजारी नॉस्ट गेंद पर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मुन्ना दाभोलकर मैदान पर। सत्येंद्र जिस विकेट की तलाश कर रहे थे वो विकेट आखिरकार मिला, निश्चित रूप से विकेट निकला। वापस जाना पड़ रहा है मैदान से बाहर और न्यू बैटर मैदान पर। और इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, गेंद और बल्ले का जिस तरह से संपर्क होना चाहिए था वहां पर हुआ नहीं। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 1 रन के साथ टोटल आगे जरूर बढ़ेगा, लेकिन जीत की मात्रा और थोड़ी सी कम होती हुई नजर आएगी। टोटल इस सिंगल के साथ पहुंचा 42 रन। आधा फासला इस 6ठे ओवर में तय कर चुके हैं, आधा फासला अभी भी तय करना बाकी है। विकी पुजारी स्ट्राइक पर। ओ यॉर्कर लेग की गेंद बैकफुट पर से हल्का सा पंच कर दिया। यॉर्कर लेग की गेंद थे, लगभग 10 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 1 रन के साथ साथ लगभग 6 ओवरों का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ टोटल 43 रन स्कोर बोर्ड पर। 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और 12 गेंदों में जीतने के लिए और 41 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदे 41 रन, यानी कि अब तो देखा जाए तो 60-40 का मुकाबला। कोई चमत्कार ध्रुव पारसे टीम को इस मैच में वापसी कर सकता है, मैच को जीत दिला सकता है। लेकिन अगर नितेश गड़ेकर, गुरुप्रसाद आरोस्कर और घुंगरू कुछ देर और बल्लेबाजी कर लेते, शायद राम नागवेकर का वो कैच सीमा रेखा पार चला जाता तो मैं कहता ये मैच आखिरी ओवर तक चला जाता। लेकिन क्रिकेट में अगर मगर को कोई स्थान नहीं होता। अच्छी फील्डिंग देखने को मिली साई समर्थ के मैदान पर, अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। एक तरफ बल्लेबाजी कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था 60 का आंकड़ा भी पार होगा कि नहीं, लेकिन देखते देखते 83 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए। 84 रनों का विशाल लक्ष्य था, पीछा करने के लिए मैदान में उतरी थी। शुरुआत अच्छी रही थी, लेकिन राम नागवेकर जैसे वापस लौटे बाकी बल्लेबाजों की तू चल मैं आया, इस तरह की बल्लेबाजी मैदान पर देखने को मिली। धीरज आए गेंदबाजी के लिए। शॉर्ट ऑफ लेग की गेंद इस बार खेलना चाहते थे, पॉइंट के ऊपर से गेंद गली की दिशा में निकल रही थी। बहुत ही शानदार फील्डिंग, सिंगल मात्र निकलेगा। सिंगल के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 44 रन स्कोर बोर्ड पर। 40 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। अगला मुकाबला होगा ये स्ट्राइकर्स वर्सेस सातेरी क्रिकेटर्स के बीच में। टॉस जीता है सातेरी क्रिकेटर्स ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है।
इस प्रतियोगिता का दूसरा मुकाबला अब देखेंगे। वैसे तो अनुमान अपने माँ बाप के याद में ये प्रतियोगिता, ओ अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। उज्ज्वला तुकाराम चोपड़ेकर मेमोरियल ट्रॉफी 2023 स्पॉन्सर बाय मोहित चोपड़ेकर। क्या आयोजन है, क्या मैदान है, क्या ट्रॉफीज है, क्या खिलाड़ी है। देश के हर एक कोने से खिलाड़ी इस मैदान के ऊपर, वो टेनिस बॉल क्रिकेट के सितारे आपको नजर आएंगे 3 दिन। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा, जिसे क्रिकेट की सांकेतिक भाषा में पंजाब टू हरियाणा कहा जाता है, वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त एक सिंगल खाते में लिखा जाएगा। अतिरिक्त सिंगल के साथ साथ टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 45 रन। आगे निकले थे खेलने के लिए, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं मुन्ना के साथ। योगेश है नाम, लेकिन मुन्ना के नाम से जाने जाते हैं। और एक डॉट गेंद निकले, बिंदी गेंद निकली। अगर ऐसी गेंदें निकलती रहेगी तो मैं कहूंगा ये तो औपचारिकता ही शेष रहेगी। और साथ साथ रिकॉग्नाइज बल्लेबाजी तो समाप्त हो चुके हैं इससे पहले, घुंघरू आउट होने से पहले। आगे निकले खेलने के लिए, एक शानदार स्ट्रोक, हवा में खेल बैठे खिलाड़ी वहां पर, और एक विकेट, विकेट नंबर 8 वापस खेमे में लौटता हुआ योगेश दाभोलकर। थैंक यू। नए बल्लेबाज अभी अभी मैदान में आए। अगले मुकाबले में संदेश ये अच्छी गेंद, फिर एक बार निकली विकेट कीपर के हाथ में। अगले मुकाबले में आपको दोडामार तालुके के सुपरस्टार क्रिकेटर्स देखने को मिलेंगे। सुंदर जाधव, समीर गावड़े, साईश नाइक, दाजी शेट्टी, ये खिलाड़ी आपको मैदान के अंदर देखने को मिलेंगे। इस बार उठाकर खेला, लेकिन दूरी नहीं, हवा में खेल बैठे हैं विकेट कीपर आते हुए, लेकिन किसी और ने कैच को जाना पसंद कर दिया क्योंकि आंखों के ऊपर सूरज की किरणें, एक रन नहीं ले पाए वहां पर। और तब तक ओवर समाप्त होता हुआ 7 ओवरों का खेल समाप्त। टोटल स्कोर बोर्ड 45 रन स्कोर बोर्ड पर। अभी भी 39 रनों की और आवश्यकता, आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी। अगला मुकाबला यहां पर आपको देखने को मिलेगा सातेरी क्रिकेटर्स वर्सेस ए स्ट्राइकर्स के बीच में। शायद मोहित चोपड़ेकर भी मैदान के अंदर देखने को मिलेंगे। आनंद बद्री, आपकी जरूरत है यहां पर कमेंट्री बॉक्स में। आइए आनंद बद्री। टाइम आखिरी ओवर लेकर बाबल जोरे, जिन्होंने बल्लेबाजी में दमखम दिखाया आखिरी ओवर डालने के लिए। ऑफ स्टंप से बाहर खींचकर खेला हुआ स्ट्रोक, कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा में। डीप में कोई खिलाड़ी तैनात नहीं, पीछा किया जा रहा है। आउटफील्ड थोड़ा सा यहां पर धीमा होने के कारण 2 रन और खाते में जुड़े। 2 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 47 रन स्कोर बोर्ड पर। 84 रनों के जवाब में थोड़ी सी बल्लेबाजी खराब रही पहले मुकाबले में। बड़े टोटल का पीछा कर रहे थे लेकिन नाकामयाबी नजर आती हुई। ओ हटकर खेलने की कोशिश, फिर एक बार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। गेंदबाजी अच्छी रही साई समर्थ टीम की इस मैदान पर। पहले बल्लेबाजों ने कारनामा कर दिया, उसके बाद यहां पर गेंदबाजों का कारनामा देखने को मिला इस मैदान पर। स्लो ओवर 1, फिर की गेंदबाजी, थोड़ी सी फ्लाइटेड डिलीवरी। ये चतुराई भरी गेंदबाजी, क्योंकि जानते हैं तेज गेंद का इंतजार करते हैं विकी पुजारी। और इस मैदान पर जिस तेज गेंदबाज ने गेंदबाजी करी है, बड़े शॉट आसानी के साथ निकले बल्लेबाज के बल्ले से।
और इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद खेल दिया सीधा लॉन्ग ऑफ के नजर से गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए और इसी के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए ध्रुव पार्सन टीम के टोटल पहुंचा 51 रन पर। मैच लगभग हाथ से निकल चुका है, औपचारिकता बाकी इस मुकाबले की मात्र। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, यहाँ पर छोटी गेंद थी, घूम कर खेलने की कोशिश, सफल हो चुके थे ऑफ स्टंप के बाहर, तो लेकिन थोड़ी सी धीमी गेंद थी। इंतजार कर रहे थे तेज गेंद का, कुछ रन अर्जित किए जाए, जाते जाते सम्मानजनक टोटल तक लेकर चला जाए। हार हो गई तो कोई बात नहीं है, इसी सोच के साथ। और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर निकले विकेट कीपर के हाथों में बिंदी गेंद के साथ पहला मुकाबला जीतकर अगले राउंड में प्रवेश करते हुए साई समर्थ की टीम 84 रनों का पीछा करते हुए मात्र 51 रन बना पाई, जो कि 8 विकेट के नुकसान पर ध्रुव पार्सन की टीम और इस मुकाबले को 32 रनों से जीतकर एक अपने विजयी सलाम यहां पर देते हुए नजर आ रही है साई समर की टीम। अगला मुकाबला जब तक शुरू हो जाता है, ले चलते हैं डीजे के सुमधुर संगीत के साथ। फिर एक बार आमंत्रित करते हैं हरीश काकड़कर सर को। धन्यवाद। हल या पहिल्या सामन्यातील सामनावीराचा मानकरी ठरतोय। आपल्या 2 षटकामध्ये 15 धावा देत तब्बल 3 मोहरे टिपणारा सत्येंद्र या सामन्यातील पहिला सामनावीर या स्पर्धेतील ठरतोय। सत्येंद्र Twelfth man of both the teams. 12th man of both the teams requesting to come in the commentary box.
Requesting extra player of Ace Strikers and Satheri cricketers, please report in the commentary box immediately. Next match will be played between the winners of the first match, that was Sai Samarth, and the winner of this match. So Sai Samarth हांकां रिक्वेस्ट तुमी मातशें रावपाचें, कारण नेक्स्ट मॅच जी जातली ती क्वॉर्टर फायनल जातली फर्स्ट सत्राची, आनी त्या खातीर साई समर्थ टीम तुमी बाय द टायम म्हाका दिसता च्या मारपा जाय नाल्यार कितें जाय जाल्यार तुमी अर्द वरान पावण वरान येवपाक जाता, कारण फुडल्या मॅच जातली ती तुमची जातली. सो हियर इट इज नाव द सेकंड मॅच ऑफ ऑल इंडिया Ujwala Tukaram Chopdekar Memorial Trophy will be played between Sai Samarth and I beg your pardon, it is played between Satheri cricketers and Ace Strikers. Satheri cricketers captain won the toss, deciding to field first. The same scenario was selected by the captain of Dhruv Parshe. He won the toss, deciding to field first, but could not chase it down in the first match. Here it is, some players from Maharashtra, some players from Goa for both the teams. Are a mixed bag. Let's see whether this combination works here for these teams. Ravi Ahire and Shubham Sherke for Ace Strikers. This time very nicely played, a sweep shot, a player in the deep. Very good player, Ravi Ahire. I've seen him play in 10 PL and played some good knocks for his side. I was there doing the commentary in Surat, Gujarat, and I have seen the caliber of this man, Ravi Ahire. He's going to be the key player for this Ace Strikers team. Smart and very tested customer, plays in a situation like this. So I'm trying to cut away. So let's see how we go ahead. The bowling team has not selected here this bowling over, so the fielding restrictions are eased off. Different sort of scenario, different sort of calculations. Going for the switch hit this time, just a little appeal, more sort of asking the question here to the umpire, Sujit Rane, very experienced, and I was having a word with Mohit Chopdekar, how you are going to go ahead with this sort of format, something different, something unusual, unheard of. And however, this is nice drive, that is a player in the deep. So some people, some spectators, some viewers on 70-70 might be surprised having this is being the first over, and they have seen so many fielders outside. So the rule goes like this, there is going to be a bowling power play which is going to be chosen by the bowling captain between over number 1 to over number 4. So that's a good cut shot, misfield here, they might be going for the second run, nicely played in the deep, at the backward point region, takes 2 runs.
So the bowling captain chooses which over to choose as the bowling power play between number 1 to number 4, and then the batting captain and the batsman out in the middle decides from over number 5 to over number 8 which is going to be that batting power play over. This time nicely pulled away, goes away from the fielder and goes for 4 runs. You can see he was back and across and pulls away nicely. Never intended to go for the 6, but he knew exactly where the fielder was placed. We already seen if you go into midst of discussions here, then there was a fine put up by the umpires in the first match in the second innings. Penalty of 1 or 2 players deciding depending upon how much time you have lost to bowl that 8th over. So you have to start your 8th over in the allotted time frame. Otherwise, there will be penalty that will be given by the umpires. Maybe 1 or maybe 2 fielders will be there inside in the ring. And still the bowling power play has not been opted by the captain of the bowling side. As the second bowler, it is Aniket Redkar starts to bowl the second over. He was almost about to hit wicket over there. It was going so deep, sometimes going that deep, and if you lose your balance and try to just lose the balance and can topple on the wickets, which can be hit wicket. So he has to be aware of that fact. Wide signal, nevertheless, adds to the total of 9 runs. We are into the second over. Short ball, this time he strikes it cleanly. What a strike, a clean strike for a pull shot. This is the first 6 of this second match for 8 strikers. He was trying that shot for quite some time now. Finally, he gets the right ball. आणि जी भायर आशिल्ली ती कॅच धरल्या तशरीम आणि भुरगो माणकुलो भुरगो फक्त 8-10 वर्साचो आसतलो आणि हांगा येवन 100 रुपयाचे कॅश इनाम इमिजिएटली ऑन द स्पॉट घेवन गेलो. सो तुम्ही अलर्ट आसात, तुम्ही रेडी आसात जाल्यार म्हाका दिसता 6 जर तर भायर वता जाल्यार बेगीन कॅच धरात आणि 100 रुपयाचे कॅश इनाम घेवन वचात. फक्त हांगा मेळटले उज्वला तुकाराम चोपडेकर मेमोरियल आणि ही इनामोस अशी इनामां तुमकां मेळत रावतली. तुम्ही जर तर स्पेक्टेटर सुद्दां आसात, प्लेयर्सांक डेफिनेटली मेळटली, खुबशीं इनामां आसात, तशेंच स्पेक्टेटर्साकय भरपूर अशी इनामां आसात. सो तुमी मातशे म्हाका दिसता दोळे उगडे करून जर तर रेडी रावले जाल्यार तुमच्या हातान बॉल येवपाक शकता आणि तुमच्या हातान 100 रुपयाचे इनामूय येवपाक शकता. Trying to pull that and you can see that he was having a look at the umpires whether it was a wide ball. We have seen so many times batsmen shuffle so much that they tend to expose the wickets. Just sometimes you are unlucky, then the ball might stay low, but if the ball goes about the top of the wickets, umpire definitely well within their right, well within their jurisdiction to call it a legal ball. This is in the air, he has timed it well, might be inside, might be outside, and one more 100 rupees. One more 100 rupees. Tashreem is having a wonderful time. He's taking more money than the players themselves.
What a time Tashreem is having. इस टूर्नामेंट में आप तशरीफ रखिए, तशरीफ लेके आइए और तशरीम की तरह इनाम लेके जाइए. This is once again, he has not timed it well. There are two fielders. Might be a catch taken. This is a really good catch here from Daji. Two runs penalty to 8 strikers. So very good umpiring here. 2 runs penalty given to 8 strikers by the officiating umpires. They were waiting. The batsmen, they should have come out in the middle. And this is exactly how you have to go, how you have to proceed. You cannot take time for the batsman to come out, in the middle. And 2 runs penalty given here. So Vaibhav now, the new batter. This is the highest level that you see, not only in umpiring, but the highest level of cricket. And even though I think Mohit Chopdekar has wearing the shirt of 8 strikers, there is nowhere he comes close to the decisions and decision making of the umpires. That's nice to see. Cricket should be at the top. Cricket should be at the forefront. That's what we are witnessing here at Ujwala Tukaram Chopdekar Memorial Trophy. It's nicely driven here, and the bowling power play. Oh, that was a good drive, but he set to the bowler, and just a single conceded. Power play chosen here by the bowling captain. After Ravi Ahire departs, that was a crucial wicket. Ravi Ahire mostly plays in the 6-7 and then hits around the bowlers. Fine player he is. So they will be definitely happy, and now Vaibhav comes and joins his partner. Right now, right in the block hole. Good drive, but sometimes in tennis ball cricket, you need to have little power and you need to time it more better than leather ball cricket. We have seen sometimes in IPL, just time the ball and the ball flies across for the boundaries. Once again, half helicopter, half flick shot here from the batter. He's trying his hard to get the boundaries. It's been difficult. Single takes the score to 27. Sundar is bowling beautifully. So Sundar is bowling a Sundar bowling here. Decently, the second over from Aniket was little costly with 2 sixes, but he also picks up the wicket. This time also he bowls consistently in that Yorker length region. Full length delivery. So once again another Yorker. You can get a single at the most. That's a very good talent to have as a bowler. Hitting that right areas for most of the time. First, the total runs will be counted, and then it will be minus by the penalty after completion of 8 overs. So right now the score is 30 for the loss of 1 wicket in 3 overs. Nicely stopped here. This time, the extra men should be aware that when the total is being
send off at the 8 overs, the calculations of 8 overs. So then after the ball out of 8 overs, whatever penalty will be there will be added or minused. Short ball, but short ball a little bouncing here. The effort ball here from the bowler, bowled by Saish, man from Dodamarg. So some from Dodamarg, some from Shidi, some from other areas, some from all parts of Goa. So quick bowling here. We have seen even a 75-80 is going to be a good total. That was a winning total in the first match. So teams must be calculating, teams must be thinking how to proceed in the first 4 overs, whether we have to keep the wickets in hand or we are taking the advantage of the power play overs. There is still a batting power play left which will be taken by the captain in over between 5 and 8. Goes for the big one. They are coming back strongly in this match. This has been a really good over. The first 4 balls, just 2 runs conceded here by Saish. This time, just going to be a single. So leg by signal here by the umpire going into the extras column. Short ball this time. This is an 8 striker from the 8 striker of 8 strikers. Short ball and pulled away with a lot of power and crossing a lot of distance as well. That's the kind of big hitting that is required for 8 strikers that will finish over number 4 halfway mark and 8 strikers are at 37. So after 4 overs, the score is 39 for 1. 39 for 1 is the score after completion of 4 overs. And I think it's a pretty good total. So if you go by just 1 wicket has been lost, 39 being the score, they are... So batting power play has not been selected here. This time he strikes it cleanly. Immediately it was 6 runs and he lost 100 rupees. That was almost on the cards to get 100. Well, Aniket comes once again into the bowling attack. He comes to bowl his second over and for the second half is going to be Jay Bosley. धन्यवाद हरीश. 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 5व्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर एक मोठा फटका. यार कर्लिंग पद्धतीचा चेंडू, एक वेगात टाकलेला चेंडू, पंचांकडे अपील, मात्र पंच आपल्या जागेवर तटस्थ. एक वेगात टाकलेला चेंडू स्विंग अँड मिस पद्धतीचा. अनिकेत रेडकर एकूण धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजे 45 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. स्ट्राईक वरती दिसतोय तो फलंदाज वैभव.
अतिशय सुरेख चेंडू यॉर्कर लेग पद्धतीचा या ठिकाणी एक सिंगल निश्चित मिळेल. थोडंसं मिस फिल्डिंग फंबलिंग झालेला क्षेत्ररक्षक त्याचा फायदा उठवत सिंगलचं रूपांतर दुहेरी धावामध्ये केलं जात आहे आणि या 2 धावाने धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ती 47 धावा या ठिकाणी एका कडेच्या मोबदल्यात. अतिशय सुरेख फलंदाजी मागच्या सामन्यात आपण बघितलं 80च्या वरचा धावफलक जमल्यानंतर त्याचा पाठलाग करणं किती कठीण असतं. त्यामुळे समोरच्या संघाला 70 धावाच्या आसपास रोखावं लागेल तर दुसऱ्या बाजूने फलंदाजी करावी लागेल. यॉर्कर लेग पद्धतीचा चेंडू परत एकदा फसलेला फटका क्षेत्ररक्षक मिडॉनवर येतोय. मिड विकेटच्या दिशेने झालेला चेंडू वैभवचे खेळी संपुष्टात आणणारा हा झेल दुसरा हादरा या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. तो म्हणजे या ठिकाणी 7 स्ट्रायकर संघाला स्ट्रायकर संघाला. हॅलो न्यू बॅटर नवीन फलंदाज मैदानामध्ये जातोय. 12th मॅन धनंजय भिंताड हा नवीन फलंदाज आपल्याला पहिलाच चेंडू या ठिकाणी खेळला जातो. एक चांगला कमबॅक म्हणावं लागेल या गोलंदाजाचं. पहिलाच चेंडू सीमापार पिटाळल्यानंतर त्यानंतर मात्र एक गडी बाद करतोय. वैभव सेट होणारा फलंदाज जो खतरनाक फलंदाजी करत होता त्याला मात्र तंबूच्या आसऱ्याला पाठवलं जातंय. धावसंख्या मात्र 47 असे धावफलकावरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात आपल्याला पाहायला मिळते ती या मैदानावरती. यॉर्कर लेग पद्धतीचा चेंडू अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षण फॉलो थ्रू मध्ये गोलंदाजाचं पाहायला मिळतंय. एक सिंगल मिळतंय. धनंजय स्वतःचं खातं खोलतोय. 5 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 48 धावा धावफलकावरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात या ठिकाणी प्रथम फलंदाजी करताना स्ट्रायकरचा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. सातेरी क्रिकेटर संघ नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय आतापर्यंत तर मी म्हणेन दोन्ही संघ या ठिकाणी या सामन्यात बरोबरीने चालताना दिसत आहेत. मात्र उरलेल्या 18 चेंडू मध्ये फलंदाजाचा गिअर या ठिकाणी बदलेल का? 5व्या गिअरची फलंदाजी मैदानावर पाहायला मिळेल. या निश्चितपणे 70-75 धावापर्यंत मजल मारली जाईल आणि समोरच्या संघासमोर एक तगडं आव्हान उभा करण्याचा इरादा या ठिकाणी स्ट्रायकर संघाचा या मैदानावर पाहायला मिळतोय. गोलंदाजीमध्ये परत एकदा आपल्याला दिसतोय तो साईश नाईक हा गोलंदाज. मॅन फ्रॉम दोडामार्ग तालुक्यामध्ये झालेल्या बऱ्याच स्पर्धांमध्ये उत्कृष्ट ऑलराऊंडर खेळाडू म्हणून ज्याची गणना केली जाते. उत्कृष्ट गोलंदाजाचं पारितोषिक ज्याच्या नावावर अनेक स्पर्धा तो साईश नाईक आपल्याला दिसतोय. तो विकेट किपरच्या भूमिकेत सुंदर जाधव या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण सजवताना दिसतोय. क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना पहा कशा पद्धतीने केली गेले. लॉंग ऑफ कव्हरच्या दिशेने एक क्षेत्ररक्षक, मिड विकेटच्या दिशेने एक क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळतोय. डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने एक क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळतोय. शॉर्ट वरती एक खेळाडू, शॉर्ट मिड विकेट वरती एक खेळाडू, ही का फिल्डिंगची व्यूहरचना. शॉर्ट पद्धतीचा चेंडू यावेळी आडव्या बॅटचा फटका मात्र फटका फसतोय. बॅटला चेंडू लागतोय की नाही पंचांचा इशारा तोपर्यंत येतोय. अर्थात लेग बाईटचा एकेरी धावेने धावसंख्या 49 अशी धावसंख्या आपण पाहताय. उज्ज्वला तुकाराम चोपडेकर मेमोरियल ट्रॉफी 2023चा हा दुसरा सामना या मैदानावरती. नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय आपल्या कर्णधाराचा सार्थ ठरवताना गोलंदाज. यावेळी मात्र खोदून काढलेला फटका कव्हरच्या डोक्यावर डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने चेंडू जातोय तो सीमा क्षेत्राच्या बाहेर. चौकाराने या ठिकाणी अर्धशतक पूर्ण होतोय. ते म्हणजे स्ट्रायकर संघाच्या 50 धावा ही धावफलकावरती लागल्या जात आहेत. धावसंख्या एकूण पोहोचते ती 53 धावा धावफलकावरती.
2 गड्यांच्या मोबदल्यात. एक सुरेख फटका जो लेदर बॉल क्रिकेटमध्ये आपल्याला अनेक वेळा पाहायला मिळतोय. कॉपी बुक स्टाईलचा एक बेहतरीन स्ट्रोक या सामन्यात या स्पर्धेच्या निमित्ताने आपल्याला पाहायला मिळतोय. 53 अशी धावसंख्या धावफलकावरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. साईचा पुढचा चेंडू, यावरती एक मोठा फटका. चेंडू हवेत, मात्र चेंडू जातोय आउट ऑफ द पार्क. स्टँड अँड डिलिव्हर, इट्स अ सिक्सर. थँक्यू. 2 मोठे फटके येत आहेत या षटकामध्ये. धावसंख्या आता मात्र भरभर वाढताना दिसते. या 10 धावा निश्चितपणे धावसंख्येला आकार देणारा 59 अशी धावसंख्या धावफलकावरती. एक षटकार एक चौकार. साईच्या गोलंदाजीवरती एक आक्रमक प्रहार पाहायला मिळतोय. परत एकदा शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू, 1 बाउन्स चेंडू जाईल तो सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावांसाठी आणखी एक चौकार पाहायला मिळतोय. थँक्यू. शुभम शेळकेच्या बॅट मधून आणखी एक चौकार. धावसंख्या पोहोचली ती म्हणजे 63 धावा धावफलकावर. 63 लॉस ऑफ 2 विकेट. 6th ओव्हर इन प्रोग्रेस. 6वं षटक, महागड षटक. परत एकदा फुलटा चेंडू, बॅक टू द बॉलरचा फटका. फॉलो थ्रू मध्ये अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षण संभाव्य. आतापर्यंत कुठल्यात जात आहेत. अजूनही षटकातील काही चेंडूचा खेळा शिल्लक असेल आणि फलंदाज मनामध्ये अनेक मनसुबे रचत या गोलंदाजीचा चिरफाड करण्याचा प्रयत्न, या पुढच्या चेंडूवरती करण्याचा प्रयत्न. 63 धावा धावफलकावरती एक मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने आगेकूच करताना दिसतोय तो ए स्ट्रायकरचा संघ. यावेळी मात्र स्विंग अँड मिस. मोठा फटका, जोरकस फटका. फटका फसतोय, चेंडू जातोय मेडन, चेंडू जातोय निर्धाव. षटक संपतंय 6वं. 6 षटकांचा खेळ समाप्त आणि 63 धावा धावफलकावरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. प्रथम फलंदाजी करताना ए स्ट्रायकरचा संघ 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. थँक्यू. शुभम आणि धनंजय भिंताडे ही जोडी. धनंजय भिंताडे बरोबर बोलायचं झालं तर कडे षटकार ठोकण्याची किमया, जशी त्याची उंची तसेच उंच उंच फटके मारणारा फलंदाज. तर दुसऱ्या बाजूने गोलंदाजीमध्ये मात्र बदल. गोलंदाजीसाठी येतोय तो विवेक हा गोलंदाज. लोकल गोलंदाज याच शिवलिंबचा या ठिकाणी मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळेल. धनंजय भिंताडे हा उंच पुराचा फलंदाज, अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ज्याची गणना, मोठमोठ्या स्पर्धांचा अनुभव ज्याच्याकडे, तोच या मैदानावरती विवेकच्या पहिल्या चेंडूचा सामना. मला या ठिकाणी थांबायचा आहे. माझ्या संघाची धावसंख्या 70-75 80च्या आसपास पोहोचवायची, हीच या जोडगोळीची अपेक्षा शुभम नॉन स्ट्राईक एंडला आपल्याला दिसतोय. स्ट्राईक एंडला दिसतोय धनंजय भिंताडे. यावेळी मात्र खेळलेला फटका अपेक्षित उंची चेंडूला मिळत नाहीये. मिड विकेटच्या दिशेनं सुरेख क्षेत्ररक्षण संभाव्य चौकार रोखला जातोय. केवळ सिंगल मिळते. सिंगल बरोबर एकूण धावसंख्या परावर्तित होते ते 64 धावा. उज्ज्वला तुकाराम चोपडेकर मेमोरियल ट्रॉफी 2023चा पहिला दिवस स्पॉन्सर बाय मोहित चोपडेकर. ही क्रिकेट स्पर्धा या हिरव्यागार मैदानावर आपण पाहताय. फुलटा चेंडू, त्यावरती एक मोठा फटका. आउट ऑफ द पार्क. पकडना चाह रहे थे चरण, हो गए सीमा रेखा के दर्शन. इट्स सिक्सर. थँक्यू. आता मात्र धावसंख्या बराबर वाढताना दिसते. धावसंख्या पोहोचली ती 70 धावा धावफलकावरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. शुभमच्या बॅट मधून आणखी एक ताबडतोब फटका, आक्रमक फटका, मेसिव्ह सिक्सर आपल्याला पाहायला मिळतोय. परत एकदा पायावरचा चेंडू, परत एकदा तोच रिप्ले, वारंवार तोच फटका. याही वेळी मिळतील पूर्ण अर्धा डझन धावा. धावसंख्या 76.
थँक्यू मित्रांनो, क्रिकेटमध्ये उलटा फेर व्हायला वेळ लागत नाही. जी धावसंख्या 60 तरी गाठेल का हा प्रश्न निर्माण केला जात होता. तीच धावसंख्या आता मात्र 90 तरी पूर्ण करणार का हा प्रश्न उपस्थित करणारी ठरते. 76 धावा या धावफलकावरती. शॉर्ट चेंडू, परत एकदा मोठा फटका. यावेळी मात्र अनिकेत रेडकर कडून चूक पाहायला मिळते. संभाव्य झेल सुटला जातोय. संभाव्य झेलाचं रूपांतर झालं असतं तर मोठा मासा गळाला लागला असता. धावसंख्या पुन्हा एकदा दुहेरी आकडा अर्थात 77 धावा दोन गड्यांच्या मोबदल्यात. 7वं षटक हे प्रगतीपथावरती. स्ट्राईक वरती आता येतोय धनंजय भिंताडे. एक मोठा फटका मारावा, 80 पार करावे हा मनसुबा धनंजयचा. परत एकदा त्याच दिशेने अनिकेत पुन्हा एकदा आपल्याला दिसतोय स्क्रीनवरती. यावेळी केवळ मिळेल ती सिंगल बरोबर धावसंख्या आता मात्र परावर्तित होते ते 78 धावा धावफलकावरती. 7वं षटक सांगतेच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसतंय. 2 ऑफिशियल्स आपल्याला मैदानात, सुजित राणे आणि त्यांच्या समवेत अभिजित तळेकर. तिसरे ऑफिशियल्स राजू दाभोलकर. उलटा चेंडू, परत एकदा मोठा फटका, आउट ऑफ द पार्क. खराब गोलंदाजीचं प्रदर्शन. बैल मुझे मार. धावसंख्या षटकाराने पुढे सरकले जाते ती म्हणजे 84 धावा. 7 षटकांचा खेळ समाप्त. शेवटचं षटक टाकण्यासाठी येतोय तो मुकेश. आणि या फलंदाजाबद्दल, शुभम बद्दल बोलायचं झालं तर रोहित शर्माची जर्सी क्रमांक 45 आणि ती पार करत 50 धावा पूर्ण करतोय तो शुभम. या मैदानावरचं, या स्पर्धेतलं मैदानावरती येतोय. एक मैदानावरचं वादळ तुफान घोंगावतंय. समोरच्या गोलंदाजीचं चिंधड्या उडवणारी फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. धावसंख्या 84 धावा धावफलकावरती. आता थोडीशी अंधुकशी आशा की 100 या ठिकाणी धावा पूर्ण होत आहेत की नाही. शेवटचं षटक 6 चेंडू. स्ट्राईक वरती धनंजय भिंताडे. यॉर्कर लेग पद्धतीचा चेंडू, हेलिकॉप्टरचा फटका. चेंडू लॉंग ऑफच्या सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी धावसंख्या पोहोचते ती 90 धावांवरती. थँक्यू. गोलंदाजी बद्दल बोलायचं झालं, मागची 3 शादिमे अब्दुल्ला दिवाना अशा पद्धतीची गोलंदाजी या मैदानावरती. वादळामध्ये, तुफानामध्ये जसा पाला पाचोळा उडून जावा, शुभमच्या मध्ये गोलंदाजी अक्षरशः नेस्तनाबूत झालेली मिळाली. यॉर्कर लेग पद्धतीचा चेंडू. रिप्ले म्हणजे काय त्याचं या ठिकाणी ज्वलंत उदाहरण. धनंजय भिंताडे. धावसंख्या पोहोचते ती 96. 96 धावा धावफलकावरती. थँक्यू. पायामध्ये बेड्या घाला. ताडे आउट. 96 धावांवरती हा तिसरा हादरा बसतोय. मित्रांनो, क्रिकेटमध्ये पहा, पहिल्या 4 षटकात अवघ्या 39 धावा जमवल्या गेलाय आणि शेवटचं षटक प्रगतीपथावर असताना तब्बल 96 धावांचा डोंगर या मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. न्यू बॅटर भूषण आपल्याला स्ट्राईक वरती दिसेल. आल्या मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न. हवेत चेंडू, चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक. आणखी एक गडी बाद. बॅक टू बॅक विकेट. 100 पार आम्ही तुम्हाला करू देणार नाही या इराद्याने गोलंदाज मात्र गोलंदाजी करताना दिसतोय. 4था हादरा बसतो या ठिकाणी ए स्ट्रायकर संघाला 96 या धावसंख्येवरती. थँक्यू. न्यू बॅटर मैदानात रणजित जातोय.
कारण काही शेवटचे चेंडू शिल्लक, त्यामुळे सेट होण्याचा या ठिकाणी प्रश्नच नाहीये. तुम्हाला मैदानात गेल्या गेल्या मोठा फटका खेळायचा आहे, कारण जशा पद्धतीची सुरुवात मिळाली मागच्या 2 षटकात 100 पार करण्याची तुमच्याकडे शक्यता निश्चितपणे आहे. 96 धावा या धाव फलकावरती, 2 गडी लागोपाठ ऑन हॅट्रिक वरती गोलंदाज मुकेश. मात्र या षटकात 2 षटकार त्याच्या पाठीवर आपण पाहिले. मात्र या ठिकाणी हॅट्रिक होईल का? मैदानातील पहिलं एक स्पर्धेतील पहिलं अर्धशतक शुभमच्या बॅट मधून आलंय. शुभ या स्पर्धेतील पहिली विकेट हॅट्रिक होईल का? मुकेशचा हॅट्रिक बॉल. यावेळी मात्र यॉर्कर लेग पद्धतीचा चेंडू मात्र नो मॅन्स लँड मध्ये पडतोय. एक धाव तर निश्चित मिळेल. 97 धावांवरती या ठिकाणी एकूण धाव संख्या. षटकातील पुढचा चेंडू, धावसंख्या मोठी निश्चितपणे या ठिकाणी उभारली गेली आहे. यावेळी मात्र मेन हेलिकॉप्टरचा फटका, बॅक टू द बॉलरचा फटका, फॉलो थ्रू मध्ये अतिशय सुरेख असं क्षेत्ररक्षण. 100 आम्ही तुम्हाला पार करू दिली नाही. 96 धावा असताना असं वाटलं होतं 110 धावापर्यंत मजल मारेल, मात्र केवळ या ठिकाणी 98 धावापर्यंत मजल मारतोय तो म्हणजे ए स्ट्रायकरचा संघ. मोहित चोपडेकरच्या चेहऱ्यावरती स्मित हास्य आपल्याला पाहायला मिळतंय. सामना या ठिकाणी निश्चितपणे मी म्हणेन पहिल्या डावामध्ये फलंदाजांचा विजय या ठिकाणी झालाय, मात्र त्याचा पाठलाग करताना समोरचा सातेरी क्रिकेटर संघ तोडीस तोड फलंदाजी करेल, एक मुंहतोड करारा जवाब या सामन्यात देईल का? ही येणारी वेळच सांगेल. या ठिकाणी 99 धावांची आवश्यकता, मात्र त्यामध्ये 2 धावा पेनल्टीच्या या ठिकाणी मायनस केल्या जातील. अर्थात 97 धावांची आवश्यकता असेल ते या 48 चेंडू मध्ये काय घडेल काय बिघडेल या दुसऱ्या सामन्यात हे येणारे 48 चेंडू ठरवतील. तोपर्यंत घेऊन जाऊया डीजेच्या सुमधुर संगीता बरोबरच अंग्रेजीमध्ये समालोचन करण्यासाठी पुन्हा एकदा हरीश काकोडकर सर. धन्यवाद.
So what a treat for the spectators, not only from all across course, especially from, I guess, Sodiem, Shiolim. Many locals will definitely be coming to watch these matches live. Yes, I can understand 70 is giving you the live coverage. You can sit at home and watch this progress of the tournament. But having coming on the ground and having a feeling to play the matches, witness the matches live, uh, such a grand platform that has been given by the organizers. I think all the Sholkars, all the Sodium people will be really, really happy to see some of the stars from all India coming and having a display of their cricketing skills. And they must be feeling, they must be comparing how the matches progress in their ward-wise, in their local tournaments, and how the standards of some of these players are coming from all India levels. So definitely I can understand that it's really hot and humid, but still they are coming on this ground and watching these matches live, witnessing one of the biggest tournament happening close by to them in the nearby area, in their homeland. And also on this ground, so they have got this ground really covered very well with lush green, not only infield but also the outfield, looking so good when you're watching it live on 70/70, getting the feedbacks from many of the cricket lovers who follow us, saying it's really looking good, it's really looking green, the pitch, the feeling watching the match live is really something else. So Shekhar to start. Aniket and Daji. Went for the shot. Poor keeping here. Did not bend, just trying to grab the ball with one hand. I think the keeper's job is trying to be alert on the toes. Starts off very well. The bowling power play has not been chosen here by the captain of the bowling side in the first over. This time it's a full toss ball, might be catch in the air. This was a new ball and catch taken easily. It could not clear that. He surprised himself. But we have seen this is not the first instance where a catch is taken in the deep off the full toss ball. Surprised the batsman, but the fielder was not surprised. First wicket going down at the score of 0 for 1. So full toss ball sometimes gives you wicket, just like what has happened here in the first over to Shekhar. This was a better ball. This is right in the block hole. 97 to get is not going to be easy to chase this down for Sateri cricketers. One of the batsmen has to come close to a 50, just like how we have witnessed the first 50 by Shubham Shelke. So again trying to pull it, fielded from the deep, comes in quickly. Well, the ball is in the court of the fielding captain to choose and to select the right bowler and to select the right over for the bowling power play. It's not necessary to choose it in the first over. You can select in the second, depending upon if the wickets are being lost. So going for the big heave. If the wickets are being lost, maybe 1, 2, 3, that time I think the bowling captain will think that this is the right scenario, right option here to take the bowling power play overs when the top order batsmen are back in the pavilion. So different captains has different thinking.
This was a shot. This was low as well, but down the leg side. Well, the captain must be having an idea. Sometimes the captain feels, yes, let us take that first over itself, the bowling power play, so that the top order bowler is there. I can bowl him out, and if I can get a wicket in the power play overs, it will be a great start. This is in the air. This might be a catch. Might be going in the hands. Just above the head. Down the ground. Times it well. Gets the first six. And now in comes the second over. First over went for 9 runs for the loss of 1 wicket. Bhushan. So in comes Bhushan to bowl the second over. Oh, missed a full toss ball. A big appeal. The umpire saying maybe going down the leg side, not interested. Just wanders off and having a wonderful smile that Abhijit Tharekar. Full toss ball. That should have been taken for more runs. When you require 12 runs per over, you expect such full toss ball and the gift to be taken for more runs. This is a slower ball. Asking for a wide. Left it all alone. And once again, it was well inside the guideline. So mixing it up well with a quicker ball, a slower back of the hand ball, which has a protection in the behind the wickets. This is once again a slower ball. This time also it's a big appeal. Let's see the decision from the umpire. Looks to be a leg by, yes. So 2 full toss, too slow. I think sometimes if you hold your grip tightly, the bottom hand, then you feel that when the ball comes in quickly, you got a chance to swing the bat in a hard way. So maybe Bhushan is trying the slower balls against these batters. Oh, that is nice bowling. This is really good bowling. They are not picking up well. Sometimes the slower balls, sometimes the medium paces. The bowler are doing a fine job. When you require 12 runs per over, he just considered a single 2 runs, in fact, in this over so far. Once again, a slower ball, and this time the wicket has been taken. This was the best slower ball of the lot. It landed in the right areas, and the swing from the batsman miscued and going straight to the keeper. Second wicket down at the score of 11. New batsman, Boxer. Short ball, might be one more chance. There is a fielder, and he takes it easily. So one more depart. Boxer just comes and Boxer walks out.
So after boxer walks back in the box of his team, new batsman comes in, Rajesh. Not looking good here. 2 overs go on, 3 wickets already down, and the score is just 11 on the board. A very good, strong team. 8 strikers looking at the moment. Certainly well poised. Not going to be easy to chase 97 runs. We have witnessed 83, 84 runs defended comfortably by the team Sai Samarth. So Sai Samarth definitely will have to wait for their opportunity to see who is going to be the team to face them in the quarterfinals. Lower full toss ball. There's a nice ball in cricket. Lower full toss are not easy to hit for boundaries and sixes. So good channel, this all the bowlers are concentrating and 8 strikers are striking regularly with the wickets. So Chami Khan not looking a quick speedster here. So Shami Khan bowls the 3rd over for his team. Once again, nicely bowled in the deep. Might be thinking of the couple here, and they decide against it. The fielding, the ground fielding, and also the catching has been very good. They've taken some easy catches, not given any chances to Satiri cricketers. Sai Samarth is requested to come close to the organizing team Pendle. They are requested to come close to the stage. Sai Samarth, the next match will be played between the winners of this match and Sai Samarth. At the moment, very well, strongly poised 8 strikers in this match so far. They have posted a big total and they are making it difficult for the batters to get even 1/6 of the bat. Once again, they are just ground shots at the moment. The ball is just going into the lush green infield and outfield for a carpet shot. Another single. Singles are not going to take them anywhere. It's just boundaries and sixes when the asking run rate has already crept up to 15, 16 runs per over. They require 1 or 2 sixes in every over. This is also nicely played, but straight to the man. One bounce throws back to the keeper. So another single taken. Well, from outside you feel that the ground is a little bit shorter, but I feel that when there are open fields like this, it's not easy to hit sixes because of the wind directions and also the humidity that is there on the below the ground, dampness there on the ground. So six hitting is not going to be easy. That's the reason 96, 97 is a big total. At the end of 3 is 17 on the board for the loss of 3. And the power play has been chosen here. The bowling power play to be chosen by the bowling captain has been selected. And that will be the scenario for most of the teams. Who wants to take the power play in the first over? They will feel that let us take 2-3 wickets and that will be the best scenario to take the power play over. That's exactly what the captain of the bowling side has chosen. Slower leg cutter here. He bowls that slower leg cutters very well. And that's the right length. The ball should land in the good length area somewhere around the off stump or maybe the fourth stump and going away from the right hander. Well, we have to see whether any of the batters has got to switch it here. This is a blind shot. Ball landed in the blind spot of the batsman, just trying to swing it widely, and he was having a wild guess at it. So another dot ball. The bowling looks very strong here of 8 strikers. Once again,
You can see that in spite of having to be bowling in these batting power play overs, Bhushan is doing a fine job. You just cannot stand firm like a cemented on the ground to play the leg spin. You have to make certain movements. They are certainly very steady onto the wickets, and this was the quicker one. And no batting whatsoever. We have witnessed a dry spell. The sequence of these dot balls and six not been broken here at this stage. And this is going to be a wide, and they might be thinking for a one by, yes, one extra run here. Not collected by the keeper, and also missed here by the short third man region fielder. Wide signal, so 2 runs added to the total. Takes the score to 21. At this moment, you can very well say this match is well poised and going one way. This time might be a 6 runs, might be a catch. It tried very hard, but finally we have witnessed 1-6. It was short. He was into the position and pulls it away over the head of the fielder. This is better. This is better cricket here. This is striking better from Sateri cricketers. Finally the over and this innings turning into a good one and a sweet one with those consecutive sixes. Fourth over comes to an end. Halfway marks is 33 for 3. आणि एक भुरग्याने एक बरे प्राइज घेतलेली आसा रेहानान 100 रुपयाचे इनाम बरी सुंदरशी कॅच धरली स्क्वेअर लेगाच्या दिशेन आणि 100 रुपयाचे इनाम म्हाका दिसता भुरगे हांगा भरपूर आयल्यात आणि मेसेज व्हॉट्सएपाचेर गेल्ली आसा सारखे पोजिशनार भुरगे रावल्यात आणि 100 रुपया घेत आसात आणि मोहित चोपडेकर म्हणटा भुरग्यांक डेफिनेटली आता तुम्ही 100 रुपया घेयात आणि बरो पेप्सी पियात आणि बरें दिसता पयसुल्ल्यान लोक आयिल्ले आसा हांगा धारबांदोड्या वाठारांतल्यान आणि मानेस्त हांगा जे गेस्ट आसात राजेश वांगणकर मिस्टर सिक्सर So 4 overs are gone back, and after 4 overs is 33. Target is 97 runs, which is a big target. So next 4 overs, let's see whether we can see some sixes and some hope here for Sateri cricketers. There can be any innings just like the 3 sixes we have seen from the bat of Samir. Can he do? Can he hit a few more? And can he get his team back in the race of winning contention? So next 4 overs is going to be Jay Bosley. धन्यवाद हरीश सर। ओ अच्छी गेंद, इस बार पूरी तरह से यॉर्कर लेके गेंद पूरी तरह से चकमा दे दिया बल्लेबाज को। 1 रन और खाते में जुड़ा, 2 छक्के लगे समीर गावड़े के बल्ले से और जिसके चलते हुए टोटल जो कि पहुंचा 34। 34 रन स्कोर बोर्ड पर, 97 रनों का जवाब देना है, लेकिन यहां से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। सर 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 शेखर ये गेंदबाजी के मोर्चे पर सामना करेंगे इस बार समित स्ट्राइक पर। ओ अच्छी गेंद, इस बार बैकफुट पंच, यहाँ पर सिंगल जरूर निकलेगा, रनआउट का शायद डायरेक्ट हिट हो जाती तो 50-50 का मौका था, यहाँ पर शायद वापस भी जाना पड़ता। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 35। इसलिए क्रिकेट में कहा जाता है अकल आने के लिए शक्ल बिगड़ने का इंतजार क्यों करे। टॉस जीतकर पहले 4 ओवर में 39 रन दिए थे आपने, उसके बाद गेंदबाजी खैरात में बांटी और इस बार आगे निकले थे खेलने के लिए। यहाँ पर रनआउट का खतरा हो सकता है, आउट। इस बार काफी बाहर पाए गए और ये रन चुराने की कोशिश में अपना विकेट गंवा बैठे। इसे कहते हैं पहले से ही मंदी। और उस बैटर सुंदर जादव मैदान पर दाखिल होते हुए, गेंदबाजी अच्छी करी है, अब बल्लेबाजी करनी है। आपके पास गेंदे कम बचे हैं, रन आपको बनाने हैं, लेकिन बात की जाए तो बाद में पछतावा करने से फायदा क्या जब चिड़िया चुग जाए खेत। ये कहने वाली बात जरूर है, लेकिन पछतावा तब करना चाहिए जब आपके हाथ से मुकाबला निकल जाए।
आपने 4 ओवर में 39 रन दिए थे, लेकिन आखिर के 4 ओवर में आपने 57 रन खर्च करे हैं। ये गेंद आते आते एक तगड़ा स्ट्रोक, कवर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ की दिशा, कवर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ की दिशा से वन बाउंस गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए सुंदर के बल्ले से निकलता हुआ एक बेहतरीन अति सुंदर स्ट्रोक। थैंक यू। टोटल पहुंचा 39, 39 रन। ऐसे अनगिनत चौके आपको लगाने पड़ेंगे बार बार। ओ ये अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, बल्ला ऊपर, गेंद नीचे से विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर 97 रनों का पीछा कर रही है ये टीम। लेकिन पहले 4 ओवर में पूरी तरह से बांध कर रखा, 2 छक्के छोड़े जाए समीर के, तो उसके बावजूद बल्लेबाजी पूरी तरह से धीमी, पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से स्तब्ध। ओ इस बार उठा करके लाए, खड़ी हो गई, क्या इसमें दूर है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, आउट होने की संभावना, सुंदर को चलता कर दिया, एक चौके की पारी सुंदर के समाप्त होते, विकेट नंबर 5, आधी टीम वापस। विकेट निकला 5वां, 5 विकेट गंवाने के बाद 39, 5 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। अब 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है और जीतने के लिए और जो कि 58 रनों की है आवश्यकता। जिस तरह से मुकाबला जो आपने 4 ओवर में आखिर के खर्च करे न रन, वही बचे हैं इन आखिर के 3 ओवरों में, यानी कि प्रति ओवर आपके लगभग 19 के ऊपर का औसत रखना चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाजी में और एक बदलाव, शुभम जिन्होंने अपने बल्ले से 50 बने हैं, और न्यू बैटर मैदान पर मुकेश सुंदर जादव आउट होने के बाद न्यू बैटर आए हैं, ऊंचे कद के हैं, और गेंदबाजी के लिए शुभम 50 रन, इस प्रतियोगिता का पहला अर्धशतक। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद इस बार हटकर खेला, लगभग मिड विकेट के दिशा में, और जी हाँ, ये भाई आप अभी छोटे हो, जितनी गेंद उड़ती है ना उतना आपका कद भी नहीं है। एक सिंगल निकला, सिंगल के साथ 40 रन पर पहुंचा, आपका कैचेस के लिए पैसा है। ओ ये देखिए, कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना वाला स्ट्रोक, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में। आपको कैचेस के 100 रुपए दिए जाएंगे, ना कि मैदान के अंदर गेंद को रोकने के। मैच धीरे धीरे दूर जाता हुआ, मैच अगर बनाना है तो हर ओवर में आपको 2-3 बड़े शॉट की आवश्यकता है। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद इस बार ऊंचा खेला, देखने कितने दूर, लेकिन खिलाड़ी को ढूंढ लिया, और एक विकेट, विकेट नंबर 6, तू चल मैं आया। थैंक यू। डीजे का म्यूजिक भी देखिए, वेलकम म्यूजिक लगाया है, किसका स्वागत करना चाह रहे हैं ये देखने वाली बात तो जरूर होगी, लेकिन स्वागत तो उस गेंदबाज का किया, स्वागत उस बल्लेबाज का किया जिसने 50 रन बनाए, एक विकेट चटकाया। न्यू बैटर मैदान पर साइश नाइक अब आते हुए 6 विकेट वापस खेमे में लौट चुके हैं, और यहां से अब शायद मैं कहूंगा आपको रुकने का मौका नहीं है, आते आते आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी मैदान पर, तभी मैच बन सकता है। ओ ये स्लो ओवर 1 डिलीवरी पूरी तरह से चकमा दे दिया था, इंतजार कर रहे थे साइज, शॉर्ट पिच है लेकिन तेज आएगी, लेकिन आते आते बहुत देर हो चुकी थी, आप शॉट खेल चुके थे। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, ये तकनीकी भरी गेंदबाजी, ये प्रोफेशनल खिलाड़ी है, ढेर सारे क्रिकेट प्रतियोगिता खेल चुके हैं, अनुभव है इनके पास, और ये प्रोफेशनल खिलाड़ी इनकी यही खासियत रहते हैं, पिच के ऊपर पिच का मुआयना करते गेंदबाजी करते हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद इस बार पीछा कर दिया, पॉइंट के ऊपर से गेंद निकल रही है, कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर, थर्ड मैन की रिजल्ट से सीमा पार 4 रन के लिए, बहुत देर के बाद निकला हुआ ये चौका। थैंक यू।
टोटल पहुंचा है रोहित शर्मा की जर्सी क्रमांक के ऊपर, यानी कि 45, लॉस ऑफ 6 विकेट। और इस बार देखिए हुक कर दिया इसको, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद निकल रही है 6 रन के लिए, और इसी के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए सातरी क्रिकेटर्स टीम के टोटल पहुंचा 51 पर। थैंक यू। अब 12 गेंदों का खेल बाकी, 46 रनों की और आवश्यकता। लास्ट 12 बॉल लेफ्ट एंड 46 रन रिक्वायर्ड। इस मुकाबले की अगर बात की जाए तो आपको छक्के लगाने पड़ेंगे। 7 छक्कों की तो बात है, लेकिन वो 7 छक्के आते आते कहीं ऐसा ना हो जाए बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, ये कहने वाली बात बार बार दोहरानी पड़े इस मैदान पर। अगर मालवनी में कहा जाता टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला, तो सातेरी क्रिकेटर्स के बारे में कहा जाता मालवनी में करूक गेलो संकासूर आणि झालो तयार नरकासूर। ओ ये मंकड़ विकेट के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन विकेट को नहीं लगी गेंद। डेड बॉल का इशारा आता हुआ फिर एक बार निकलेंगे गेंदबाजी के लिए। फिर की गेंदबाजी, फ्लाइटेड डिलीवरी या स्लोवर वन, ये थोड़ी सा गति परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, और फिरकी में काफी दिक्कत हो जाती है बल्लेबाज को। फिर एक बार स्विंग एंड मिस, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी। अब यहां से वापसी करना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन। रवि जो कि गेंदबाजी के ऊपर, ऐसा कहा जाता है जो ना देखे रवि वो देखे कवि। और इस बार खड़ी हो गई है गेंद, विकेट निकलेगा शायद विकेट कीपर गेंद के नीचे, साइश को वापस जाना पड़ रहा है। विकेट नंबर 7 रवि के खाते में सफलता। थैंक यू। अब टीम के कैप्टन, जिस तरह से MS धोनी निचले क्रम के ऊपर बल्लेबाजी आते हैं उस तरह से आए हैं विवेक, लेकिन भाई आपको वो कारनामा कर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट में चमत्कारों को नमस्कार किया जाता है और चमत्कार बार बार हुआ नहीं करता। जब जब चमत्कार हुआ है ना, उसे युगों युगों तक याद रखा जाता है। जब चर्चा हुआ करती थी 6 छक्कों के युवराज सिंह की, अब चर्चा हो जाती है रिंकू सिंह के वो 5 छक्कों की। ये क्रिकेट है, उगते हुए सूरज को नमस्कार किया जाता है। ये गेंद थोड़ी सी बाहर, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अंपायर का इशारा, आकाश को समांतर, ये गेंद है अवांतर, वाइड। तो स्लोअर वन, फिर की गेंदबाजी, काफी राज आ जाती है इस पिच के ऊपर। जब तांबड़ी मिट्टी हो जाती है ना, लाल मिट्टी के ऊपर ऐसी गेंदबाजी बहुत ही शानदार मानी जाती है। ये बनाया गया है पिच। ओ ये अच्छी गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी। इस बार इस ओवर में अगर बात देखी जाए, जब गेंद बल्ले को लगे तब विकेट लेकर निकली है, लेकिन बाकी गेंदबाजी डॉट गेंदी, बिंदी गेंदे निकले। ओ इस बार देखिए आगे जाए फिर बाहर अंदर की तरफ आए, चल कदमी थोड़ी सी करी, सिंगल निकला। धनंजय काफी तेज, काफी स्ट्रॉन्ग आर्म, सिंगल मात्र निकलेगा वहां पर। सिंगल के साथ साथ ओवर समाप्त 7वां और टोटल 53, 53 रन। आखिरी 6 गेंदों का खेल है बाकी और जीतने के लिए अभी भी 44 रनों की आवश्यकता। लास्ट 6 बॉल टू गो एंड 44 रन रिक्वायर्ड। अगला मुकाबला, इस मुकाबले में जीतने वाली टीम के साथ होगा साई समर्थ का। तो साई समर्थ के खिलाड़ी कृपया आप नजदीक आइए प्लीज, तुरंत मुकाबला खेला जाएगा। आखिरी ओवर लेकर रंजीत, वैसे तो रंजीत का नाम जुबा पे आ जाता है तो हिंदी फिल्म की बात आ जाती है, विलन था रंजीत, लेकिन यहाँ पर ये खिलाड़ी है रंजीत। अब गेंदबाजी बल्लेबाजी का ज्यादा मौका मिला नहीं है इनको। गेंदबाजी आखिरी 6 गेंदे डालनी है, 7 विकेट वापस जा चुके हैं और मैच में अगर वापसी तो नहीं हो सकती, लेकिन जाते जाते हार ऐसी हो कि जीतने वाले से ज्यादा हारने वाले की चर्चा हो। ओ इस बार शायद टिप्पा गिरने के बाद लेग स्टंप से बाहर, थोड़ी सी ऊपर गेंद
वन बाउंस का इशारा आता हुआ अंपायर का, 1 रन और खाते में जुड़ जाएगा। आपको सिर्फ ये लीग मैच तो है नहीं, नॉकआउट के मुकाबले आपको हर एक कदम फूक फूक पर रखना पड़ता है, हर एक रन खर्च करते वक्त सोचना पड़ता है। ओ इस बार देखिए गेंद कहां से कहां निकली, शरीर के ऊपर देखते रहे, लगा लेकर निकले विकेट कीपर के हाथों में, और एक विकेट एमएस यानी कि विवेक वापस खेमे के ओर, विकेट नंबर 8। थैंक यू, थैंक यू। अब सिर्फ इस मुकाबले का महत्व देखा जाए तो ऑल आउट होने का खतरा है, सिर्फ 2 विकेट बची है और 5 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है, तो शायद इस प्रतियोगिता का पहला ऑल आउट भी हो सकता है। पहली 50 आपने देखी इस प्रतियोगिता में। ओ इस बार उठाकर खेला नो मैंस लैंड में, मिड विकेट के दिशा में धनंजय बिनताड़े फिर एक बार नजर आते हुए, मात्र मिलेगा सिंगल, सिंगल से खासा कुछ बिगड़ेगा नहीं क्योंकि मैच कब का हाथ से निकल चुका है। मैं बार बार कहने से फायदा क्या जब चिड़िया चुग जाए खेत, आपको रोकना चाहिए था वो 2 ओवर में, पहले इनिंग में जब आप गेंदबाजी कर रहे थे तब। ओ इस बार इंतजार कर दिया, बहुत ही छोटी गेंद थी, गेंद निकलती हुई फाइन लेग सीमा क्षेत्र से बाहर, 4 रन के लिए। चौवा आया जरूर लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, चौवे के साथ टोटल अब पहुंचा है 59, 59 रन पर। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद फिर एक बार खेल दिया थर्ड मैन की दिशा में, डीप थर्ड मैन पर खिलाड़ी जब तक आ जाता रनआउट का खतरा, शायद डायरेक्ट हिट हो जाता। 2 रन और खाते में जुड़े, 2 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा है 61 रन, 61। ये मैदान देखिए आप यूट्यूब के ऊपर इस मैदान का व्यू देख सकते हैं, मानो ईडन गार्डन के ऊपर मुकाबला चल रहा हो, चपक के मैदान पर, गुजरात के अहमदाबाद स्टेडियम पर चल रहा हो मुकाबला। ओ ये अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, गेंद निकल रही है थर्ड मैन सीमा क्षेत्र से बाहर, 4 रन के लिए। अगला मुकाबला हो जाएगा 5 मिनट अंतराल के बाद, लेकिन तब से मैं सही समर्थ टीम के कप्तान उनको कहना चाहूंगा आप तैयार रहिए। ओ अच्छी गेंद बल्ले को लगी अंदरूनी किनारे से, 1 रन जरूर निकलेगा, दूसरे की मांग होगी, गेंद वहीं पर रुके हुई, लेकिन रन से क्या बात बनेगी, मैच कब का समाप्त हो चुका है। टोटल की अगर बात की जाए, मैच टोटल जो कि 66 रन पर पहुंचा है टोटल, यानी कि लगभग ये मुकाबला 30 रनों से जीता है। पहला मुकाबला भी उतने रनों से जीती थी टीम, ये मुकाबला भी उतने ही रनों से जीते है। वेल डन, वेल प्लेड यहाँ पर ए स्ट्राइकर्स की टीम, और साथ साथ साथी क्रिकेटर आपने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, आपका धन्यवाद। इस मैच के मैन ऑफ द मैच जिन्होंने अर्धशतक इस प्रतियोगिता का पहला लगाया, शुभम शेख है, गेंदबाजी में 1 विकेट भी चटकाया, मैन ऑफ द मैच ऑलराउंडर परफॉर्मेंस शुभम शेख है। आइए प्लीज आप मैन ऑफ द मैच का किताब लेकर जाइए, धन्यवाद। अगला मुकाबला का तुरंत लगभग शुरू हो जाता हुआ, और आमंत्रित करते हैं फिर एक बार अंग्रेज में विवरण देने के लिए सर हरीश काकड़कर, धन्यवाद।
and Tushar. And Tushar Narvekar, hailing from Kumar Zoa region. Kedar hailing from Panjim. So two of the very good players at the top of the chart. And bowling power play option has not been chosen here by the bowling captain. So the same scenario, the same strategy here in this match as well from the captain. They feel that we have to take early wickets, and after taking the early wickets, maybe in the third or fourth over, they can choose the bowling power play. So normal field here set in a T20 format. Two fielders behind the keeper. One in the short mid-wicket region, one at the backward of point. So Bhushan starting against Tushar. I felt as if Kedar is going to take the strike. Now Bhushan is starting against Kedar. Very nicely played. Played against the spin, but very comfortably nudged it around the mid-wicket region for a single. So Kedar must be definitely having a thought about power play not being taken in the first over. So whether he is going to play a batting approach or whether he is going to play the shots against this new tennis ball, which is very difficult to fly across for the sixes and boundaries. He goes for the switch hit. He saw the fielder was inside. He likes that switch hit. I've seen many times in the big tournaments, not only here but also many good tournaments across Goa on big grounds. Hitting sixes almost 80-90 meters with ease. Once again, this is very good bowling here. He's not bowling those leg cutters. He's bowling medium off cutters against the left hander. Smart piece of bowling. Kept that extra cover inside. Not easy to get the shots of tennis ball cricket in the extra cover region. This is very good bowling here. Slower ball, waiting onto the back foot to cut that ball away. So smart start here from the smart bowler Bhushan. Just a single so far. 3 dot balls against Kedar Zamaulikar. Maybe feeling little itchy here to get one big hit. This time also, this is a peel and he's back in the pavilion. This is an off cutter. Somebody had to give it over here, and it is the Kedar with the pressure being piled upon him by the bowler, bowling those dot balls in perfect areas. He felt he had to go after him, and in return succumbs to the pressure. First wicket down at the score of 1. Lucky to be alive on this ground. 2 for 1 in 1. Great first over by Bhushan, not only picking up the wickets but just conceding 2 singles. So the ends have changed. Maybe we might witness the same ends. The matches will be played in the later half and the sun goes down in the sea at the west side. So we might be playing some matches from one end itself. It's difficult sometimes as per Mohit and their organizers. When the sun is going down, it directly falls in the eyes of the batsman facing the sun.
but not at this stage. It's going to be both ends here. This is very nicely played. It goes for the big one. Gets the big one. What a mighty heave. Man coming from Sangam and shining here in Sholem. Samir Gowde starts off and is welcome with a big six. Just the 2 on the board in the first over and 6 to start the proceedings from Babal Zore gets the score to 8. The time stand, just stand and play down the ground for another single. The Babal has to understand that these are 8-over matches. You have to take the game deep. Yes, I can understand if the ball is in the slot, if you feel that it's a short ball, full toss ball, give it a full go. But when the ball is not in your zone, just step it around for singles and the batters, the top order batter need to bat a sensible innings. Like Shubham Sherke has played in the previous game, the first batter to get a 50. And nicely played, a full-length delivery. He missed it in the first ball, but he has corrected his length and line in the second and the third ball. So after getting the 6, they are just rotating around with the singles, looking a very strong side in batting and bowling department, 8 strikers. So there must be thinking in the camp of Sai Samarth to get somewhere around 75 at least to put up a pressure on this batting unit. This is really good bowling. This was quicker. He was trying to go for the big one, just trying to shift the gears here. Second over. Ten on the board. He's bowling those off cutters. He wants to go for the quick single and gets the single in the short third man region. By signal here by umpire Sujit Rane. Sujit Rane and Raju Dabolkar officiating this match. Goes once again for the switch hit. Doesn't look comfortable to go for the switch hits. So in spite of giving a 6 of the first ball, he bowls a pretty decent over. Second over gone out of the race and is 11 for 1. दारबांदोडेचे सरपंच आणि एका बऱ्या क्रिकेट मोगी बालाजी गांवस एक बरे सोशल वर्कर आणि क्रिकेटी खातीर खूप अशें काम केल्ले दारबांदोड्या एक ग्राउंड आसा दारबांदोड्यात आणि वयर स्तरार व्हेल्लो आसा आणि आज जे भुरगे आसा सावड्डे वाठारांतले दारबांदोडा वाठारांतले तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा संद मेळटा एक प्लॅटफॉर्म मेळटा आणि भरपूरशे लेदर बॉल आणि टेनिस बॉल क्रिकेट आमकां पळोवपाक मेळटा म्हजो बरो मित्र आणि एक बरो क्रिकेटीचो मागपी बालाजी बाब तुमकां येवकार करता आमी ह्या व्हड असो मोठ्या दबाज्याच्या टुर्नामेंटाक उज्वला तुकाराम चोपडेकर मेमोरियल ट्रॉफी ऑल इंडिया लेवल टूर्नामेंट येवकार बालाजी गांवस. So power play has been chosen here by the captain of the fielding side. And maybe the thought was Bhushan is having 1 over. So let's bowl that over when Bhushan is having that over. If Bhushan has bowled that over, it might be more pressure on other bowler to bowl in the 4th over. So maybe the right option chosen here by the captain to select the bowling power play. That's a good start. Well, wide ball signal here, but
I feel when the left-hander comes, he bowls the off cutters. When the right-hander comes, he bowls the leg spinners. So he has got the tenacity and the talent and the ability to bowl according to the situation and the player. Goes for the switch hit, but the line was right. Missed by just a small distance. Very smart and calculative bowling here from Bhushan. He is a really, really good talent to be having in 8 strikers. Once again, going for the big heave. A little appeal, but not a convincing one. Just an outside thought put up here by the bowler. Umpire was unfazed. Score is on 12 at the moment. 3rd over in progress. A really good start in these bowling power play overs from Bhushan. So once again, this is really a good over. Bowling in the right areas. He's going for the same shot. Sometimes the switches, sometimes the orthodox lock shot in the mid-wicket region. Still the score is struck on 12. Now Tushar is having a word to Babal Zore. That's a lovely piece of bowling. Chance of a run out at a non-striker's end. Direct hit. Oh, this might be close. This might be really close. It was good fielding and the 3rd umpire has come into effect. So let's see. Not out. He has grounded and inside. So it was a close decision, but batsman certainly grounds it and grounds it inside the popping crease. So very good umpiring here. He knew that that was very, very close decision. So went for the review, went for the referral and went in favor of the batting side. But that was a close single. It was risky, but the pressure was piling on Babal Zore and he wanted to go at the non-striker's end. Score just moves on to 13. 1-6 so far in this innings from the bat of Babal Zore into the 3rd over. Once again, you can see he is bowling so well, but he has not been getting the fruitful results. He's trying to get the wickets and he's bowling in the right areas to get a wicket as well. Sometimes when you bowl full tosses, short balls, God gives you wickets. Sometimes you don't get a wicket off in spite of bowling a good over. That's how the cricket is. The batsman still surviving in spite of a class bowling act. This is in the air, but this time there is no fielder in the deep. Gets the boundary. It was slightly fuller. He waited for that and goes for the big one. That's even better than my thinking. From here it's very difficult, but goes for the 6 runs. The over which was turning out to be a good one. Finally, Sai Samarth will feel comfortable and relaxed after the 6. At the end of 3, is 19 for 1. $19 for 1 in 3 overs. So wonderful hospitality here from the organizers of by Mohit Chopdekar and his team, getting and giving everyone what they want, especially the commentators, the umpires, the scorers, the live telecast.
It's the best. I think it's the best environment created here by the organizers. Industrial fan has been put here. They understood that it's difficult here to give commentary and also to set your concentration right. This time trying to cut that, but there was no room given here. It was close to the body, so just gets a single. Bowling unit is very strong of 8 strikers. They managed to defend at a score that posted of 96 runs comfortably in the first match. And the batters have to be little better here, innovative as well sometimes. If you don't get your perspective right, you might be faltering into a deep hole in these quarterfinals. So far, it looks so good for 8 strikers. Once again, this is good keeping here, good footwork. Just bowling a dot ball. This was once again the batsman shuffling across, hoping that umpire is going to give it a wide. The wides are not going to come by easily. You have to storm yourself out of this into the deep hole that you have put yourself with the dot balls played. This is in the air, but he has timed it well. He has played it well, and he has landed the ball out of the fence. Magnificent switch hit here from Tushar Narvekar. Well, I told you, you got to be innovative, you got to be inventive. That's what exactly Tushar has done over there. You cannot be predictable as far as the batsman is also concerned, just like the bowler. If you stay in the line, nicely played. Might be thinking of the second, but the fielding is really quick. They come quickly from the boundary line to inside the 30 yard, just restricts the batsman to a single. Takes the score to 27. The 4th over in progress so far after opener was lost in the first over itself on Golden Duck. These batters are slightly reconciling these innings. Once again, this is a nothing shot here. This was a quicker ball. No position whatsoever to play that shot in the mid-wicket region. Tushar is telling, don't be predictable with your footwork and don't give an indication very first up that I'm going to play that shot. Tushar has been a little better here. Babal has played a few dot balls. Once again, another dot ball here against Babal Zore name. Is struggling in this innings so far. Tushar is playing more sensibly and not giving too many dot balls. So 4th over, Shekhar, in spite of giving a 6, just concedes 8 runs in this over. At the halfway mark is 27 for 1. It's going to be a little drinks break here, and it will be changing commentary as well over to Jay Bosley, and I will have my time out in for a wonderful lunch provided by the organizers. हेलो, धन्यवाद हरीश सर। नमस्कार, हार्दिक स्वागत है फिर एक बार दोपहर के सत्र में। मुकाबला आप देख रहे हैं एक स्ट्राइकर्स वर्सेस साइज समर्थ के बीच में। टॉस जीता ये स्ट्राइकर्स टीम ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। 4 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है और 27 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट निकला, केदार दमदार जांबाव लेकर। केदार की दमदार बल्लेबाजी की अपेक्षा जताई जा रही थी, लेकिन केदार कुछ कर नहीं पाए।
लेकिन उससे ज्यादा मैं कहना चाहूंगा ये स्ट्राइकर्स की गेंदबाजी है, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। अब गेंदबाजी में शायद बदलाव नजर आएगा, नए गेंदबाज अब गेंदबाजी के मोर्चे पर। संजय धनंजय ये गेंदबाजी के मोर्चे पर। 4 ओवरों का खेल समाप्त, 27 रन ये हालात टोटल स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है और लगभग यहां से मैच को जीतना, आगे जाकर इतवार को इस मैदान पर फिर से दोबारा आना कौन किस टीम के नसीब में होगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। इंसान को सिर्फ प्रयास करना है और अंजाम तो भगवान के हाथ में, नसीब के हाथ में, वक्त पर छोड़ा जाता है। देखना है ये बचे हुए 4 ओवर कितने रन बना पाएगी साई समर्थ की टीम। फुल टॉस गेंद, इस बार पहली गेंद मिड विकेट के सर के ऊपर से गेंद निकलते हुए 6 रन के लिए स्टैंड एंड डिलीवर। तुषार नार्वेकर के बल्ले से निकला एक शानदार छक्का, फुल टॉस गेंद और पहले ही गेंदबाजी ने तेजी गेंदबाजी डालने की कोशिश करी और उससे ज्यादा तेज बल्ला घुमा और सही मिला गेंद के ऊपर 6 रन का ठप्पा, टोटल 33, 1 विकेट के नुकसान पर। शॉट ऑफ गेंद की गेंद फिर एक बार उसी दिशा में, बैक टू बैक सेकंड मैक्सिमम। बहुत थैंक यू। 2 बड़े शॉट 2 गेंदों के ऊपर, वापसी करना चाह रही टीम। पहले 4 ओवर में रन बने नहीं, लेकिन इस ओवर में शायद ये 2 छक्के रन का टेम्पो बढ़ाने के लिए कामयाबी। क्या होगा लेकर चलते फिर एक बार गेंदबाजी के लिए धनंजय, स्वागत यहाँ इनका कर चुका है 2 गेंदों के साथ, 2 छक्कों के साथ तुषार नार्वेकर, बहुत ही शानदार। दूसरी तरफ से बाबल जोरे जो कि और एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, ये जोड़ी कितने रन बना पाएगी ये देखने वाली बात होगी। फील्डिंग की सजावट, इस बार एक डीप में खिलाड़ी लगाया गया, डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी तैनात, डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी है। इस बार अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, लेकिन इस बार चूक है। 2 गेंदों सीधे बल्ले के साथ खेले और 2 छक्के यहाँ पर लगाए, लेकिन ये अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक थोड़ा सा बल्लेबाज को दिक्कत में लाने वाला था, लेकिन शानदार वापसी। 2 छक्कों के बाद ये तीसरी बिंदी गेंद निकलती हुई धनंजय की, 39 रन पर टोटल पहुंचा, 39, लॉस ऑफ 1 विकेट। फिर एक बार, इस बार देखिए तेज भरी गेंद, यहाँ पर विकेट कीपर भी बीट हो गए, बल्लेबाज भी, रनआउट का मौका, शायद ओवर थ्रो हो सकता है, लेकिन तुरंत आए वहां पर कवर बैकअप, लेकिन आगे निकल चुके थे यहाँ पर बाबल। सिंगल, 22 का इशारा अंपायर का आता हुआ, 1 रन, 1 रन के साथ 40 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, 4 ओवर में सिर्फ 27 रन खर्च करे, इस ओवर में 2 छक्के लगे हैं। अब व्हाट इज नेक्स्ट, अब यहाँ से देखना पड़ेगा समर्थ, सही समर्थ की क्या सोच है, कितने रन बना पाएंगे। नामदेव बानावलीकर का उनके टीम में समावेश हो चुका है और ये गेंदबाजी और मजबूत नजर आएगी सही समर्थ की, लेकिन उससे पहले बल्लेबाजी में रन उनको बनाने हैं। ओ इस बार शायद पूरी तरह से चकमा दे दिया, शायद अपील जोरदार कर रहे हैं अंपायर के पास, लेकिन अंपायर ने कहा जी नहीं, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद निकली बिंदी, गेंद निकली डॉट। अच्छी गेंदबाजी, 2 छक्के, लेकिन उसके बाद वापसी करी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। और बल्लेबाज बाबल जो इंतजार कर रहे हैं, उनके रडार में कब गेंद आ जाए और उसे कब नॉट रीचेबल करे, लेकिन गेंदबाज की वापसी हो चुके हैं, लेकिन 2 छक्के क्या वो फायदेमंद साबित हो गए बल्लेबाजी करने वाली टीम को। ये काफी तेज रफ्तार वाली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बार अंपायर का इशारा, वाइड का आता हुआ, 1 रन और खाते में, दोबारा डालनी पड़ेगी ये गेंद। टोटल पहुंचा 41, 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। कड़ी धूप में इस हरे भरे मैदान के ऊपर आप देख रहे हैं उज्ज्वला तुकाराम चोपड़ेकर मेमोरियल ट्रॉफी, स्पॉन्सर बाय मोहित चोपड़ेकर। और इस बार खेल दिया, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, कवर पॉइंट बाउंड्री से गेंद निकल रही है, जब तक गेंद को फील्ड करने की कोशिश करते, 2 खिलाड़ी को चेरते हुए गेंद निकले, सीमारे का बार, 4 रन के लिए, शानदार स्ट्रोक। टोटल पहुंचा रोहित शर्मा के जर्सी क्रमांक
45 रन पर, 1 विकेट के नुकसान पर। ये ओवर शानदार रहा। इस ओवर में लगभग निकले 18 रन, 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बैटिंग पावर प्ले हो रहा हमारे। अभी भी एक और वो बैटिंग पावर प्ले का अभी भी शेष है। शायद मैच में शायद 70-75 तक पहुंचने की तो कम से कम कोशिश रहेगी साइड समर्थक की, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखना है। अब इशारा हमारे ओर आता हुआ, इट्स बैटिंग पावर प्ले, यानी कि बल्लेबाजी करने वाली टीम की ओर से लिया गया हुआ ये है पावर प्ले का। आपको 35वें मिनट तक 7वां ओवर समाप्त करना है, 8वां ओवर 35वें मिनट तक आपको शुरू करना है, वरना आपको वो पेनल्टी, 2 फील्डर 1 फील्डर जो कि 30 यार्ड घेरे के अंदर जो कि पेनल्टी आपको दी जाएगी। गेंदबाजी में शेखर, ये गेंदबाजी पावर प्ले का ओवर, खुद के कोटे का दूसरा, सामना करेंगे स्ट्राइक पर तुषार नार्वेकर। 4 छक्के अब तक उनके बल्ले से। ये देखिए, घुटना टेक, तमाशा देख, बैठक स्ट्रोक लगाने की कोशिश करे, गेंद सीधी ब्लॉक होल में डाली हुई थी। यॉर्कर लिंक की गेंद पूरी तरह से चकाते हुए विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर कर रहे हैं गेंदबाज शेखर, पूरी तरह से बल्लेबाज को सिंगल के साथ यहाँ पर अप स्ट्राइक पर आएंगे बाबल जोरे। टोटल पहुंचा इस सिंगल के साथ 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मैच का अगर सूरत हाल यहाँ पर अगर बताया जाए तो निश्चित रूप से मैच में दोनों टीमें वापसी करना चाह रही है। एक अच्छा ओवर वापसी करेगी ये स्ट्राइकर्स की टीम, एक बड़ा ओवर मैच फिर एक बार बन जाएगा साई समर्थ टीम के लिए, लेकिन ये ओवर काफी मायने रखेगा क्योंकि ये पावर प्ले का ओवर है, बैटिंग पावर प्ले का ओवर। और इस बार बड़ा शॉट, खिलाड़ी सिर्फ जाएंगे गेंद लेकर आने के लिए, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर, और चौके के साथ 50 रन भी यहां पर पूरे होते हुए सही समर्थ टीम के। 50 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 49 रनों की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में दूसरे विकेट के लिए, और ये खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करना जानते हैं मैदान पर। शेखर के गेंद के ऊपर एक शानदार चौका लगा, पावर प्ले का इस्तेमाल किया और एक चौका अर्जित कर दिया। ओ ये तेज रफ्तार कर एक, लेकिन बाहर विकेटों से काफी दूर, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। शायद सीधा पेविलियन हो जाता, कमेंट्री बॉक्स होता तो हम बता सकते गेंद कहाँ टिप्पा गिरा और गेंद कहाँ की तरफ निकले, लेकिन आप यूट्यूब के ऊपर ये बार बार देख सकते हैं। शेखर फिर एक बार निकलते हुए, और इस बार उठा कर खेला है। क्या इसमें दूरी है? ऊपर तो बहुत चली गई है, लेकिन दूरी जितनी चाहिए पूरे आधा डजन रन। टोटल पहुंचा 57 रन स्कोरबोर्ड पर। ये मैच टर्निंग ओवर रहा, शायद कहने वाली बात तो जरूर है, लेकिन ये पावर प्ले अब तक इस ओवर की बात की जाए तो 11 रन निकले हैं, 1 वाइड, 1 चौका, 1 छक्का। और फिर एक बार वाइड, दूसरी वाइड इस ओवर की, और एक सिंगल निकलेगा। यह दबाव होता है हमेशा गेंदबाज के ऊपर, जब बड़े शॉट निकल आते हैं थोड़ा सा दबाव बन जाता है, क्योंकि जो पहले 4 ओवर में गलती नहीं करी थी वो गलती अब मात्र होती हुई नजर आ रही है। गेंदबाजी थोड़ी सी सुस्तीली नजर आ रही है। फिर एक बार, इस बार कवर के ऊपर से पीछा किया जा रहा है, लेकिन गेंद थोड़ी सी डांसिंग एरिया में, गेंद को जब तक फील्ड किया जाता 2 रन और खाते में जोड़ते हुए 2 रन के साथ टोटल पहुंचा अब 60 रन पर। 60 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर। छठा ओवर है प्रगति पर, यानी कि लगभग ये मुकाबला शायद 70 के ऊपर का होने का आशंका।
फिर एक बार पीछा करना चाहो, फिर एक बार गेंद निकली, इस बार बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवरों का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है। 60 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी, और जिस तरह से रन रेट यहाँ पर बरकरार रखा है, शायद इसी तरह की बल्लेबाजी होती रही तो 80 का आंकड़ा यहाँ पर निश्चित रूप से पार कर सकती है साई समर्थ की टीम। अगर 80 का आंकड़ा यहाँ पर पार हो जाए तो साई समर्थ के पास अच्छी गेंदबाजी है, तो निश्चित रूप से ये मुकाबला अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि सामने वाली ए स्ट्राइकर्स की टीम में अच्छी बल्लेबाजी है, प्रोफेशनल खिलाड़ी मौजूद है, और शायद मैच सुबह से हमने पूरे एक तरफे देखे हैं। ये मुकाबला शायद कांटे का होगा। शायद बातचीत हो रही है कि शायद गेंदबाजी के लिए अब गेंदबाज जो कि तो बॉलर रवि आए नए गेंदबाजी के मोर्चे पर। 6 ओवरों का खेल समाप्त, 60 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, और यहां से अब 12 गेंदों का खेल बाकी। ये महत्वपूर्ण है, 12 गेंदे। स्लो ओवर 1 डिलीवरी, टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकले, अंपायर का इशारा हमारे ओर आता हुआ इट्स वाइड। अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल 61 पर 61। इस बार कवर के ऊपर से खेला, 1 बाउंस। टोटल पहुंचा 65 65 रन पर। शायद थोड़ी सी रफ्तार पकड़े है टोटल ने, जो पहले 4-5 ओवर में कम रन बने थे उसका पूरी भरपाई करने वाला ओवर रहा वो छठा, और उसके बाद इस ओवर में एक बाउंड्री। स्लोअर 1 डालने की कोशिश, लेकिन इस बार काफी बाहर, वाइड का इशारा। इस ओवर की ये दूसरी वाइड डाली है रवि ने, और अब टोटल जो कि 66 रन 66। अच्छी साझेदारी इस दूसरे विकेट के लिए तुषार और बाबल के बीच में। फुल टॉस गेंद, ये हवाई फायर, क्या इसमें दूरी है? जी नहीं, यहां पर खिलाड़ी था वहीं पर ढूंढ लिया। शायद इस शॉट को चाय पीते अखबार पढ़ते उसके बाद भी स्ट्रोक लगा देते तो गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल जाते, लेकिन इंसान जो सोचता है वो कभी होता नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं तुषार आउट झालो। थैंक यू। एक शानदार बारी देखने को मिली, 32 रन बनाए अपने पारी में तुषार नार्वेकर ने। शानदार बारी को अंजाम दे दिया आउट होकर पहले वापस, और नए बल्लेबाज सूरज मैदान पर दाखिल होते हुए। सूरज गावड़े उर्फ भाऊ, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, अब तो अंदर जा चुके, शायद बल्ला बदलने की कोशिश कर रहे हैं। शायद अंपायर कह रहे हैं पहले आते समय आप बल्ला ले आ जाते। अब यहां से बची हुई गेंदे पर सूरज आखिरी ओवर में बल्लेबाजी करने आते हैं जरूर, लेकिन हार्ड हिटर बल्लेबाज की जगह उनके कद जरूर छोटा है, लेकिन कारनामे बहुत बार अच्छे कर चुके हैं। आरवी कोरगांव के ओर से बहुत सारा क्रिकेट खेल चुके हैं, ढेर सारे बड़ी प्रतियोगिता। अब यहां से देखना है, रवि को एक सफलता जरूर मिली है, लेकिन एक चौका भी निकला इस ओवर में, 2 गेंदे वाइड भी डाल चुके हैं। 66 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर। आपको 35 मिनट में अपने 8वां ओवर स्टार्ट करना है। ये अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक खेलने की कोशिश, फिर एक बार चूके आते आते उतना आसान नहीं है, और एक डॉट गेंद निकली, बिंदी गेंद निकली। जिस तरह से 20 में हम अक्सर 19वें ओवर की बात करते हैं, वो 19वां ओवर काफी महत्वपूर्ण है, उस तरह से 7वां ओवर 8 ओवर के मुकाबले में काफी महत्वपूर्ण। थोड़े से फंबल हो गए, गेंदबाज थोड़े से वापस जाना मुनासिब समझा अंपायर के, और हमारे अंपायर का इशारा हमारे ओर आता हुआ डेड बॉल का। ये स्लोअर 1, ये इसको तो नहीं बख्शेंगे, गेंद निकले सीमा रेखा पर, इट्स मैसिव सिक्सर।
साथ साथ हमारे और एक करीबी दोस्त दत्तराज गांव यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। उनके टीम का मुकाबला दोपहर के दूसरे सेशन में आपको देखने को मिलेगा। आगे निकले, इस बार खेल दिया कवर के ऊपर से, पीछा किया जा रहा है, पहला रन शायद पूरा होगा, दूसरे के लिए पलटना चाह रहे थे लेकिन मना कर दिया, शायद और तेजी होती तो खतरे की घंटी बज जाती। टोटल पहुंचा 73, 73 रन स्कोर बोर्ड पर। यह फाइटिंग टोटल अब बन चुका है। जिस तरह से गेंदबाजी है यहाँ पर साई समर्थ के पास, लेकिन ए स्ट्राइकर्स की बल्लेबाजी भी तगड़ी है। यह आमना सामना अच्छा होगा दूसरी इनिंग में, लेकिन ये रवि का ओवर, उसके बाद एक ओवर, कितने रन बनेंगे। इस बार फुल टॉस गेंद, लो ओवर फुल टॉस थी, निश्चित रूप से मौका था, शायद उठाकर खेल लेते, इंतजार थोड़ा करते तो शायद चौका निकल जाता। एक रन और खाते में जुड़ा, एक रन के साथ साथ ओवर समाप्त, 7 ओवरों का खेल समाप्त, 74 रन टोटल, 74। और यहाँ पर इस आखिरी गेंद के ऊपर शायद रिव्यू लिया गया है, जो कि कमर के ऊपर है या नहीं ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर देख रहे हैं अंपायर, आप भी देख सकते हैं यूट्यूब पर इस गेंद का रिप्ले। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है, शायद यहाँ पर निश्चित रूप से देखा जा रहा है किस तरह से, क्योंकि हर एक रन महत्व होता है, हर एक गेंद काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। देखना है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं रिप्ले इस गेंद के लिए। थर्ड अंपायर यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से गेंद निकली है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। शायद इट्स अ फेयर डिलीवरी, यानी कि गेंद आई थी जरूर कमर के हाइट से, लेकिन जब बल्लेबाज के पास पहुंची तो लगभग घुटने के पास। निगाहें काफी गड़ी है, इसलिए उन्होंने कहा भाई आप लेना चाहते तो ले लीजिए, लेकिन इट्स अ फेयर डिलीवरी, दूध का दूध और पानी का पानी तो होना ही था। 74, 74 रन, आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी, और आखिरी ओवर डालने के लिए गेंदबाज शुभम। ओ ये अच्छी गेंद, परिवर्तन के तौर के ऊपर, ओ वाइड, देखा समझा परखा, उसके बाद इस गेंद को वाइड डिक्लेयर कर दिया है। अतिरिक्त 1 रन, 75 पर पहुंचा है टोटल, 75। 6 गेंदों का खेल अभी भी बाकी, 2 बड़े शॉट साई समर्थ के लिए आवश्यक, 4 अच्छी गेंदें। फुल टॉस गेंद, लोअर फुल टॉस, नीचे खुद कर निकाला हुआ स्ट्रोक, यहाँ पर मिडान की दिशा में, जब तक खिलाड़ी फील्ड करते 1 रन और खाते में लिखा जाता। टोटल पहुंचा 76, 76 रन स्कोर बोर्ड पर। ये मुकाबला अच्छा होगा, क्योंकि दोनों टीमें तगड़ी टीमें, दोनों टीमों के पास अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी। 4 ओवर में पहले बांध कर रखा था, लेकिन उसके बाद बेड़िया तोड़ी है बल्लेबाजों ने। आगे निकले थे खेलने के लिए, लेकिन गेंद और बल्ले का जिस तरह से संपर्क होना चाहिए था वो उस तरह से हुआ नहीं, और एक सिंगल, 1 रन के साथ टोटल 77 रन, 77 पर पहुंचा है। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदों का खेल शेष, और 4 गेंदों में साई समर्थ के चाहते होंगे
कि 10-12 रन निकल आए तो अच्छे, सोने पे सुहागा होगा। अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, इसे कहा जाता है लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद, लेकिन इस बार बल्लेबाज हो चुके हैं आबाद। गेंद निकली 6 रन के लिए और टोटल पहुंचा 83। डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार, डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार। थैंक यू डीजे। गेंद आ चुके हैं वापस मैदान में, वापस आ चुके हैं गेंद और 83 पर पहुंचा है टोटल 83। यानी कि जिस तरह से सामने वाली टीम में गेंदबाजी है, लेकिन उससे बेहतर यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है। बाबल जोरे 34 रन बनाकर खेल रहे हैं, 32 रन बनाए तुषार नार्वेकर ने। फिर एक बार, इस बार हटकर खेलने की कोशिश, अच्छी गेंदबाजी, सफल हो चुके थे ऑफ स्टंप के बाहर। अभी भी इस ओवर की शायद 2 गेंदों का खेल बाकी है, इनिंग के आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी। 83 रन तो बन चुके हैं, यानी कि एक फाइटिंग टोटल इस मैदान पर बन चुका है। सुबह से हमने देखा। फिर एक बार चकमा दे दिया। यहाँ पर शायद सैक्रिफाइस करेंगे विकेट, लेकिन स्ट्राइक पर सूरज आ चुके हैं और आखिरी गेंद का सामना करेंगे। न्यू बैटर जरूर आएंगे, लेकिन अगर वाइड ना गेंद गिरे तो उनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिलेगा। क्या शानदार आयोजन इस प्रतियोगिता का। उज्ज्वला तुकाराम चोपड़ेकर मेमोरियल ट्रॉफी, स्पॉन्सर बाय मोहित चोपड़ेकर। और आज का पहला दिन और ये मुकाबला देखिए। ओ यार, कर लेंगे गेंद, इस बार खोद कर निकाला, मिडान पर खिलाड़ी तैनात, सिंगल तो जरूर लेंगे, दूसरे के लिए पलट रहे हैं, रनआउट जरूर हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये 2 रन काफी महत्वपूर्ण, इस 2 रन के साथ यहाँ पर पहली इनिंग समाप्त होते हुए टोटल पहुंचाए 85 रन। जीतने के लिए 86 रनों की आवश्यकता, 86 रन रिक्वायर्ड इन 8 ओवर। बहुत ही बढ़िया मुकाबला होगा। ये मुकाबला जीतने वाली टीम सीधी सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी, उसको संडे के लिए मौका मिलेगा, और जो हारेगी उसका तो पैकअप हो जाएगा। देखना है कौन सी टीम करते हैं टेकअप और किसका हो जाता है पैकअप। ले चलते हैं दूसरी इनिंग में हरीश काकोडकर के साथ, सुनते हैं डीजे का सुमधुर संगीत।
मातशे बॅट्समॅन मातशे बेगीन यात. बॅट्समॅन प्लीज कम फास्ट. The target of 86 runs, 85 is scored by team Sai Samarth. 86 is required for 8 strikers to enter into the semi-finals. फुडले टीम जी मॅच खेळटली सातेरी महालक्ष्मी आणि गणपती वॉरियर सेकंड सेशनाची रिक्वेस्ट करता. दोन्ही कॅप्टन मातशे जातीतले बेगीन हांगा येयात. कॉमेंट्री बॉक्सा कडेन आपले टीम शीट्स आणि जे आमी प्लेयर्स खेळटले तांचे रजिस्ट्रेशन करपाक जाय. सो ते मातशे टीम्स कॅप्टन मातशे हांगा रजिस्टर करात जे 11 खेळटले ते. आणि समतेच बॉल सिलेक्ट करपाचे. सातेरी महालक्ष्मी आणि गणपती वॉरियर्स हांची नेक्स्ट सेशनाची पयली मॅच जातली. कॅप्टनाक दोगांक रिक्वेस्ट करता मातसो बेगीन यो. सती महालक्ष्मी तुवें वर्सीस गणपती वॉरियर्स ही जातली नेक्स्ट मॅच. टॉसाक आपयता. बॅट्समॅन कॅप्टन्स मातशे बेगीन टॉसाक येयात आणि तुमची टीम शीट आसा ती हांगा रजिस्टर करात. ताज्या फुडली मॅच जातली सती महालक्ष्मी तुवें आणि गणपती वॉरियर्स जातकीच ती मांद्रेम बॉयज आणि AM क्रिकेटर्स हांच्या मदीं. सो रिक्वेस्ट करता मातशे बेगीन करात प्रोसिडींग्स. 2 जावन 10 मिनटां जाल्ली आसात. सो आमी रिक्वेस्ट करता मातशे बेगीन करात मॅचीची सुरवात. So Namdev to start. Please make it fast. Yes, get set, go, says the umpire. A run chase of 86 runs to see our first semi-finalist. Ravi Ahire and Shubham Sherke, the same openers. Goes for the big one. He felt that it was the ball that was in the arc. Namdev plays for team Asnora in Panchayat level tournaments. A very good bowler. Sati Mahalakshmi of Thue, captain, is requested to come fast here. This is a call going to captain of Sati Mahalakshmi of Thue. This is nicely played. This is in the air and is out. The fielder was placed in the deep. He wanted to go above that fielder. And now first big blow in the very first over without a single run being put on board. 0 for 1.
This time, Sati Mahalakshmi gets a single, gets off the mark the team total. What a big wicket that Ravi Ahire is a big player. So if you can get rid of without scoring anything, I think the job has been very well here by Namdev. This time also might be a catch. This might be the second wicket. And catch taken. Sai Samarth are doing a fabulous job. Shubham Sherke, who was the player of the match, just departs, giving catch once again to the straight fielder in that mid-wicket region. Back-to-back big blows. Both the opponents depart. Oh, this will be an easy run out. Oh, unlucky there. This could have been easy run out. He was halfway mark onto the wicket of 22 yards. He had to return back at just a poor throw, giving a big respite here to ace strikers. They are panicky at the moment. They are really panicky at the moment. Just the one on the board. They have already lost 2 wickets. They could have lost the third one as well. We have seen the bowling unit of Sai Samarth. They were so good in defending 85. And once again, and it's out. If it was not taken in the previous ball, it's taken this ball. Third wicket back in the pavilion in the very first over. Namdev strikes 3 big blows and 3 big wickets are going back in the pavilion. There is not going to be any review for the outside edges, inside edges. So umpire's decision is going to be final and binding. So there goes the third wicket at the score of 1, and it's looking very weak here and grim here for a team ace strikers. This is the last call to Sati Mahalakshmi to a team captain. Captain of Ganpati Warriors has already recorded and registered the name of the players and waiting for the toss. This is the last call to Sati Mahalakshmi to a team captain. जर तुम्ही आता लास्ट कॉल म्हणल्यार येना जाल्यार टॉस डायरेक्टली हँड ओवर करतले आमी गणपती वॉरियर्साक फॉर दॅट डिसिजन. जर तुम्ही आता येना कॅप्टन सती महालक्ष्मी तुयेचो जाल्यार इफ यू हॅव टेकन थिंग द बॉलिंग पावर प्ले आय थिंक एडवांटेज विल बी देयर फॉर साई समर्थ. Once again, going for the big one, just getting an inside edge towards the backward square leg region for a single. And the bowling has been very good, just like the first match. They are not conceding any extras. They are bowling on a tight leash, on a tight channel, which is not going to be easy for the batters to go for the big ones. This is a better shot. This is a good shot. Shuffled across, waited for that short ball, pulled it away and scooped it away over the fine leg region for 6. They require this 6 badly, and they got it from the bat of Ranjit. So it's 10 for 3 in 2.
So it's 10 for 3 after the end of 2. They are still having a long discussion, and there will be, if the time slot allotted by the umpires doesn't fit, then there will be penalty given to the fielding unit. So all the time calculations have been noted here by the umpires. Ganpati Warriors captain, please come for the toss. Captain of Ganpati Warriors, captain of Sati Mahalakshmi Thue is waiting for you. So he has arrived and the team has come requesting the captain of Ganpati Warriors, please come for the toss. Oh, that's a big strike. This is a big and a huge 6 from the big man Vaibhav. So back-to-back sixes, one in the last over, one the start of the third over. So Vaibhav, instead of going across the mid-wicket region, he went straight, which is a much better option that he chose to go with a straight bat. So ball is requested to be checked here, because there is a little water across that field. I think it's okay. So Sarvesh, left arm medium pacer bowling from round the wicket. This is once again, this might be the second 6 going out of the ground. It clears the field. 3 sixes, hat-trick of 6s, 1 hit by Ranjit and 2 back-to-back from the bat of Vaibhav. Well, this is tennis cricket at its best. It can shift its swing within no time. Within 1 over, you can see the tides being turned. Short ball. This is magnificent batting. This is powerful and outrageous batting from Vaibhav. Oh. So it was time for the toss for the next match, the first match of the second section. This is an expensive over, 19 runs coming off it. It can still be counted for more, just a single. GA 11A 2784 ही गाडी ब्लॉक करता फाटली गाडी काडपाची आसा. सो GA 11 2784 ही गाडी जी आसा मातशी ओनरान मातशी सायडीन काडची. So I am a straight shot and fielded very nicely by Suraj Gavde, who is fielding at the long off regions. But a magnificent over here. 21 runs coming off this over, and it's 31 for 3 in 3. Meanwhile, that news out from the toss arena. Toss won by the captain of Sati Mahalakshmi Thue and electing to field first against Ganpati Warriors. So now, if anyone had felt that this match was going into the kitty or into the half of Sai Samarth, this is the quarterfinals. They got this is all India level tournament. Panchayat and municipality, you can expect 5 top players. Certainly are the top 5 batters in any of the teams. But when you are taking some of the good all-rounders, some of the good batters, some of the good bowlers who can also bat a bit, they are there in your side, and you can consider this is a strong tournament. They might bat somewhere around 7 or 8 as well. In spite of losing 3 wickets, they are not afraid to play their shots, Vaibhav, and also getting the returns.
Now is going to be the bowling power play. Fourth over. If not taken in the third over, fourth over becomes the normal options here, obviously taken here by the umpires. Namdev, the man who has done the damage at the top, is here to bowl. This is nicely timed. But there was a fielder in the deep. Lucky it didn't go towards the hands. Namdev has been the pick of the bowlers who struck the big atom bombs in the first over itself, taking 3 big wickets. And that is what kept them at the backstage. So now it's going to be Ranjit. Ranjit has already shown his 6 hitting capacity with 1 big one. Going for the switch feed and missed here by the batsman, missed here by the keeper, missed here by the short third man, and a boundary rope is crossed by the ball. 4 runs. That was indeed a magnificent ball actually. Right, perfect Yorker. He saw the batsman going for the switch hit, bowled it down the leg side as an Yorker, fired it down, and the keeper could not collect that ball, and also no chance for the short third man region. They have not kept the short fine leg. So 4 byes, valuable runs here for 8 strikers. This time just played down the ground, can get a single. So they are at least milking away with the runs. They are that 4 runs were very lucky that came in the form of byes against Namdev, who is bowling decently at the moment, not conceding any loose balls. Vaibhav will be on strike, the big hitter. Oh, this means you are the key. You need to stay on the wicket. Till the time you are there, there will be worry for the 5th or 4th bowler. This time nicely cut away, up and over the point region fielder. Might get just a single. They will not risk his wicket in the form of run out. Good recovery by the fielder from the point region. Just restricting the batters to a single. This is a great game of cricket. Nobody would have thought after batters out at this point of time is the best option to be chosen. And they got their good bowler Arvind to bowl that over. So now halfway past is more 45 runs and is going to be Jai Bhosle for his expert updates in Hindi. धन्यवाद हरीश सर। अरविंद नेमड़ेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर ये बैटिंग पावर प्ले का ओवर, क्या वो टर्निंग पॉइंट ओवर रहा सर्वेश का, जिस ओवर में 21 रन निकले और वहीं से यहाँ पर रफ्तार पकड़ी है रनों ने, और साथ साथ एक कैच भी नामदेव बानावली करके गेंदबाजी के ऊपर हाफ चांस था लेकिन वो छूटा, और वहीं से ये जोड़ी शायद मैच को लेकर उड़ जाएगी, शायद यही अंदिशा इस मैदान से बाहर से। ओ इस बार देखिए खेलना चाहते थे अक्रॉस द लाइन, पहली गेंद के ऊपर चलता कर दिया इस खतरनाक बल्लेबाज को अरविंद नेमड़ेकर के खाते में, और एक विकेट, विकेट निकलता हुआ चौथा। एक बड़े टोटल का पीछा कर रही है ये टीम ए स्ट्राइकर्स की, जो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए 85 रन बनाए, 86 रनों का लक्ष्य रखा है। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था, 41 रन पर 3 विकेट, पहले ओवर में 3 विकेट निकले थे, उसके बाद एक शानदार साझेदारी देखने को मिली 40 रनों की ये दोनों के बीच में, और वैभव अब मात्र आउट होकर पहले में वापस 26 रनों के एक शानदार पारी को अंजाम दे दिया, 3 छक्के उनके उस पारी में, और न्यू बैटर मैदान पर। धनंजय जो कि मैदान पर।
वो आते आते बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे। धनंजय भिंताड़े ये इनका नाम है, एक आक्रामक ढांचे का बल्लेबाज है। और साथ साथ एक रन और लिखा जाएगा वाइड के साथ, अतिरिक्त रन के साथ टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 42 रन स्कोर बोर्ड पर। मैच बनेगा, दोनों टीमों के लिए बराबर का मौका, एक विकेट जरूर ज्यादा गवाया है अगर ए स्ट्राइकर्स की बात की जाए तो। ओ ये स्लोवर वन डिलीवरी, थोड़े से यहाँ पर निकलना चाह रहे थे रंजीत, लेकिन मना कर दिया। शायद देखने वाली बात होगी, अंपायर के पास जरूर मांग कर रही है रनआउट के लिए, क्योंकि बीच में आए थे ऐसा खिलाड़ियों का मानना। थर्ड अंपायर के लिए रेफर किया गया है। रेफर हो रहा है और आप दिल की धड़कन सुन रहे हैं और इट्स नॉट आउट, यानी कि वो अपना विकेट बचाने के लिए भाग रहे थे, जानबूझकर बीच में नहीं आए थे। ये प्रतीत हो रहा है यहाँ पर रिप्ले से। और निश्चित रूप से शायद थोड़ा सा निकल चुके थे काफी तेजी के साथ रंजीत रन लेने के लिए, लेकिन बाकी सहयोग नहीं दिया धनंजय ने, क्योंकि धनंजय जानते हैं यहाँ पर विकेट नहीं खोना है, रन तो बनेंगे जरूर, लेकिन धनंजय भिंताड़े एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है। बड़े बड़े प्रतियोगिता में बड़े बड़े छक्के उनके बल्ले से हमने कई बार देखे हैं, और आज वो एक पारी उनको मैदान के अंदर खेलनी पड़ेगी। साथ साथ अरविंद नेमड़ेकर मैन फ्रॉम सावंतवाड़ी, शानदार गेंदबाजी अब तक इस ओवर में करता हुआ। और इस बार हवा में खेल बैठे, शायद कैच का मौका, लेकिन गेंदबाज और एक फील्डर के बीच में नो मैंस लैंड में गेंद निकली, थोड़ा सा फंसा दिया था इस बार जाल में, लेकिन खुशकिस्मत रहे कैरी नहीं हुई वहां पर। एक रन और खाते में, एक रन के साथ 43 रन ये टोटल स्कोर बोर्ड पर। आधा फासला अब तय हो चुका है, आधे रन अब बन चुके हैं स्कोर बोर्ड पर, आधे और रन और बनाने हैं, क्योंकि 86 रन पीछा करना है। एक कीर्तिमान होगा अगर ये 86 रनों का पीछा आसानी से करती है ये स्ट्राइकर्स की टीम इस मैदान पर। अरविंद निंबड़ेकर और इस बार सामना करेंगे रंजीत, जो अब तक सिंगल बनाकर खेल रहे हैं। वो थोड़े से बैकफुट पर चले गए, खोद कर निकाला हुआ स्ट्रोक, शायद रन आउट करना चाह रहे थे। बहुत ही शानदार थ्रो था, एक विकेट की तलाश जरूर है उनकी टीम के लिए, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। एक रन और खाते में लिखा जाएगा, और एक रन के साथ साथ 44 रन, 44 लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 4 विकेट। पांचवा ओवर है प्रगति पर, इस ओवर के बाद 18 गेंदों का खेल बाकी रहेगा। वो 12 गेंदें काफी मायने रखेगी, और उससे पहले वो 7वें ओवर में कितने रन देती है सामने वाली टीम। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, ये तो भाई था शायद तोहफा था, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, कवर के ऊपर से गेंद निकले सीमा रेखा के बाहर। जिस बड़े शॉट की आवश्यकता थी वो निकलता हुआ धनंजय के बल्ले से। और इस छक्के के साथ ही 50 रन भी पूरे होते हुए ए स्ट्राइकर्स टीम के 50 रन बन चुके हैं, और अभी 36 रनों की आवश्यकता है। शायद पहले ओवर में जिस तरह से विकेट निकले, पूरा एक तरफा सा लग रहा था मुकाबला, लेकिन वैभव की शानदार बल्लेबाजी और अब धनंजय की। ओ ये अच्छी गेंद थोड़ी से आगे डाली थी, इससे पहली गेंद थोड़ी सी बल्लेबाज के रडार में थी, ये गेंद थोड़ी सी दूर थी। डॉट गेंद के साथ ओवर की हो चुके समाप्ति, 50 रन 5 ओवरों का खेल समाप्त, 18 गेंदों का खेल बाकी है और 36 रनों की और आवश्यकता। ये मुकाबला प्रति ओवर 12 के औसत से रन चाहिए। इस प्रतियोगिता की अगर बात की जाए, 8 ओवर के मुकाबलों में आपको 5 गेंदबाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, 3 गेंदबाजों को 2-2 ओवर डालने का मौका दिया जाता है। साथ साथ यहाँ पर 35 मिनट में आपका 8वां ओवर शुरू होना चाहिए, वरना आपको वो पेनल्टी जो कि आईपीएल के में जिस तरह से दी जाती है, 2 खिलाड़ी 1 खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के अंदर, और साथ साथ ये जो डगआउट के सामने रेखा बनाई गई है ना, वो आउट होने वाला खिलाड़ी जो वहां तक चलते आना चाहिए, बीच में अगर रुक जाए तब भी 2 रन की पेनल्टी मिलेगी, और साथ साथ उस रेखा को पार करने से पहले नया बल्लेबाज अगर अंदर नहीं आया तो भी आपको पेनल्टी मिलेगी।
5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 50 रन स्कोर बोर्ड पर। गेंदबाजी के लिए सत्येंद्र, ये गेंदबाजी के मोर्चे पर पिछले मैच में 3 विकेट इसने चटकाए थे, वो सत्येंद्र यहाँ पर गेंदबाजी के मोर्चे पर। ये ओवर इससे ये ओवर और 7वां ओवर काफी मायने रखेगा। रणजी स्ट्राइक पर है, एक छक्का आपने देखा, धनंजय के बल्ले से एक चौका भी देखा, लेकिन अब अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी भी काम बहुत बाकी है। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट अगर देखी जाए, एक थर्ड मैन पर खिलाड़ी तैनात है, अगर एक लॉन्ग ऑफ कवर पर तैनात खिलाड़ी, एक मिड ऑन पर, एक मिड विकेट पर, एक डीप स्क्वायर लेग पर, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर, एक पॉइंट पर, डीप पॉइंट पर एक खिलाड़ी तैनात है। शायद ये फील्ड की सजावट। अठारह गेंदे 36 रन। ओ इस बार देखिए तेजी बत्ती गेंद में, बल्ले के साथ गेंद निकले डीप स्क्वायर लेग पर, सीमा रेखा पर, 4 रन के लिए। इस चौके ने काम कर दिया पहले ओवर के, इस ओवर की पहली गेंद पर चौका निकला, टोटल पहुंचा 54। कहीं ऐसा ना हो जाए आम के आम और गुटली का दाम, शायद इस तरह की बात बन ना जाए, क्योंकि आपने पहले ओवर में 3 विकेट चटकाए, बाद में पछतावा आपको करना ना पड़े, लेकिन बल्लेबाजी अच्छी है रंजीत अब, और ये साझेदारी काफी महत्वपूर्ण रहेगी इनके बीच में। 4 रन तो अर्जित कर दिए है पहले गेंद पर, अब आगे 5 गेंदों का खेल बाकी है इस ओवर की। ओ अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, देखिए ये भी गेंद देख लिए, डीप थर्ड मैन सीमा क्षेत्र से बाहर, 4 रन के लिए, बैक टू बैक बाउंड्रीज, महत्वपूर्ण चौका। थैंक यू। क्रिकेट में उल्टा फेर होते हुए देर नहीं लगती, एक आध ओवर जो आपने पकड़ बनाई रखी थी, वो सर्वेश के ओवर ने उस पकड़ को पूरी तरह से खारिज कर दिया, और वहां से ये रन का टेम्पो, रन का रफ्तार आगे बढ़ता हुआ अब टोटल पहुंचा 58 रन पर। अभी भी 28 रनों की आवश्यकता। ओ ये क्या स्ट्रोक है, हवाई फायर, डी स्क्वायर लेग पर बैठक स्ट्रोक, 6 रन के लिए। थैंक यू। 3 गेंदों में आ चुके हैं 14 रन, मैच पलटा मारता हुआ। मैंने पहले कहा छठा और 7वां ओवर काफी परिणामकारक होगा इस मुकाबले के दौरान, और यही यहाँ पर देखने को मिला, 3 बड़े शॉट निकले हैं, और अब शायद मैच फिर एक बार रोमांचक के ऊपर खड़ा हुआ। रंजीत के बल्ले से निकला एक शानदार स्ट्रोक, अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, इस बार शायद लगी नहीं बल्ले को, शायद जहां खेलना चाहते थे वहां पर निकली नहीं गेंद। अंपायर का शायद जो कि अंपायर के ध्यान था वहां पर कि पॉपिंग क्रीज से बाहर निकले या नहीं। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, लेकिन इस ओवर का काम तो हो चुका है। प्रति ओवर 12 के औसत से आपको रन बनाने थे, इस ओवर में अब तक 14 रन आपने अर्जित करे हैं। अभी भी 2 गेंदे शायद इस ओवर की बाकी है, मैच बनेगा, मैच में मजा आ जाएगा। ओ ये अच्छी गेंद, निश्चित रूप से सिंगल तो जरूर निकलेगा, तेजी के साथ आए, रन आउट करने की कोशिश, कवर बैकअप, केदार का दमदार वहां पर, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, 1 रन के साथ साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 65 रन, 21 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। फिर एक बार यहाँ पर निकल आएंगे, ये महंगा ओवर साबित होता हुआ, और जो कि अब स्ट्राइक पर है बल्लेबाज धनंजय भिंताड़ी, मैन फ्रॉम शिरडी, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अब तक करी है। निकल रहे गेंदबाज,
और अच्छी गेंद, सम्मान कर दिया, ऑनर ऑफ द स्ट्रोक, क्योंकि इस ओवर का काम पूरी तरह से हो चुका है और अब खेल समाप्त हो चुका है। 6 ओवरों का 12 गेंदों का खेल, अभी भी बाकी 21 रनों की आवश्यकता। ये देखिए, हम अल्टी पल्टी शॉट की बात करते हैं, लेकिन 12 गेंदे और 21 रन, ये आंकड़ों का खेल है। 12 गेंदे 21 रन, ये ओवर महत्वपूर्ण। जिस तरह से T20 में 19वां ओवर महत्वपूर्ण माना जाता है, 5 ओवर में चौथा, 5 ओवर के मुकाबले में चौथा ओवर महत्वपूर्ण माना जाता है, उसी तरह 8 ओवर के मुकाबले में 7वां ओवर निर्णायक माना जाता है। इस ओवर में अगर रन बने, मैं तो कहूंगा इस ओवर में 10 रन भी निकल आते तो आखिरी ओवर में और मैच आ जाएगा। और गेंदबाजी के लिए शायद मेरे ख्याल से सर्वेश फिर एक बार नजर आते हुए, वहीं से उनका ओवर था और वहीं से फिसलता हुआ ये मुकाबला। 12 गेंदे 21 रन, मैच जिस तरह से बनना चाहिए था वो बनता हुआ नजर आ रहा है। और इस बार खेल दिया गेंदबाज के सर के ऊपर से, केदार की दमदार फील्डिंग फिर एक बार नजर आते हुए और एक रन खाते में लिखा जाएगा। अब यहां पर विश्लेषण देखिए, 11 गेंदों का खेल बाकी है और 20 रनों की और आवश्यकता। 11 गेंदे 20 रन, वही 21 रन उस सर्वेश के ओवर में, उसकी भरपाई करने वाला ये ओवर हो सकता है, शायद कसौट भरी गेंदबाजी हो, लेकिन सामने कौन है देखिए, धनंजय भिंताड़े। ओह, माइंड ब्लोइंग, व्हाट अ शॉट। चलिए जाइए देखकर आइए, ये आधा डजन रन, 6 रन। थैंक यू। हम यूं ही किसी की तारीफ किया नहीं करते, इन्हें हम जानते हैं, पहचानते हैं, इनका खेल हमने बहुत बार देखा है, बार बार देखा है। छक्का निकला इस बार मैदान पर। इस बार निश्चित रूप से मैनी हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, निश्चित रूप से यहाँ पर एक रन जरूर निकलेगा। मोहित की सांसें थोड़ी सी अटक गई थी, इस छक्के ने वो सांसें छूट गई है। जिस तरह से वो छक्का लगाना, हवा से बातें करता हुआ, और उमेश के क्या कहने। सर्वेश का ये ओवर भी महंगा नजर आ रहा है। फिर एक बार अब टोटल जो कि पहुंचा है 73, 13 रन की आवश्यकता है। ओ, इस बार हवा में खेल बैठा, कैच की संभावना, खिलाड़ी गेंद के नीचे, विकेट निकला। रणजीत के रूप में मैच ने फिर एक बार कांटा बदला है, करवट बदली है। विकेट नंबर 5 वापसी करते, क्या यह टर्निंग पॉइंट हो सकता है मैच में? फिर एक बार ट्विस्ट डीज है। न्यू बैटर समी मैदान पर, और देखिए धनंजय के जर्सी का नंबर देखिए 7। समी को यहां पर अब रनों की जो कमी है ना, उसे पूरी करनी पड़ेगी। हर दर्द का इलाज हमारे पास मौजूद है आनंद जी, और लफ्ज का भी। चलिए सर्वेश निकले गेंदबाजी के लिए। ओ, इस बार खेला हवा में, फिर एक बार, शायद ये कैच लेना चाहिए था, शायद आपने हाथ आए मौके को छोड़ दिया है। इसको कहा जाता है पहले से ही मंदी, और उसमें आटा गिला हो जाएगा। टोटल अब पहुंचा है 74 रन, 74, 12 रनों की आवश्यकता। धनंजय देखिए सोच रहे हैं बड़े शॉट के साथ मैच को समाप्त किए जाए। 7 नंबर की जर्सी उनके शरीर के ऊपर है, बेस्ट फिनिशर ऑफ द वर्ल्ड इन क्रिकेट, महेंद्र सिंह धोनी। ओ, ये देखिए उठा दिया, क्या कहा, क्या कहा, क्या सुना, गेंद कहा। देखिए मैंने कहा ये ओवर टर्निंग पॉइंट रहेगा, छक्का निकला। टोटल अब पहुंचा 80 पर, सिर्फ 6 रन की है आवश्यकता।
सर्वेश, ये आपने क्या कर दिया? अगर मालवणी में कॉमेंट्री होती ना तो मैं कहता करूक गेलो संकासूर आणि झालो तयार नरकासूर. ये 2 ओवर ना भाई आपके हाथों से मैच लेकर उड़ने वाले. 6 रन की आवश्यकता. क्या शॉट था आनंद. ये शॉट बार बार देखने को मन कर रहा है. देखिए हवा से बातें करते हो ऐसा नहीं. और 70-70 के माध्यम से ये शॉट आपको बार बार देखने को मिलेगा भाई. ऐसे मुकाबला बार बार देखने को नहीं मिलता. 6 रन की है आवश्यकता. क्या शॉट है, शॉट है. एक खिलाड़ी सेना बराबर. इसे कहते हैं मारा कम और घसीटा ज्यादा. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी मैदान पर. अब शायद सोच रहे होंगे वो सर्वेश का पहला ओवर क्यों दिया गया. इसलिए मैं बार बार कहता हूं बद्री, बाद में पछतावा करने से फायदा क्या जब चिड़िया चुग जाए खेत. विराज आए हैं गेंदबाजी के लिए और जो कि पेनल्टी यहां पर लग चुके हैं. एक खिलाड़ी जो कि और अंदर आएगा. 6 रन की आवश्यकता. ओ चलिए चलिए चलिए, टाटा गुड बाय. इस प्रतियोगिता को टाटा कर दिए आपने. देखिए ये क्या कर दिया. ये 2 ओवर सर्वेश क्या है ना, ये पूरी तरह से पलट दिया है इस मुकाबले को. इसलिए कहा जाता है क्रिकेट में बाकी नहीं. चलिए फिर एक बार डीजे के ओर.
ओ फिर इस बार नीचे रही, पहली दो गेंदे थोड़ी सी ऊपर थी, ये थोड़ी सी सबमरीन डिलीवरी जैसी थी, टिप्पा गिरने के बाद और नीचे की तरफ निकली। विकेट कीपिंग देखिए सुदेश का मैदान पर किस तरह से डाली, और जो इंतजार में थे प्रवीण, उनके सामने गेंद और एक शानदार स्ट्रोक देखने को मिला। और अब पावर प्ले लिया गया है बॉलिंग साइड से, और गेंदबाजी के लिए सागर मोरजकर गेंदबाजी के मोर्चे पर अच्छी गेंदबाजी करते हैं। पेडनेम तालुके से सभी खिलाड़ी इस टीम में टीम में मौजूद है। देखना है ऑरेंज जर्सी भारी पड़ती है या सामने ब्लू जर्सी इस मैदान पर। एक छक्का, पहला छक्का इस इनिंग का प्रवीण उर्फ पापा के बल्ले से निकला। 14 रन, 2 ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ। अभिषेक स्ट्राइक पर सामना करेंगे सागर की गेंदबाजी का। पावर प्ले का ओवर है, यानी कि 2 खिलाड़ी मात्र आप 30 यार्ड घेरे के बाहर रख सकते हैं, यानी कि मौका है बल्लेबाज के लिए, लेकिन गेंदबाजी देखते हैं किस तरह से होते हैं। सागर मोरजकर अपने कोटे का पहला, टीम के ओर से तीसरा ओवर लेकर। सागर ओ ब्लॉकल में पूरी तरह से यॉर्कलिंग की गेंद, ऑफ्टम यॉर्कर की ये गेंद चॉप कर दिया, वहीं पर सिंगल निकलेगा। पहला रन इस पहली गेंद पर। जानते हैं यहाँ पर कोई बड़ा शॉट खेलने के लिए निकले नहीं। सागर को भी पता था अगर अक्रॉस द लाइन चले जाएंगे तो यॉर्कर लेन की गेंद थोड़ी सी दिक्कत में डाल सकते बल्लेबाज को, और वही गेंद करी। ये इनका ब्रह्मास्त्र है। और अब सामने है प्रवीण नायक, बहुत बार आमना सामना इनका हो चुका है, कभी जीत बल्लेबाज की हुई है, कभी गेंदबाज की। अब देखना है इस मुकाबले में प्रवीण के बल्ले से एक छक्का भी निकला है। 15 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। ओ ये अच्छी गेंद, टिप्पा गिरने के बाद शायद और बाहर की तरफ निकली। अंपायर के पास वाइड की जरूर मांग करी, लेकिन अंपायर ने कहा आपको खेलने की लाइन में थी गेंद, थोड़ी से आप चुके, गेंद बाहर की तरफ निकली, डॉट निकली, ये गेंद बिंदी गेंद निकली। फुल टॉस गेंद, इस बार हवा में खेल बैठे खिलाड़ी वहां पर तैनात, सीधा उसके हाथ में फील्डर को ढूंढ लिया, एक बेहतरीन कैच को अंजाम दे दिया। आखिरकार ललचा है, थोड़ी सी फ्लाइटेड डिलीवरी, हवा दी थी इस गेंद को, और खड़े खड़े खेलना चाहा और कोई गलती नहीं करी वहां पर फील्डर ने। विकेट का पतन, दूसरा विकेट वापस खेमे में लौटता हुआ प्रवीण आउट होकर पहलून में। 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कैच किसने पकड़ा देखिए, जिन्हें कृष्णा सातपुते के नाम से जाना जाता है, वो सर्वेश ने वो कैच पकड़ा, विकेट निकला। न्यू बैटर प्रथमेश मात्रे। सागर ने एक सफलता अर्जित करी है अपने टीम के लिए। ये जोड़ी अब कहां तक लेकर जाएगी अपनी टीम को। शायद मैं कहता हूं गणपति वॉरियर्स के पास बल्लेबाजी भारी भरकम है, चंदन नाइक है, आनंद पाटिल, लेकिन उससे पहले इनको एक साझेदारी बनानी है अपनी टीम के लिए। 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज अब मैदान में सामना करेंगे सागर की अगली गेंद का प्रथमेश मात्रे। ओ अच्छी गेंद, शायद अपील जोरदार करिए, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं। शायद बल्ले को लगने के बाद उसके बाद पांव को लगे है, और 1 रन और खाते में, खाता खोला खुद का। टोटल पहुंचा 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर है प्रगति पर। टॉस जीतने के बाद पहली फील्डिंग कर रही है सत्या देवी महालक्ष्मी टीम की टीम इस मैदान पर। सागर फिर एक बार, ओ यॉर्कर लेंथ की गेंद, अच्छी ओवर अब तक। शायद रनआउट का खतरा था, लेकिन आपने हाथ को रोका, और एक चिकी सिंगल। शायद सिंगल से काफी खुश होंगे यहाँ पर अगर तुम टीम की बात की जाए। बड़े शॉट अगर लग जाएगी ना तो स्कोर भी आगे बढ़ता चला जाएगा और बड़े टोटल होने की संभावना है। लेकिन वो 5वें गियर की बल्लेबाजी, अभी बहुत सारे ओवर बचे हैं, लेकिन उससे पहले एक साझेदारी की बेहद आवश्यकता। फुल टॉस गेंद, इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद नहीं रुकेगी, सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। एक शानदार स्ट्रोक, प्रेक्षणीय स्ट्रोक देखने को मिला 4 रन का।
थैंक यू। 3 ओवरों का खेल अब समाप्त हो चुका है 21 रन स्कोर बोर्ड पर, और अंपायर का इशारा फिर एक बार, ये पावर प्ले बैटिंग साइड से, और निश्चित रूप से बॉलिंग पावर प्ले के ओवर में थोड़े से ज्यादा रन जरूर नहीं निकले हैं, लेकिन ये बैटिंग पावर प्ले का ओवर, और कौन डालेंगे ये देखने वाली बात होगी। मंदार झाटिये ये गेंदबाजी के मोर्चे पर, ये ओवर महत्वपूर्ण रहेगा निश्चित रूप से। ये चौथा ओवर इस पारी का। लेफ्ट हैंडर दोनों बल्लेबाज मैदान पर, प्रथमेश मात्रे और अभिषेक। फील्डिंग की सजावट, दो ही खिलाड़ी आप 30 यार्ड घेरे के बाहर रख सकते हैं। एक खिलाड़ी देखिए लगभग लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की दिशा में, एक खिलाड़ी लगभग स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग और की दिशा में यहाँ पर नजर आता हुआ। पहली गेंद हवा में खेल बैठे, खड़ी हो गई है गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी और एक विकेट, पहली गेंद के ऊपर चलता कर दिया, विकेट निकला अभिषेक का, तीसरा विकेट। थैंक यू। देखिए मैदान में कौन आ चुका है, अगर यही मुंबई के मैदान के ऊपर उतर जाता ना तो दर्शक कहते आला रे आला मने आला। न्यू बैटर मैदान पर मनोज नार्वेकर, गोवा राज्य का ऑलराउंडर खिलाड़ी, ये यहाँ पर खेलता है, पूरी इंडिया में खेलता है, इंडिया के बाहर भी खेलने वाला है खिलाड़ी। ज्यादा अर्धशत की पारियां, अर्धशत इनके नाम के ऊपर दर्ज है, ज्यादातर मैन ऑफ द सीरीज इनके नाम के ऊपर दर्ज है, और बहुत सालों से क्रिकेट के लिए सेवा दे रहा है, योगदान दे रहा है। गोवा राज्य का एक स्टार खिलाड़ी अब मात्र मैदान पर। थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियां है गणपति वॉरियर्स के सामने, लेकिन देखना है मैदान पर। प्रसाद ने और एक कैच लपका है मैदान पर, मंदार को मिलती हुई सफलता। मनोज नार्वेकर जो कि न्यू बैटर स्ट्राइक पर। ये अच्छी गेंद हल्के हाथों से स्टीयर कर दिया गैप में से, लगभग थर्ड मैन की दिशा में। खिलाड़ी वहां पर जब तक फील्ड करते, एक रन और खाते में जुड़ता हुआ, खत का खाता खोला, टोटल जो कि पहुंचा 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये जोड़ी देखना है कहां तक कमाल देती है, कमाल दिखाना पड़ेगा मैदान पर निश्चित रूप से गणपति वॉरियर्स के दृष्टिकोण से, क्योंकि रन नहीं बने, एकमात्र छक्का निकला है प्रवीण के बल्ले से। पटकी हुई गेंद, लेकिन जहां खेलना चाहते थे वहां पर गेंद निकली नहीं। क्या गेंदबाजी है देखिए, सामने प्रोफेशनल बल्लेबाज और खिलाड़ी देखिए पेडनेम तालुके से ये कि बिलोंग करने वाला खिलाड़ी क्या गेंदबाजी कर रहा है मैदान पर। निश्चित रूप से हुनर है, जज्बा है, होशियारी है, चतुराई है गेंदबाजों के पास। और यार कर लेंगे की गेंद, मिनी हेलीकॉप्टर स्ट्रोक देखिए, फॉलो थ्रू में बेहतरीन फील्डिंग का दायित्व तो निभाया, अच्छी गेंदबाजी। अगर ऐसे आप मैदान पर रन रोकने की कोशिश करो, ये सीधे विकेटों के ऊपर लगी थी, लेकिन प्रयास अच्छा था। और गेंदबाजी देखिए सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, अनुशासित भरी गेंदबाजी। निश्चित रूप से अगर आप करते हो तो बल्लेबाज भी खामोश रखते हुए। और इस बार उठाकर खेला है, इसके ऊपर लगे है 6 रन का छाप, दूसरा छक्का इस इनिंग का, प्रथमेश के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का। थैंक यू। अगला मुकाबला मांद्रेम बॉयज वर्सेस एम क्रिकेटर्स, दोनों टीमों के कप्तान खिलाड़ियों के साथ यहां पर संपर्क करें कृपया। मांद्रेम बॉयज और एम क्रिकेटर्स। बड़ा शॉट जिसकी आवश्यकता थी, बेहद आवश्यकता थी, इस बार खेल दिया निश्चित रूप से लॉन्ग ऑफ की दिशा में। खिलाड़ी वहां पर निश्चित रूप से आकर गेंद को फील्ड करता है, 1 रन और खाते में। साथ साथ ये ओवर समाप्त होता हुआ चौथा, 4 ओवरों का खेल समाप्त, टोटल 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 24 गेंदों का खेल बाकी है, 24 गेंदें समाप्त हो चुके हैं, 24 गेंदें अभी भी बाकी है, आधे ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है।
माफ कीजिए, थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए 7 ओवर का ये मुकाबला है, तो 3 ओवरों का खेल अभी भी बाकी है। गेंदबाजी में फिर एक बार सागर आपको नजर आते हुए सामना करेंगे। प्रथमेश मात्रे स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर मनोज नार्वेकर। और यहां से ये 18 गेंदें मैच के लिए निर्णायक साबित होगी। और ये 2 ओवर जो है ना, छठा और पांचवा और छठा, ये काफी मायने रखेगा इस मुकाबले के लिए। फील्डिंग की सजावट करी जा रही है। सागर मोरजकर अपने कोटे का दूसरा टीम के ओर से 5वां ओवर लेकर। फुल टॉस गेंद यहां पर खेल दिया है, गेंद तो निकलेगी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। और अंपायर ने रिव्यू लिया है, जो कि शायद ये गेंद कमर के ऊपर की है या नहीं, ये देख रहे हैं। या फेयर डिलीवरी है, आप भी देख सकते हो यूट्यूब पर ये रिप्ले। और इट इज फेयर डिलीवरी, यानी कि नो बॉल रही है, कमर के नीचे थी गेंद, फुल टॉस थी, चौका जरूर निकला है। और इस बार खेल दिया फिर एक बार जमीन के सहारे, गैप में गेंद जरूर है, वहां पर खिलाड़ी तैनात, लेकिन मिलेगा मात्र सिंगल। बहुत ही शानदार फील्डिंग, थोड़ा सा ओवर थ्रो हो सकता था। देखिए 3 खिलाड़ी आकर कवर बैकअप, लेकिन सागर ने फिर खुद का संभाला। यहाँ पर एक रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 34 रन पर, 34 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 5th ओवर इन प्रोग्रेस, 5वां ओवर प्रगति पर। मनोज नार्वेकर, इनके ऊपर काफी दारोमदार समावेश किया गया है इनका गणपति वॉरियर्स के खेमे में। यहाँ से रन बनने हैं उनके टीम्स के लिए, छक्के चौके लगने चाहिए तभी बात बनेगी। लेकिन दूसरी तरफ से कसावट भरी गेंदबाजी की आवश्यकता, जिस तरह से पहले 4 ओवर डाले हैं यहाँ पर तुयम टीम ने, कौन सा खिलाड़ी यहाँ पर चमकेगा। ओ बहुत ही बढ़िया, पूरी तरह से चारों खाने चित, कहीं आता पता नहीं था बल्लेबाज का। गेंद के लाइन में गेंद निकली गोली की रफ्तार से विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। क्या बेहतरीन गेंदबाजी। ये इस प्रतियोगिता को आप देख रहे हैं 70 के माध्यम से यूट्यूब पर। और इस बार खेल दिया है, खिलाड़ी वहां पर तैनात जरूर 2 है, ये गेंद को फील्ड करते मात्र सिंगल ही मिलेगा। जिस शॉट की आवश्यकता है, मनोज से अपेक्षा की जाती है ऐसे डेथ ओवर में बड़े शॉट की आखिर के ओवर में, लेकिन वो प्रयास जरूर किया था, लेकिन गेंद ऊपर उठी नहीं। फील्डिंग लाजवाब, काबिल तारीफ फील्डिंग। एक रन के साथ टोटल 35 रन पर। ओ आगे निकले थे खेलने के लिए, स्विंग एंड मिस, उतना आसान नहीं होता सागर को मारना, क्योंकि ये गेंदबाजी में विश्लेषण डालते हैं। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को थोड़े से कोना बनाते हुए गेंद बाहर की तरफ निकलती है इनकी गेंदबाजी। ओ ये यॉर्कर लिंक की गेंद, सीधा खेला, 1 रन जरूर मिलेगा। डीप में खिलाड़ी है, 1 रन के साथ टोटल 36 रन पर। अब लगभग 5 ओवरों का खेल भी समाप्त, 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। थोड़ा सा धीमा टोटल नजर आ रहा है, और यहां से अब देखने वाली बात तो जरूर है कि इन 12 गेंदों में कितने रन बना पाते, क्योंकि दोनों बल्लेबाज काफी समय से मैदान पर टिके हुए हैं। मनोज नार्वेकर साथ साथ प्रथमेश मात्रे, और जानते हैं प्रथमेश मात्रे की इनिंग हमने भी देखी है, और एक बार अगर सेट हो जाए ना तो बड़े शॉट, लेकिन गेंदबाजों की तारीफ करनी पड़ेगी। शानदार गेंदबाजी, शानदार फील्डिंग यहाँ पर महालक्ष्मी सत्या देवी टीम की ओर से इस मैदान पर देखने को मिली है। टॉस जीता पहला और फील्डिंग करने का फैसला। अब तक की अगर बात की जाए 5 ओवरों का लगभग खेल समाप्त हो चुका है, 7 ओवरों का ये मुकाबला है, और पूरी तरह से बांध कर रखा है बल्लेबाजों को, खुलकर खेलने का मौका नहीं। 2-3 बड़े शॉट निकले जरूर, लेकिन उसके बावजूद टोटल देखिए सिर्फ 36 रन 5 ओवरों का खेल समाप्त होने तक।
12 गेंद पर भारी पड़ता है। यह गेंदबाजी उसी तरह से जो कि सामने वाली बल्लेबाजी को बांध कर रखने वाली हो पाती है। थोड़े से नाराज होंगे प्रथमेश पवार, थोड़े से नाराज होंगे यहाँ पर प्रवीण उर्फ पापा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा रन बने नहीं उनके बल्ले से। ऐसा लग रहा था प्रवीण एक छक्का लगा चुका है सेट होने के बाद, लेकिन वो कैच दे बैठे और उसके बाद पारी को संभालने की जिम्मेदारी थी इनके ऊपर। गेंदबाजी में अब प्रसाद नागवेकर और एक युवा गेंदबाज पेडनेम तालुके से बिलोंग करता, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी पीपीएल में हमने देखी थी इनकी। आज देखना है ये प्रोफेशनल खिलाड़ी के सामने किस तरह से गेंदबाजी करता है। इस बार खेल दिया है लेकिन डीप में खिलाड़ी तैनात, सिंगल तो जरूर निकलेगा, सिंगल से काफी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जानती है टीम सामने वाली, अगर यहाँ से कोई फर्क पड़ता है तो छक्के और चौकों के साथ। प्रसाद है गेंदबाज, प्रसाद नागवेकर, पहली गेंद यहाँ पर पहली गेंद के ऊपर सिंगल निकला है। मनोज नार्वेकर अब स्ट्राइक पर सामना करके प्रसाद की एक गोवन खिलाड़ी आमने सामने, एक अनुभव से तजुर्बेदार खिलाड़ी, दूसरी तरफ से युवा गेंदबाज। बड़े प्रतियोगिता में बहुत बार खेल चुके हैं लेकिन आमना सामना कम बार हुआ है मनोज के साथ। देखना है अब जीत गेंदबाज की या बल्लेबाज की। ओ ये लोअर फुल टॉस गेंद थी, यहाँ पर शायद रनआउट का खतरा हो सकता है। अंपायर की उंगली खड़ी, अंपायर की सहमति, मनोज नार्वेकर आउट। क्या देखिए वन एक्शन में पिकअप थ्रो सागर मोरज करते वहां पर रनआउट कर दिया, मनोज नार्वेकर को चलता कर दिया। एक बड़ा शेर यहाँ पर फिर एक बार हो चुका है ढेर। न्यू बैटर मैदान पर आनंद पाटिल, ये इनफॉर्म बल्लेबाज, बहुत सारे मुकाबलों में इनका बल्ला हमने चलता देखा, इस साल तो गजब के फॉर्म में है। और इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक उड़ा दिया इसे, गेंद निकलते हुए सीमा रेखा पर 6 रन के लिए। इस छक्के ने पहुंचा है 43 पर, अगर 70 तक पहुंच जाती है तो मैं कहूंगा कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि बल्लेबाजी तो टीम के पास भी अच्छी है लेकिन गेंदबाजी गणपति वॉरियर्स के पास भी अच्छी है। अगर यहाँ पर भी हासिल करते तो मैं कहूंगा गेंदबाज की जीत हो गई है। स्लो ओवर वन डिलीवर पर 44 और आनंद पाटिल मैदान पर आ चुके हैं। क्षत्रिय मराठा ट्रॉफी में क्या शानदार बल्लेबाजी करी थी आनंद पाटिल ने, लगातार 2-3 मैं कहूंगा यहां मात्र अपने टीम के लिए जरूरत है उनकी बल्लेबाजी की। ये अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक देखिए, आते आते गेंद लगभग यहाँ पर ओ क्या फील्डिंग है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण 2 रन बचाए। लगभग गेंद सीमा पर जाने वाली थी, गांगुली थे वहां पर फील्डर, और साथ साथ ये छठा ओवर भी समाप्त, 6 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 46 रन, 46 लॉस ऑफ 4 विकेट्स, लास्ट ओवर टू गो। काफी खुश होंगे तुयम के गेंदबाज, तुयम के कप्तान, टॉस खिलाड़ी की तारीफ करता, क्योंकि चंदन को कहना नहीं पड़ता कि मैं चंदन हूं, महकने से पता चलता है, हवा में खुशबू महकती है तब पता चलता है कि चंदन आया है। ये 5 गेंदे, 3 बड़े शॉट की आवश्यकता गणपति वॉरियर्स के दृष्टिकोण से इस मुकाबले में। ये देखिए आते आते फुल टॉस गेंद को कवर पॉइंट सीमा क्षेत्र से बाहर भेज दिया 4 रन के लिए, और इस चौवे के साथ ही 50 रन भी पूरे होते हुए गणपति वॉरियर्स टीम के। ये चंदन की महक है,
मैंने पहले कहा था बताना नहीं पड़ेगा, चंदन आया है, वो महक है, वो चौके की महक है। 50 का आंकड़ा पार कर लिया है गणपति वॉरियर्स ने। 4 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। ओ इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं, सिंगल जरूर निकलेगा। सिंगल के साथ टोटल 51, 51 रन। 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष है और आनंद पाटिल स्ट्राइक पर आ चुके हैं। 3 गेंदों में कितने रन बना पाएंगे? क्या 60 के आसपास का आंकड़ा पर तय हो जाएगा? ये 3 गेंदें कितने रन दे पाएगी? सामने वाली बल्लेबाजी को खामोश रख पाएगी क्या ये गेंदबाज? एक चौका इस ओवर में निकल चुका है, अब देखना है क्या होता है इस मैदान पर। आनंद पाटिल, फुल टॉस गेट इस बार निश्चित रूप से, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। सिर्फ सिंगल वहां पर निकलेगा। सिंगल के साथ टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 52, 52 रन मात्र टोटल स्कोरबोर्ड पर। सुबह से देखा जाए तो ये कम टोटल का मुकाबला रहा है। सुबह से सभी मुकाबले 70 के ऊपर के हमने देखे हैं। ये अच्छी गेंदबाजी है तो टीम की। ओ इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद पकड़ना चाह रहे थे चरण, लगभग सीमा रेखा के ऊपर। गांगुली आपको नजर आएंगे, लेकिन थ्रो देखिए सटीक वहां पर। तो 1 रन और खाते में, 53 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। अगर देखा जाए इस इनिंग की बात की जाए, मात्र 3 छक्के लगे हैं और 3 चौके लगे हैं। इस मुकाबले का लेखा जो का सबसे कम छक्के और सबसे कम चौके आज सुबह से देखी जाए तो। ओ ये अच्छी गेंद यहां पर, और विकेट है ये निकला कैच आउट के रूप में। आनंद पाटिल वापस। इनिंग के आखिरी गेंद डॉट के साथ समाप्त हो गई, विकेट के साथ समाप्त हो गई। टोटल 53 रन स्कोरबोर्ड पर। जीतने के लिए 48 गेंदों में 54 रनों की है आवश्यकता।
बॅट्समॅन मातसो बेगीन यो. रिक्वेस्टिंग बॅट्समॅन टायम काडपाचो ना आमकां आनी 2 मॅची आसा. प्लीज टेक अ नोट. इफ यू डोंट कम देन अंपायर्स विल टेक द रायट कॉल. हांगा ऑलरेडी एक टिमीक पेनल्टी पडिल्ली आसा 2 रनाची. फिल्डिंगेक पेनल्टी पडिल्ली आसा. सो प्लीज डोंट टेक एनीथिंग लायटली. The next teams are requested to please come out for the toss, captains. आणि फुडली ज्यो 2 मॅची जातल्यो ती एकच एंडांतल्यान खेळतले. म्हणल्यार ईस्ट सायड फेसिंग आसतली बॅटिंग. ज्या सायडीच्यान सूर्य देवता आनी त्या बॅट्समॅनाक एफेक्ट जाता थंय आमी ती एंड खेळोवपाची ना. सो एकच एंडाच्यान बॅटिंग जातली कारण बॅट्समॅनाक डायरेक्ट सूर्य दोळ्यार पडटा आनी खेळपाक डिफिकल्ट जाता. 12th मॅन ऑफ बोथ द टीम्स. तुवेचे 12th मॅन हांगा अजून आसा ऑलरेडी. येस. Naresh on strike. And Saish at the non-striker's end. That's a common shot. Just scooping the ball, trying to scoop over the fine leg region. Anand Patil has been kept in that region. One of the finest fielders around in Goan cricket circles as far as fielding is concerned. So it's not a big total that has been posted on the board. Just 53-54 target in 7 overs. So they have to start well. This time nicely bowled here. Chance of a run out. No, they've kept the fielders on the edge. So just steps around with soft hands and gets a soft single. So Sati Mahalakshmi of 2M should not think that only 53 runs have been scored. So it's a very low total. We can chase this down easily. If the fielders field well and the bowlers bowl according to the plan, then 6 hitting is very difficult. So you can see that quick leg spin here from the bowler Sanket. So far just 1 run taken. If Prathamesh Matre and Prathamesh Pawar can struggle to get the 6s, then I feel it will be difficult for others, especially during the evening time when the sun goes down and the humidity is a little less in the air for the ball to travel across for the boundaries. Also, this might be, this is just a shot of the fielder. You can see the timing part is missing, just like in the first innings. But good innings from Prathamesh Matre of 25 runs. That once again, nicely played. Fielders need to be on the toes. They cannot give us so easy singles within the circles. Both the batsmen are doing fairly well. Naresh and Saish at the moment, 3 runs taken of the first 4 balls. So now once again should be another single. He's not allowing to free the arms in this first over. So the bowling power play has been chosen in the very first over by the captain. That's the reason only 2 fielders are outside. This might be in the air but away from the fielder and might be a big one. We have to wait for the signal from the umpire. So well he bowled this over. 6 runs. And finally he ends well. He has bowled so well and he goes for the short. Switch it, and switch it has given him good returns. 11 after completion.
So at the end of first is those balls, and the fielders have to be really alert and quick and in the right positions. Being in the right positions where the most of the balls are going to go is going to be important. You have to cut the angles. You have to be in the right angles where normally tennis ball cricketers play their shots. First over was a very good one, 11 runs. So they require somewhere around 8 runs per over. The bowlers, how good they were for Sati Mahalakshmi of Tuve. They were so good that in spite of having great names in the top of the Ganpati Warriors chart, they just managed to get hardly 2 sixes and 3 boundaries in total. Once again, nicely played in the covers. The good thing, smart thing, they are putting the loose balls away for runs. When you got an opportunity for a weak ball, a very short or a full toss, you should count it for 6 runs, just like the previous wicket. Otherwise, they are not putting too many dot balls under their names. The batters, they are just milking away with the singles at the moment, not pushing it too hard. This is pace. This is really good pace. Left arm medium pacer, bowling and taking the ball away from the right hander. And as far as Ganpati Warriors is concerned, they need to put a few dot balls. If they are not getting wickets, they need to put more pressure through their dot balls, which is going to pile pressure at the strikers and the non-strikers end. This is in the air. Is it going for 6 runs? This is gone out of the ground. Short ball, and it has been pulled away magnificently and in super style. So immediately the score moves on to 19. This was a bad ball. Short, pull shot was so easy. He was onto the back foot. This is better. This is exactly what the keeper was telling him. Bowl in that area where the batsman goes after you in the covers region. Not easy with this pace when the ball is going away from the right hander to go in the extra cover region. It's a very difficult shot. That's exactly why he is bowling fuller now. But I think even if they get 1 6 in this over, a job will be done by the batters. So 2 6s, 1 each in the first 2 overs. Finishing the second over with a single is 20 without loss in 2. In comes Mahesh Sakarkar, the prime bowler in Goa. They hardly you see a bowler being given the role of the icon or the captain. But Mahesh Sakarkar, most of the tournaments where the ownership is there, he's the icon player, even in South Goa Premier League. And even in many of the big tournaments, this is a little loose fielding here from behind the wicket. They should have stopped everything coming their way and giving a single here and one in the form of wide as well to add 80 to total.
I think you can see the bowler is bowling well, but there is hardly any pressure on the batters because of the low scores posted on the board. So, if at all any situation which was a total of 70 runs, they would have gone after this ball. But since the pressure is not there, they are just stepping around for a singles and taking the scoreboard a little bit ahead every ball. It's nicely played in the covers. Chandan fielding there half stop, but cannot stop the second run. And the fielding also looks a little weak at the moment. Little blips here and there, little extras. They don't have a high score to defend. They have a very low score and they should be much fitter in the field than they are looking at the moment. Sam, this is a better ball. He tried that leg spinner. Batsman also tried that shot in the fine leg region. Shuffling across on the offside. Dot ball. Once again, this might be a catch. This is going to be a difficult catch away from Chandan, but they might search for the second and one for the throw in their deep. Not bad bowling here. He's trying to get wickets, but are looking predictable at the moment with continuous leg spinners. Mahesh Sakalkar. So the batsmen also are trying to get a hang of him. They kept the fielders on the inner ring in the covers and extra cover region. So now 29 on the board with 3 overs gone, 54 being the target. "25 runs required in 24 balls. So asking run rate is somewhere around 6. Now they have to do something out of the box thinking here. The bowling unit of Ganpati Warriors. They have not been up to the mark as far as batting is concerned. They have not been up to the mark as far as batting is concerned. That's nicely played off the back foot in the covers. And they are sensible here. Both these openers are very, very sensible. They know that they are just getting the singles at ease, whether it's offside, whether it's the leg side. They don't have to do the attacking cricket at the moment. Required run rate is just a matter of 6, and with 1 boundary or 6, it will come down to less than 6. This is in the air. Who is going to take it catch? No, it falls in no man's land. And maybe they are picking the second. How many doubles we have seen in this contest. The ball is also going in favor of Sati Mahalakshmi of Due. Falling where the fielders are not there. They're trying hard, the bowlers, but still that first wicket is eluding them. It's become precious now. It's become time bound for them to get a wicket here. This time nicely bowled. No chance. Maybe a chance of a run out. And you can see that another glitch in the field. The batter was halfway mark. If Malinga had collected there, this could have been a scare for the batter. But he makes it well in. So Prasanna. Now there is more pressure being put in the field. This is better. This is really better here. Good cricket here from behind the wicket by Prathamesh Pawar. He understands that we don't have too much to defend. We have to put the pressure. We have to take the initiative here. It's not the batting side. This time you can see that bowling down the leg side should get an easy boundary. The fielders are kept on the offside and the bowler has straight down the leg. This was easy pickings in easy boundary, and whatever pressure was put on by Prathamesh Pawar from behind the wicket has all gone waste here. It just has got the fielder from the short fine towards the short mid-wicket region so that the bowler can bowl fuller length, and that singles will be avoided here. Lackluster here. So loose from these bowlers. 36, the score moves on to 18 more runs required. 18 of 19. And
that will finish over number 4 is still remains the same. 36 without loss of any wickets. 18 runs required of 18 balls. So batting power play has been chosen here. This is a make or break over here. If this over gets 2 wickets here, they might be in for the race and in the last over. But if this over goes for more than 10 runs per over, I think the match will be down and dusted in this over itself. So Sanket has been brought here at bowl. The first over bowled decently, but the only loose ball. You cannot say that was loose. A switch it tried, it went right for the batter. That's a loose ball. That's a really loose ball. Shot down the leg side, and I think that is rubbing salt to the wounds of the players. You can see now the shoulders will be dropping down after that 6. This time nicely played. Very, very sensible betting I've seen in this inning so far from both the batters, Naresh and Sahish. They have been very calculative. They just take the singles, not too many dot balls put up by both these batters. And whenever opportunity was there to take sixes and the boundaries, they have got it and gave it a full go. It's really smart. No pressure whatsoever, both these batters. This time all saying 4 runs. I think this is going to be all over. Maybe this over, maybe next over. Requesting next teams, please come for the toss, captains. Captains, please come for the toss. Toss, captains. Captains, please come for the toss. AM cricketers. माझे कॅप्टन बेगीन टॉसा घेऊ. कॅप्टन बेगीन बाय. आयलो कॅप्टन आयलो आसा मांद्रेम बॉयज आणि AM क्रिकेटर्स.
player of the match. So now the player of the match in the previous game goes to Saish, the batsman who scored 34 runs. Although we wanted to choose the bowler, but all the bowlers were at the same levels. 2 overs, 14, 1 wicket, 2 overs, 15, 1 wicket. So it was difficult to choose. So we have chosen the batter. Saish Matsuyo आणि तुझं player of the match prize घेऊन was of Sati Mahalakshmi तुये. दोन्ही टीमीच्या 12th मॅनाक रिक्वेस्ट करता मातसो बेगीन येवचो. दोन्ही टीमीचे 12th मॅन मातशे बेगीन यात. मांद्रेम बॉयज आणि एएम क्रिकेटर्स. एएम क्रिकेटर्स आणि मांद्रेम बॉयज 12th मॅन. मांद्रेम बॉयजाचो 12th मॅन हांगा पाविल्लो आसा. एएम क्रिकेटर्स 12th मॅन मातसो बेगीन यो.
बॅटर्स मातशे बेगीन येयात. बॅटर्स AM क्रिकेटर्स बॅट्समॅन मातशे बेगीन येयात, बेगीन देवात ग्राउंडार. 7 ओव्हरीची मॅच जातली. प्लीज टेक अ नोट. मातशे बेगीन येयात. ऑलरेडी अंपायरांनी ह्या टुर्नामेंटाक जर रुल्स अँड रेग्युलेशन्स अबायड करूं ना जाल्यार फायन दिल्ली आसा. सो अंपायर्स मुखार रावल्या, फिल्डर्स ऑलरेडी सेट जाल्ले आसा. बेगीन येवचें. So now we have already got our first quarter finalists of the second session. Now it's up to these teams. Mandrem boys, a very strong side, a wonderful young unit, performing very well across the tournaments held in North Goa, especially in the Mandrem Sarpanch Chashak and other Mandrem Champions Trophy. They reached into the semi-finals, and also SK Jogging cricketers. They performed very well up to the semi-finals. They at one point. It's just a matter of handling the pressure in the crucial situations is going to be the key here for Mandrem boys. Yes, we are all set. Sujit Rane and Abhijit Talekar are going to officiate this match. Sanam Salgaonkar and Amit can consider that he is not the old one, but finally, Tiger is always a Tiger. Such a great, skillful player. Sometimes in cricket, feet movement is very important. You need to move the feet rightly, and that's where I guess he struggles a bit nowadays. This is in the air, falling in no man's land, but that's a good ball here. Bowling from Praveen. I've seen Praveen bowls regularly as an opening bowler for Mandrem boys and gets so much of wickets at the start and gives them a good start. He always gives them a good start. They start with Praveen for most of the matches. Once again, he starts them well, not conceding a single 4 runs so far, 4 singles of the four balls. This is slower ball, left one hand. This is a one-handed six here from Sanam Salgaonkar. Look at the power of this man. I told you wounded tiger is more dangerous than a normal one, and Sanam is a Sanam. You cannot get the talent out of this man. 10 without loss after completion of 1. Many a times in IPL, KL Rahul, Rohit Sharma, David Warner, we have seen them hitting sixes of one hand. It's not easy. Require a lot of power to generate from the forearms and your hands and your shoulders to get it over for 6. We've seen people struggling here, struggling big time to get the sixes. Not Sanam. Amit on strike. Full toss ball. Just played down the ground. And good fielding in the deep. Behind the bowler. And it's just going to be a single. It's good to see that small things are taken into consideration here by the organizers. Mohit Chopdekar. They knew they had played cricket here. And they had organized a worldwide tournament for Sodiem Panchayat, where 7 teams were participating. Gaurish.
This time, very good ball, very good length here. Bowling wide outside. Even if it's a low full toss, it's still a good length and a good ball. 7 teams were participating in that inter-world tournament organized by Ujwala Tukaram Memorial. This is once again nicely played. Should be, oh, misfielded here. Now they will get the single. The ball kept little low. And that inter-world tournament finals will be played just before the finals of this Grand All India tournament. We are witnessing some big names. These are big names, real big names in tennis cricket, although they have not flourished well. Prathamesh Matre, Prathamesh Pawar are considered to be big names in cricket. And also many of the players around who have played for different teams. Ravi Ahire is played in 10PL. So many cricketers coming and playing here. It's a big treat. It's a bigger achievement by Mohit Chopdekar and also the organizers. And once again, it's just the singles in this over so far. And Sodiem people, I think, should be very happy to get these such great players here on their ground, which looks very green, and wicket also looks a belter. There is something in for everyone. Both a short ball, that was a slower leg cutter here, short leg cutter, and bouncing little bit less. So very good over here from Gaurish. Just concedes 4 runs, 14 without loss after 2. So bowling power play has been chosen. Yeah, they had to choose this as between 1 to 3. You have to choose the bowling power play. Between 4 to 7, you have to opt the batting power play by the batters or the batting captain. This is a great shot here. This is a very nice shot over the wide long off region field of 4 runs. Once again going the aerial with Sanam. Sohail the bowler. Score moves on to 18. Still both the openers are intact. Lovely ball. Cracking ball. Absolutely plumb. Absolutely plumb. No hesitation here from the umpire. He was trying to go for his favorite shot, the switch hit. This time the bowler was one up than the batter, and he strikes. Big man departs. That was really required. That wicket, the first wicket going down. The opening partnership has been broken at the score of 18, and in comes Anant Mandrekar. This is a good shot here. What a pickup shot. This is Anant Mandrekar for you. This is just one instance where the talent shows of Anant Mandrekar. Once again, nicely cut away. Might be a chance of a run out at the non-strikers end. Quick throw. That was close. That was really close, but good fielding. Overall, a good cricket. Short ball just outside. Plays it nicely over the covers region. The fielder comes in quickly. Throws it at the non-strikers end. And there was a
bowler that was positioned to remove that run out, and the batsman makes it well in. That's a big heave. That's a big heave. Look at the ball traveling there. This is a humongous strike. Maximum once again. Well, he literally whipped it. He just whipped it with his strong power of the forearms for 6 runs. Not easy. It looks easy from outside. Score moves on to 31. This is a better ball, and the fielders are in position behind the keeper. Dot ball will restrict them, but 2 sixes have come in spite of a wicket taken off Samnan Salgaonkar. 3 gone out of the race. It's 31 for 1. Requesting the organizers to please handle the situation. Well, it's their normal time to play, and we are coming in between their time. And I can understand this might be a problem for just 3 days. But finally, they are going out. That's once again Adnan Mandrekar. He hits the gap and hits it well out of the park. Well, Adnan Mandrekar is an experienced cricketer. He is really a big name in cricket. And once again, showing his class against the youngsters. Going for that shot. This was not a bad shot. Bad option chosen here. He was going for that wide long off region over the head of the bowler. Right option with the swing, with the spin. Just the ball kept a little low. This is right in the slot. Finds the gap. Might find the boundary. Yes, it does. The fielder tries everything to pull it inside, but it was very well timed. 6, then a dot ball, then a boundary. Score moves on to 41. Dattaraj a little expensive in the first 3 balls. This might not be timed well, but it is timed and placed well. It was placed well. He exactly knew where the fielder. So he's going the aerial way and he's finding the very good results for his team. So now maybe that ball need a searching. So search party is on from the organizers. But the ball is thrown here by Jai Bhosle. So let's see what ball they choose. Well, with the way Anant Mandrekar is batting, it doesn't matter for him. You can get any balls and he will still time it and place it for 4 runs or the boundaries or the 6s. Right now, it's very well poised here for AM cricketers. 45 at the moment. 14 runs have come of the first 4 balls.
and he has peppered every part of the ground, especially in front of the wicket. That mid-wicket region, that long-off region, the long-on region. Once again, he will be back on strike. This time just a single taken. Once again, this is good bowling, a good comeback, but I think still, in spite of getting a single of the last ball, Anant Mandrekar has taken a toll of the Tharaj in this over. 15 runs taken in that over. It's 46 for 1 in 4. Batting power play has been chosen. 3 overs are still left and it's still looking a good total. They've got the batters. Amit has scored 1-6. But if at all somebody has changed the match in favor of AM cricketers at the moment with 3 overs left is Anant Mandrekar. So the Mandrekar is playing against Mandrekars well here. It's Anant who is playing an innings that is certainly taking the match away from Mandrim boys. This time just did not time the ball. He goes to run for the second, but he is not that quicker now. Maybe another 3-4 years back he could have gone for the second. But still with the talent that he has, he can still do a good job from the non-striker's end. When he gets the strike, when he gets an opportunity, he can put the loose ball away. That was a full toss ball. Nihal, the bowler, finds the gap. There is a wide open space in the mid-wicket region. And it's 4 runs. It's Glenn the bowler. This is a Supla shot and gets the 4 runs on one knees and plays that shot well. Surya Kumar Yadav plays it, but now Amit also plays it for AM cricketers and gets the 50 as well. In fact, they got the 50 of the previous ball, and this goes into the double figures of 5-5, 55. Another expensive over slightly. First 3 balls costing 9 runs, 2 boundaries. Pressure on Glenn. This is in the air. This is a good ball. This might be a catch. And it's been dropped here. Dropped here. They are giving chances at this stage. Well, they are taking the match away from you. They are giving one chance. That's a rare chance. And this rare scenario, like a diamond coming to them. And they say, we don't want diamond. We are gold people. Just 2 runs taken. So the 2 runs taking the score a little ahead. Maybe the sun falling in the eyes. But there is no chance for excuse here. This was also not timed well. Well, everything is going in favor of AM cricketers at the moment. They are feeling so lucky. The keeper was thinking maybe it's my catch. I need to go forward. It was once again in no man's land. 57 at the moment. 11 runs coming off this over and still 1 ball left of the 5th over. A nice total. They are certainly going to ahead to around 70-75 in 7. Good leg spin here. Whipped on the leg side. I don't understand. Just 2 fielders around.
Maybe they could have kept the mid-wicket region. He just plays a half helicopter, half flick shot for a wonderful boundary. So good over nevertheless. That concludes over number 5. Is 61 for 1. In comes Gaurish. Second over for him. Sixth over for the side. They stand slightly wide. Mandrem boys are certainly known for their bowling. Their bowling is their stronger part, but doesn't look to be today. They have been a little awry in their bowling department, and the batters have taken the advantage. Trying to heave it. That was right in the slot. Not a bad option chosen here by Anand Mandrekar. They have got wickets in hand, and with 11 balls left, I think they need to go after the bowling and try and get as much as possible. They cannot blame the batters at this stage with all 9 wickets left. The bowling of Gaurish is pretty good. He's bowling fuller, mixing it up well, just bowling the slower leg cutter here and there sometimes. And accurately enough, accuracy is the key for the bowlers. Oh, cracking ball. What a delivery this is. Magnificent. Chance of a run out at the non-striker's end. Direct hit. Umpire says he makes it in. Anand Mandrekar was ready to go for the next one. What a good backup there by the fielder at the long on region. So overall, a wonderful cricket. Look at this delivery. Full effort, right on the toes. The bat came on time, and a quick single and a good throw from the keeper as well. This is the cricket that we want to see in such a big tournament. Once again, he is hitting the Yorkers perfectly. Well, Bumrah might be missed in the services in IPL for Mumbai Indians, but Gaurish is saying, if you are missing Bumrah, come here and watch me. Well, it's very difficult to bowl Yorkers, especially 3-4 Yorkers in that same over, and he's consistently targeting that. This is in the air. This is a slower ball. Change of pace. Might be a catch. And catch taken close to the boundary rope. Very nicely judged in the deep. Anand Mandrekar, after a heroic innings here for his team. There's a very good knock from his side. Departs in the 6th over. GA11E 4499 ही जी गाडी आसा म्हाका दिसता ती इनोवा ही गाडी फाटल्या ज्या गाडी आसा तांकां ब्लॉक करता 4499 ही गाडी इनोवा कोणाची आसा ताणें मातशे सायडीन काडचे बाब तुका रिक्वेस्ट आसा कारण बाकीच्या लोकांक त्रास जाता तुवें गाडी काडली जाल्यार म्हाका दिसता परत येवन तूं गाडी त्या जाग्यार पार्क कर पूण सद्याक मातशे लोकांक जे त्रास जाता तांकां मातशी आपली बायक काडपाक मेळोनी गाडी काडपाक मेळोनी देव बरें करूं तुका. So here comes the last ball of the 6th over. Pritesh. What a shot. What a spanking shot this is. Just facing the first ball and he gets a maximum. This is a super strike. He just swatted it over the mid-wicket region for a huge 6. 70 after completion of 6 overs.
So it will be the last over here for Manrem boys. And good to see that their matches are held in progress in one side itself, because we have one more match, that is the quarterfinals left after this one. And one more innings of this match. So important to see that the match is continuously progressing in a quick time frame. Score is exactly 17, 6 overs. So they have gone past their first target of 70. Can they get 80 runs, which is not going to be an easy total. 80 is somewhere around 12 runs per over. बॉल मातशे वेट आसा म्हणून दवरल्या, चवले आसा, होतोच बॉल बरो आशिल्लो. So this will be the last over. I think that they are okay with this ball. So the previous ball comes back here to the organizing team, requesting them to please hand over the ball in the commentary box. माझे रिक्वेस्ट करता जे बॉल्स आसा ते माझे कमेंट्री बॉक्सान हँड ओवर करचे. And the bowler is Glenn. So the leg spinner has been told to do the job of pulling the last over. How much can he restrict these batters? This is very good line. This is a perfect length. If we can bowl 3 balls here, batters are going to find it difficult. Amit on strike. Pritesh comes and strikes a big one of the very first ball. Once again, we have to wait for the umpire signal. This was slightly wide. Very well watchfully left here by Amit. AM cricketers so far getting 71 with 5 balls left. 80 runs is not going to be easy to chase, especially when the sun is going down. That's a good whipped it. Look at the whip, quick whip. Fast hands coming from Amita, but getting the single because it was almost a Yorker length delivery here from the bowler. Started off well here, Glenn. This time, just going to be a single. So far is just the singles at the moment. The score here is 73. Maybe all the bowlers have been taken for runs, especially by Anand Mandrekar and then by Amit with sixes and boundaries. All the batters have played decently with at least 1 sixes. 1 6 under the name. Slog shot for a single. Fielder does a fine job, throws it back to the keeper straight in the hands. A good throw from the deep. This last over has been a good one here. He's not allowing them to reach towards at 80, but still the balls are left. 4 runs of the first 4 balls. That is the last over. Short ball should be a catch. Who is going to take it? Bowler says it's mine, and he takes it comfortably. Caught and bowled here, and the wicket departs. Very good comeback by Mandarin boys through Glenn in this last over. New batsman Rudra, just the last ball.
Oh, he finishes off well. Wide signal here. Umpire is not allowing him to finish. He says it's a wide. Opens his arms, Sujit Rane. Score is 75. Still one ball left here. Glenn. Oh, perfect ball. Perfect over. Might be a run out. Whether it's easy, we have to wait. It is a run out signal here by the umpire. And he restricts the strong AM cricketers in the last over to just give away 5 runs. What a magnificent over that was from Glenn. And they managed to get a total of 75. So 80, which was thought, which was easy, has not been given by the Manrem boys, but still 76 in 7 overs is not going to be easy run chase. AM cricketers will come to defend at 75 runs. Manrem boys will look to get 76 runs. Let's see who will go to face Sati Mahalakshmi of 2M in the cricketers. Let's see whether they can defend it or whether Manrem boys can chase this down. And let's hear it. The updates of this grand first day, second session from the voice of Jay Bosley. धन्यवाद हरीश सर। फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत इस मैदान पर। उज्ज्वला तुकाराम चोपड़ेकर मेमोरियल ट्रॉफी स्पॉन्सर बाय मोहित चोपड़ेकर, और ये महत्वपूर्ण मुकाबला इस मैदान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर एम क्रिकेटर्स ने रन बनाए हैं, जो कि 75, जीतने के लिए 76 रनों का लक्ष्य रखा है मानरेम बॉयज के सामने। और प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर कैप्टन ऑफ सिंधुदुर्ग गोपाल भट्टा और साथ साथ सोहेल शेख मैन फ्रॉम कुड़ाल, ये मैदान पर ये सलामी जोड़ी। और गेंदबाजी के मोर्चे पर विकी गेंदबाज। अच्छा मुकाबला होगा क्योंकि दोनों टीमों में अच्छे अच्छे खिलाड़ी मौजूद है। अगर बात की जाए तो मानरेम बॉयज टीम में भी बेहतरीन ऑलराउंडर सोहेल शेख, गोपाल भट्टा, दाजी दुरत, संदेश कुंडाईकर, गौरेश कामड़ी, अक्षय घाटवल, जॉन फर्नांडिस, ये बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी। अब पहली बल्लेबाजी तो हो चुकी है और अब इस 76 रनों का रक्षण करने वाली सक्षम गेंदबाजी यहाँ पर करनी है विकी, जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर पहला ओवर लेकर और सामना करेंगे कैप्टन ऑफ सिंधुदुर्ग गोपाल भट्टा। ढेर सारा अनुभव, ढेर सारी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता खेलने का अनुभव, और वही मैदान पर सामना करेंगे इस पहले ओवर की पहली गेंद का। दो ऑफिशियल्स आपको मैदान के अंदर, सुजीत राणे और अभिजीत तड़ेकर। मैं जय भोसले, मेरे साथ हरीश काकड़कर, आप सभी को कमेंट्री बॉक्स से हमारा प्यार भरा नमस्कार। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अतिरिक्त रन के साथ खाते की शुरुआत, रन संख्या को शुरुआत होती हुई इस मैदान पर। 7 ओवर का मुकाबला है और 7 ओवर में वो 76 रन बनाने हैं। मैं कहूंगा जिस तरह से शुरुआत मिली थी, 10 रन कम बनाए हैं जो एम क्रिकेटर्स ने।
वो अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, रिवर्स स्वीप, गेंद निकली है थर्ड मैन सीमा क्षेत्र से बाहर। 4 रन के लिए गोपाल भट्टा के बल्ले से निकलता हुआ इस इनिंग का पहला चौका। जैसे ही चौका लगा थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली करी है। एक खिलाड़ी को डीप थर्ड मैन की दिशा में भेजा गया है और जो कि कवर पर खिलाड़ी था सीधा उसको थोड़ा सा अंदर बुलाया गया है। ओ ये अच्छी गेंद लोअर फुल टॉस लगभग ऑफ स्टंप यार्ड का डालने की कोशिश, सीधा विकेट कीपर सनम के पास पहुंची गेंद, वापसी करिए विकेट। एक चौका जरूर लगा, पहली गेंद वाइड डाली, उसके बाद रिवर्स का एक शानदार स्ट्रोक 4 रन का, टोटल 5 रन 76 रनों के जवाब में बगैर किसी नुकसान पर मांद्रे बॉयज मैदान पर। ओ ये बेहतरीन गेंद, उतना ही शायद बल्ले को लगकर निकली होगी, विकेट कीपर को नजदीक से चकमा देते हुए 1 रन और खाते में जुड़ जाएगा, साथ साथ टोटल आगे बढ़ेगा 6 रन बगैर किसी नुकसान पर। स्ट्राइक पर सोहेल शेख एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, गेंदबाजी साथ साथ बल्लेबाजी में शानदार दमखम रखने वाला एक खिलाड़ी, लेकिन एक साझेदारी की आवश्यकता है। तो दूसरी तरफ से देखा जाए एम क्रिकेटर चाहते हो कि एक आध ब्रेक थ्रू जल्दी मिल जाए तो वापसी और मजबूती हो जाएगी अपनी टीम की। देखना है किसका नतीजा किसके पक्ष में चला जाएगा। फिलहाल तो फील्डिंग में तब्दीली कर दी गई है, लगभग थर्ड मैन पर कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा में खिलाड़ी को बुलाया गया है। विकी जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर आज 2 विकी, सुबह के सत्र में विकी पुजारी और ये गोवन खिलाड़ी विकी मैदान पर। और फिर एक बार इस बार चूके, थोड़ा सा अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक खेलने की कोशिश, फिर इस बार चकमा देने में कामयाब। गोपाल भट्टा ने उस अल्टी पल्टी पर 4 रन अर्जित किए थे, लेकिन इस गेंद के ऊपर सोहेल को पूरी तरह से चकाती हुई गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। लगभग 11 के आसपास का औसत चाहिए, आस्किंग रन रेट है जो कि रन बनाने के लिए। 2 पावर प्ले के ओवर मिलेंगे, साथ साथ ये ओवर, हर एक ओवर में आपको बड़े शॉट की आवश्यकता होती है। फुल टॉस गेंद जमीन के सहारे, विद अलंग द कारपेट के सहारे, हल्की सी मिस फील्डिंग वहां पर, लेकिन कवर बैकअप अच्छा होता हुआ मात्र मिलेगा सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ेगा 7 रन बगैर किसी नुकसान पर 76 रनों के जवाब में। एक मांद्रे बॉय जो कि पेडनेम तालुके से बिलोंग करने वाले, बारदेश तालुके से बिलोंग करने वाले खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरे। अनंत मांद्रेकर की शानदार पारी, साथ साथ अमित की एक शानदार बल्लेबाजी की पारी मैदान पर देखने को मिली। सनम सालगांवकर ने 14 रन बनाए, 27 अमित ने 24। ओ ब्लॉक कॉल में यॉर्कर लेंथ की गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, ये ब्रह्मास्त्र कहा जाता है गेंदबाज का। पहला ओवर समाप्त, पहले ओवर में निकले हैं 8 रन। अंपायर का इशारा आता हुआ पावर प्ले का, ये बॉलिंग चॉइस जो कि फील्डिंग करने वाली टीम के ओर से ये पावर प्ले का ओवर लिया गया है। 2 पावर प्ले के ओवर मिलेंगे, एक होगा बैटिंग साइड से लिया जाएगा, एक बॉलिंग साइड से, क्योंकि आगाज हो चुका है बॉलिंग पावर प्ले का। उसमें भी आपको 2 खिलाड़ी मात्र 30 से 8 घेरे के बाहर रखने की अनुमति, बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा मौका होता है, ले और गेंदबाजी के मोर्चे पर रोहित ये गेंदबाज नजर आते हुए। गोपाल भट्टा इस साल अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं और अच्छे रन बनते हुए नजर आ रहे हैं, और ये इनकी खासियत है कि मैच को कभी छोड़ते नहीं है, आखिर के ओवर तक लेकर जाते हैं। उनको पता रहता है कि मैच कभी भी हाथ में आ सकता है, लेकिन आपको मैदान के ऊपर टिके रहना है। रोहित गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे गोपाल भट्टा। ओ इस बार खेलना चाहते थे, आगे निकलकर गेंद और बल्ले का उस तरह का संपर्क हुआ नहीं है। 1 रन और खाते में लिखा जाएगा, सिंगल के साथ टोटल पहुंचा अब 9 रन पर बगैर किसी नुकसान पर 76 रनों का जवाब देते हुए पूरी चुनिंदा
दोनों टीमों की अगर बात की जाए तो ऑलराउंडर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरे। अनंत मांद्रेकर की 20 फोटक पारी, साथ साथ उसको बेहतरीन साथ अमित का यहाँ पर मिलता हुआ। अनंत मांद्रेकर ने 24 रन की शानदार बारी खेली। और सोहेल शेख के लिए गेंद टांगों के ऊपर थी, गेंद लगभग डीप स्क्वायर लेग के दिशा में जा रहे खिलाड़ी गेंद को रोकने की कोशिश करता, तब तक 2 रन आसानी के साथ पूरे होते हुए 2 रन के साथ साथ टोटल अब डबल फिगर में परावर्तित, जो कि 11 रन बगैर किसी नुकसान पर। लगभग प्रति ओवर 11 के औसत चाहिए था। पहले ओवर में एक चौका निकला, लेकिन उसके बावजूद निकले सिर्फ 9 रन। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर इस मैदान पर। ये पावर प्ले का ओवर, शायद इस ओवर को बड़ा ओवर करने की कोशिश रहेगी दोनों बल्लेबाजों की, लेकिन बात की जाए तो पहले गेंद के ऊपर सिंगल निकला, उसके बाद दुक्का निकला और अब थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है। लगभग डीप मिड विकेट पर एक को भेजा गया है, मिडान वाले खिलाड़ी को अंदर बुलाया गया है। ये फील्डिंग की सजावट। ओ ये अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, थोड़ी सी हार्ड लेंथ की जैसे गेंद तय गया कि मैदान पर विकेट से ज्यादा बिंदी गेंदों का महत्व है, और जैसे बिंदी गेंद निकलती जाएगी वैसा वैसा दबाव जो है बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर आ जाएगा। फिर एक बार यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने की बारंबार कोशिश, गेंद और बल्ले का उस तरह का संपर्क हुआ नहीं। 1 रन और खाते में जुड़ जाएगा। सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 12 रन बगैर किसी नुकसान पर 76 रनों के जवाब में। उज्ज्वला तुकाराम चोपड़ेकर मेमोरियल ट्रॉफी 2023 आज का पहला दिन, ये दूसरे। ओ इस बार थोड़ी सी छोटी गेंद हवा में खेल बैठे खिलाड़ी वहां पर थे, क्या हाथ में कैच आया था, लेकिन रनआउट का खतरा हो सकता है। लेकिन ओ यहाँ पर देखिए कैच छूटा था, लेकिन दूसरा रन भागने की कोशिश में यहाँ पर ये सुसाइड वाला विकेट खेल देखा करते हैं। शायद पावर प्ले का इशारा हुआ, इसीलिए गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिल रहा है। जी हाँ, पावर प्ले नहीं है तो विकी आएंगे गेंदबाजी के लिए। शायद पावर प्ले के लिए बचा कर रखा है निखिल को। अक्षय स्ट्राइक पर, बहुत बार ये उड़ता हुआ अक्षय हमने देखा है, यानी कि ये फील्डिंग में कमाल करता है और आजकल गेंदबाजी भी करता है। बल्लेबाजी तो इनकी खासियत थी ही, लेकिन गेंदबाजी और फील्डिंग में 100% योगदान। विकी गेंदबाजी के मोर्चे पर सामना करेंगे अक्षय घाटवाल। 2 ओवरों का खेल समाप्त, 14 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, अभी भी 62 रनों के है और दरकार। ओ ये ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बार अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। अतिरिक्त और एक सिंगल, अतिरिक्त सिंगल के साथ साथ टोटल अब पहुंचा 15 पर। 61 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। वैसे तो दोनों टीमों के लिए बराबर का मौका मुकाबला है, 2-3 बड़े शॉट मैच में और वापसी कर सकती है देखा जाए तो मांद्रेम बॉयज की टीम। तो दूसरी तरफ से 1-2 ओवर कसावट भरी होनी चाहिए। ओ अच्छी गेंद, क्या क्विकर डिलीवरी, बहुत ही तेज रफ्तार वाली गेंद, पूरी तरह से चारों खाने चित कर दिया बल्लेबाज को। एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करी थी, अक्रॉस हो गए थोड़े से, गेंद निकली सीधी विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, अनुभव पूरी तरह से नजर आता हुआ इन गेंदबाजों में। ओ इस बार उठा कर खेला, क्या इसमें दूरी है? निखिल वहां पर तैनात, कैच हुआ ड्रॉप। जैसे संदेश कुंडेकर ने वहां पर गलती करी थी, वैसे निखिल ने यहां पर गलती करी है। और आपने कैच किसका छोड़ा है? अक्षय घाटवल का। अगर ये इनका कैच छोड़ना, यानो ये मारेगा कम और घसीटेगा ज्यादा। ये खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करता है, कब मैच लेकर उड़ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। 2 रन और 2 रन के साथ साथ टोटल अब आगे बढ़ा है 17 पर। मौका बनाया था विकी ने अपने टीम के लिए। ओ क्लीन बॉल, यू मिस, आई हिट। चलिए पेविलियन के गले, तू नहीं तो और सही।
मिल्खा तो भाग भाग के थक चुके हैं, अब भागने की बारी है बल्लेबाजों की। रन बनाने के लिए भागना पड़ेगा। मैदान पर गेंदबाज भाग रहे, फील्डर भाग रहे। न्यू बैटर मैदान पर, मैन फ्रॉम सिंधुदुर्गा बबल नाइक, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, ये भी आक्रामक ढांचे के बल्लेबाज है। अक्षय को जीवनदान मिला था, कैच छूटा था और जो कि क्लीन बोल्ड हो गई वहां पर। जैसे ही अगर बात की जाए, गोपाल भट्टा का भी कैच छूटा था लेकिन वो रन आउट हो चुके थे। यानी कि दोनों बल्लेबाजों को मौके जरूर मिले थे लेकिन नसीब ने साथ नहीं दिया। क्रिकेट में हमेशा कहा जाता है 50% आपका प्रयास और 50% नसीब का साथ, और हमेशा कहा जाता है वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, चाहे जितना प्रयास करो। जो लिखा है वही तो यहाँ पर घटना है। विकी गेंदबाजी के मोर्चे पर सामना करेंगे बबल नाइक। ओए अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक देखिए, आते आते एक शानदार स्ट्रोक, जैसे सुई में से धागा भी रोया गया। गेंद सीमा पर 4 रन के लिए। इसे कहते हैं सीधी उंगली से घी जब निकलता नहीं ना तो उंगली टेढ़ी करना। 4 रन। ओ यार कर लेंगे गेंद, ये बहुत ही बढ़िया, ये अच्छा डालते हैं, ये तेज फेंकते हैं और बल्लेबाज को समझ में आते आते गेंद निकल जाती है विकेट कीपर के हाथों में। चौके के साथ खुद का खाता खोला, टोटल जो कि पहुंचा 21 पर, 21 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। फिर एक बार विकेट, अब तक की बात की जाए ठीक ठाक ओवर रहा है ये, एक विकेट निकला है और अब निकली अगली गेंद। अच्छी गेंद, इस बार हाफ अली बनाकर शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेलना चाह रहे थे। जब तक गेंद को फील्ड करते, 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ, 1 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ। 3 ओवरों का खेल समाप्त, 22 रन। थैंक यू डीजे। अब अंपायर का इशारा, बैटिंग चॉइस पावर प्ले का। गेंदबाजी में आ रहे गेंदबाज रोहित। ये ओवर काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर बात की जाए इस मुकाबले का सूरत हाल आपको बताया जाए, 24 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और 54 रनों की आवश्यकता। 24 डिलीवरीज लेफ्ट एंड 54 रन रिक्वायर्ड। 22 रन बन चुके हैं 76 रनों के जवाब में। 3 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। ये पावर प्ले का ओवर काफी मायने रखेगा, लेकिन रोहित ने अच्छी गेंदबाजी करी है। पहला ओवर डाला है और पहले ओवर में रोहित ने सिर्फ 6 रन दिए हैं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी है अपनी टीम के लिए। अब देखना है ये ओवर टीम के लिए, इस मुकाबले के लिए काफी महत्वपूर्ण, इस मैच का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है शायद। देखा जाए तो मांद्रेम बॉयज के दृष्टिकोण से 2-3 बड़े हिट मैच में मजबूती के साथ वापसी कर सकते मांद्रेम बॉयज की टीम। स्ट्राइक पर बबल। ओ यार कर लेंगे गेंद ऑफ स्टंप के नजदीक से, यहाँ पर थोड़े से फंबल हो गए, विकेट कीपर बीड हो गए थे बल्लेबाज। अंपायर का इशारा 22 का आता हुआ, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 23 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 76 रनों के जवाब में अभी भी 53 रनों की आवश्यकता। मैच इस तरह से देखा जाए तो किसी के हाथ से छूटा नहीं है, दोनों टीमों के लिए बराबर का मौका। 1-2 ओवर अच्छे डाले जाए तो मैच यहाँ पर एम क्रिकेटर्स के हाथों में चला जाएगा और 2-3 बड़े हिट मैच जीतने की आशंका बढ़ जाएगी मांद्रेम बॉयज टीम की। होने को कुछ भी हो सकता है क्योंकि क्रिकेट में उल्टा फेर होते हुए देर नहीं लगती, यह हमने कई बार देखा है, आज के दिन में भी देखा है।
और इस बार देखिए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन सीधा फील्डर को ढूंढ लिया। मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी थे उसके हाथ में, और सोहेल शेख की पारी यहां पर समाप्त होते हुए तीसरे विकेट का पतन। थैंक यू। न्यू बैटर मैदान पर। हम हमेशा कहते हैं जिनका चेहरा है खूबसूरत उनका नाम है दाजी दुरत, लेकिन अब विपरीत परिस्थितियां, यहाँ पर उनको बल्लेबाजी भी खूबसूरत करनी पड़ेगी तभी मैच बनेगा यहाँ पर। लेकिन काम कर गए यहाँ पर रोहित, एक बड़ा शॉट लेकिन ताकत नहीं कर प्रदान कर पाए उस शॉट के पीछे सोहेल शेख, और एक आसान सा कैच मिड विकेट के ऊपर देकर वापस के में आराम फरमा रहे हैं सोहेल शेख। अब देखना है दाजी दुरत क्या करते हैं। उल्टा गेंद इस बार निश्चित रूप से खेला हुआ सीधा स्ट्रोक। अंपायर की आवाज यहाँ पर हमारे कानों तक जरूर आई है, और एक रन तो निश्चित रूप से खाते में लिखा जाएगा। और फ्री हिट का इशारा, नो बॉल। और जी हाँ, हमारे पास आवाज जरूर आई थी, इशारा भी आया था, नो बॉल और साथ साथ मिलेंगे फ्री हिट। कुल मिलेंगे ये 2 रन, यानी कि अगला मौका जो होगा तो निश्चित रूप से बल्लेबाज को जी चाहे मन चाहे जहां चाहे शॉट खेलने का मौका, आउट होने का खतरा सिर्फ यहां पर रनआउट का। ये हाथ खोलने पड़ेंगे बबल को, इस मौके का फायदा उठाना पड़ेगा। टोटल की अगर बात की जाए, टोटल पहुंचा है 25 रन पर। 51 रनों की और आवश्यकता। ये फ्री हिट की गेंद, ओ इस बार जाया गई फ्री हिट की गेंद, शायद रनआउट का खतरा भी हो सकता था, डायरेक्ट हिट हो जाता तो 19-20 का मामला देखने को मिलता। 1 रन और खाते में जुड़ा सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 26 रन। 50 रनों की और आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। मैच देखा जाए तो धीरे धीरे, जो कि बात की जाए एम क्रिकेटर्स के अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, कोई आजादी नहीं बल्लेबाजों को, लेकिन मैच पलटते देर नहीं लगेगी। दाजी स्ट्राइक पर, ये स्लोवर वन फंस गए, स्लोवर वन में फंस गए, गेंद के नीचे खिलाड़ी, ओ यहां पर कैच ड्रॉप हो गया। और एक यानी कि फिर एक बार अंपायर का इशारा आएगा। फ्रेड, ये दूसरा नो बॉल इस ओवर का। कुल 2 रन के साथ टोटल 28 पर 28, 48 रनों की आवश्यकता। देखिए क्या क्या घट रहा है मैदान पर। फ्री हिट का पहला मौका मिला था वो भी बबल को ही, अब भी मौका मिला है वो भी बबल को। पहला मौका जाया गया था, देखता है ये मौका फ्री हिट का क्या करते हैं। एक बड़ा शॉट अगर आ जाए तो नव संजीवनी यहाँ पर मिल सकते हैं सामने वाली टीम को, लेकिन गेंदबाजी अच्छी रोहित की मैदान पर, थोड़े से ओवर स्टेपिंग कर रहे हैं। ओ ये भी गेंद, इस बार डॉट निकली, बिंदी निकली। इसे कहते हैं एक तेरी एक मेरी। देखिए दोनों फ्री हिट के ऊपर बड़े शॉट आए नहीं, अच्छी वापसी, बेहतरीन एक सटीक लाइन, अनुशासित भरी गेंदबाजी। 2 नो बॉल जरूर डाले हैं, लेकिन उसके बाद बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दिया बड़े शॉट खेलने का। स्कोर 28 के ऊपर ही रुका हुआ। ओ इस बार उठाकर खेला है क्या, इसमें दूरी है, भाग रहे हैं खिलाड़ी, लेकिन सिर्फ जाएंगे गेंद लाने के लिए। दर्शक बने 6 रन, जिस शॉट की आवश्यकता बेहतर थी वो निकला 6 रन का। थैंक यू। फ्री हिट के ऊपर तो बड़ा शॉट निकला नहीं, लेकिन अच्छी गेंद के ऊपर ये बड़ा शॉट 6 रन का। देर आई दुरुस्त आए, टोटल पहुंचा 34 पर 34। अभी भी 42 रनों की और आवश्यकता, मैच बनेगा। एक आध 2 बड़े शॉट अगर निकल आए तो मैच बनेगा। पकड़ बनाए रखी है एम क्रिकेटर्स ने, लेकिन देखने वाली बात होगी ये पकड़ आखिर तक मजबूत रख पाते हैं नहीं एम क्रिकेटर्स की टीम इस मैदान पर।
इस बार थोड़ा सी घूम कर खेला हुआ स्ट्रोक अनंत मांद्रेकर स्क्रीन के ऊपर नजर आते हुए, एक ही रन मिलेगा, सिंगल ही मिलेगा। थ्रो देखिए कितना सटीक यहाँ पर आता हुआ। साथ साथ ओवर समाप्त होता हुआ चौथा, 4 ओवरों का खेल समाप्त। टोटल 35 रन स्कोर बोर्ड पर। अब बचे 18 गेंदे और 18 गेंदों में और चाहिए 41 रन। 18 डिलीवरीज लेफ्ट एंड 41 रन्स रिक्वायर्ड। हेलो पूर्वेश, वायरलेस। हेलो, गेंदबाजी में और एक बदलाव, और गेंदबाजी के लिए रोहित हळनकर, एक अनुभवी गेंदबाज आपको नजर आएंगे। सामना करेंगे बबल नाइक। एक छक्का बबल नाइक के बल्ले से निकल चुका है। अब 18 गेंदे और 41 रन, ये है इस मुकाबले का समीकरण। शॉर्ट ऑफ लेग की गेंद, यहाँ पर छोटी गेंद थी, निश्चित रूप से बल्ला पहले घुमा चुके थे। गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। कुल 2 रन, 22 का एक सिंगल, कुल 2 रन मिलेंगे और 2 रन के साथ साथ टोटल 37 रन पर अब पहुंचा है। मैच में अब थोड़ी सी जैसे जैसे गेंदे नजदीक चली जाएगी, वैसे वैसे इस मुकाबले का सूरत हाल और रोमांचक नजर आएगा मैदान पर। देखने वाली बात तो निश्चित रूप से है। और रोहित फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर, और इस बार थोड़े से बैकफुट पर चले गए, लेकिन ताकत यहाँ पर जी नहीं प्रदान कर पाए। दूसरे अटेम्प्ट में यहाँ पर कैच को लपक लिया, एक शानदार कैच को अंजाम दिया निखिल ने, और दाजी की पारी यहाँ पर समाप्त होते हुए चौथा विकेट वापस खेमे की ओर। न्यू बैटर मैदान के अंदर दाखिल होते हैं। मैन फ्रॉम मोरजिम, दत्तराज। थोड़ा सा ताकत कम पड़ गया। नेहल के हाथ से भी निखिल के हाथ से गेंद चिटक रही थी, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में इस कैच को तब्दील कर दिया। रोहित हळनकर अच्छी गेंदबाजी, पहली गेंद वाइट, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा आमंत्रित कर दिया था, इनवाइट किया था बड़ा शॉट खेलने के लिए, और वो खेला भी दाजी ने, लेकिन ताकत नहीं प्रदान कर पाए, सीधा फील्डर को ढूंढ लिया। अब सामना करेंगे दत्तराज रोहित की अगली गेंद का। ये गेंद फिर एक बार ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, और एक अतिरिक्त सिंगल के साथ साथ टोटल में बदलाव। टोटल अब पहुंचा 38 रन पर, और 38 रन की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। स्लोवर वन डिलीवरी, ये स्लोवर वन, अपील थोड़ी सी कई की थी जरूर, लेकिन अंपायर को पता था गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं है। आजकल हर डॉट गेंद जब विकेट कीपर के हाथ में निकल जाते हैं ना, एक दबाव डालने की कोशिश की जाती है अंपायरों के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी रोहित हळनकर की इस मैदान पर। इस बार घूमकर खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगी, लेग गली की दिशा में जब तक फील्ड की जाती, एक रन और खाते में जोड़ता हुआ, एक रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 39 रन पर पहुंचा। टोटल 37 रनों की और आवश्यकता है ये मुकाबला। वैसे तो देखने के लिए ये 5 बड़े शॉट का खेल है, लेकिन वो शॉट आने चाहिए और समय पर आने चाहिए। ओ बबल चूके, ये मौका था, छोटी गेंद थी, शायद इसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन शॉट जल्दी खेल बैठे।
और गेंद बाद में निकली, थोड़ी सी स्लोअर वेन गेंद थी और मौका था, शायद बल्ले में आ जाती तो 6 रन के लिए निकल जाते। शायद ये डॉट गेंद काफी चुभेगी बाद में जब विश्लेषण किया जाएगा हार और जीत का। तब फिर एक बार रोहित, अब तक ठीक ठाक गेंदबाजी, इस बार आगे निकले, शानदार कवर ड्राइव, गेंद का पीछा किया जा रहा है, निखिल जीतता नहीं नजर आया, गेंद जीतती हुई शानदार कवर ड्राइव, गेंद निकले सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। जो टोटल पहुंचा 43 पर, 43 रन स्कोर बोर्ड पर। और फिर एक बार रोहित, अच्छा ओवर लग रहा था, ये चौका शानदार, नजाकत भरा स्ट्रोक। इस बार आगे निकले थे खेलने के लिए, लेकिन गेंद और बल्ले का उस तरह का संपर्क हुआ नहीं, मात्र मिला सिंगल के साथ ओवर भी समाप्त होता हुआ ये यहाँ पर 5 ओवरों का खेल समाप्त, टोटल 44 रन 44, 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और 32 रनों की और आवश्यकता, 12 गेंदे और 32 रन की है जरूरत। वैसे तो इनका बबल नाइक की बल्लेबाजी की अगर बात की जाए, मिड विकेट और डीप स्केल का ये इनका पसंदीदा स्ट्रोक है, लेकिन आज थोड़ा सा वो छोटी गेंद के ऊपर चूके, वरना ऐसे गेंदबाज 100 में से 99 बार वो सीमा रेखा पार भेजने की क्षमता रखते हैं। गेंदबाजी में अब मात्र आते हुए निखिल, काफी इंतजार करवाया निखिल ने गेंदबाजी के लिए, 12 गेंदे 32 रन प्रति ओवर, 16 रन की आवश्यकता। मैच का सूरत हाल देखिए, 12 गेंदों में चाहिए 32 रन, क्या होगा देखने वाली बात तो है। बबल है स्ट्राइक पर और निखिल की पहली गेंद का सामना करने के लिए। ओ इस बार देखिए, मैंने यही बात करी थी, गेंद आएगी, जरूर आएगी 6 रन के लिए। छक्के के साथ 50 रन भी यहां पर पूरे होते हुए मानरेम बॉयज टीम के, अभी भी 26 रन की आवश्यकता। मैच देखिए, मैंने कहा उल्टा फेर होते देर नहीं लगते। ओ ये थोड़ा सा अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक खेलने की कोशिश करे और इस बार सीधा विकेटों के ऊपर, पल में फाशा पल में फाश, एक तेरी एक मेरी, चलिए पेवेलियन के गली। थैंक यू। 23 रनों के एक शानदार पारी को समाप्त कर दिया। न्यू बैटर जॉन फर्नांडिस मैदान पर, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, और एक ये धुआंधार बल्लेबाजी करता ही है, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट इनके अगर देखे जाए, सिंगल को डबल में तब्दील करने में इनका बहुत ही बड़ा हाथ होता है। अब शायद फिर एक बार निखिल, और इस बार खेलना चाहते थे, कई गेंद निकली नहीं, सी बैक टू द बॉलर का ये स्ट्रोक था, डॉट निकली, बिंदी निकली। अभी भी 26 रन और चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। एक छक्का लगाया, शायद आशाएं पल्लवित करी थी मुकाबले में। फुल टॉस गेंद इस बार खेला, गैप में से गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। जॉनी यस पापा, रन बनाएंगे, यस पापा। थैंक यू। टोटल पहुंचा है 54 पर, 22 रनों के और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। निश्चित रूप से शायद थोड़े से दबाव, ये दबाव देखिए किस तरह से गेंदबाज के ऊपर है, किस तरह से फील्डिंग के ऊपर है। ओ ये थोड़ी सी छोटी गेंद थी, बल्ला तेजी से घुमाया था, शायद रडार में आ जाते और एक बड़ा शॉट निकल आ जाता। ले होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्रिकेट में अगर मगर को कोई स्थान नहीं होता। ये फिर एक बार आपको देखने को मिला, अच्छी वापसी करी है निखिल ने इस मैदान पर।
ओ फिर एक बार, इस बार भी चुके, यहाँ पर सिंगल जरूर निकलेगा, दूसरे की मांग होगी नहीं। शायद तेजी के साथ खिलाड़ी वापस आते हुए एक रन के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे जॉन। टोटल 55 पर, यानी कि अब 6 गेंदों का खेल बाकी आखिरी और 21 रनों की और आवश्यकता। देखिए बात की जाए तो गेंदबाजी अच्छी डाली थी गौरीश कांबड़ी ने, रेडी एक्सप्रेस ने 13 रन खर्च किए थे, एक विकेट हासिल किया था 2 ओवर में, लेकिन वो 2-3 ओवर, चौथा और पांचवा ओवर, जिस ओवर में 30 रन निकले वहीं पर मैच हाथ से। और पेनल्टी, जी हाँ यहाँ पर पेनल्टी मिल चुकी है। एक खिलाड़ी आपको 30 यार्ड घेरे के अंदर लाना पड़ेगा, ये पेनल्टी है, समय का तगादा। दूसरी बार पेनल्टी इस मैदान पर आज के दिन में आपको दिखाई देगी। जो आपको समय दिया गया है उस समय के अनुचित आपका आखिरी ओवर शुरू होना चाहिए, वरना आपको एक खिलाड़ी की पेनल्टी जो कि अंदर 30 यार्ड सर्कल के अंदर आपको लाना पड़ेगा और ये फायदेमंद हो जाएगा बल्लेबाजी करने वाली टीम को। आखिरी ओवर डालने के लिए गेंदबाज प्रीतेश, 6 गेंदे 21 रन, स्ट्राइक पर जॉन। कौन बनेगा हीरो, क्या जॉन ही कहेंगे यस पापा या प्रीतेश? ये 21 रन डिपेंड करने वाली गेंदबाजी मैदान पर कर पाते हैं। देखिए दबाव देखिए किस तरह से मैदान पर, और ये हमेशा होता है, दो तगड़ी टीमें आमने सामने होना तो इस तरह का कुशल मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। 21 रन 6 गेंदे, और इस बार आगे निकलकर खेलने की कोशिश, लेकिन बड़ा शॉट नहीं निकला, एक ही मिलेगा। अब बचे 5 गेंदे और 5 गेंदों में चाहिए 20 रन। 5 चौके से भी मुकाबला समाप्त हो सकता है, 3 छक्के से भी मुकाबला समाप्त हो सकता है, लेकिन वो आने चाहिए। लेकिन गेंदबाजों की तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर एम क्रिकेटर्स टीम के, शानदार सटीक गेंदबाजी, किसी बल्लेबाज को रुकने का मौका नहीं दिया। एकमात्र बल्लेबाज जिन्होंने 23 रन बनाए, लेकिन जिस तरह से तेजी बरतनी चाहिए थी वो नहीं बरती, और जिसके चलते हुए ये मुकाबले का हालत सूरत हाल आपको देखने को मिल रहा है इस आखिरी ओवर में। 5 गेंदे और 20 रनों की है जरूरत। ओ यॉर्कर लेंथ की गेंद, यहाँ पर अपील, हाउस दैट, और लेग पेपर, विकेट निकलता हुआ वापस। थैंक यू। न्यू बैटर संदेश कुंडईकर, सैंडी के नाम से जाने जाने वाला ये खिलाड़ी, निश्चित रूप से इस खिलाड़ी के नाम के ऊपर बहुत सारे कीर्तिमान है। लगातार 9 गेंदों में 9 छक्के लगाने का कारनामा इन्होंने कर दिखाया, लेकिन वो 9 छक्के की अब तो आवश्यकता नहीं है। आपके बल्ले से चाहिए सिर्फ 3 बड़े शॉट अपनी टीम के लिए। लेकिन गेंदबाजी की अगर बात की जाए, 2 डॉट गेंदे मैच जीतने के लिए काफी होगी सामने वाली टीम के लिए। क्या होगा, संदेश कुंडईकर स्ट्राइक पर, थोड़े से देर आ गए हैं, लेकिन देखना पड़ेगा दुरुस्त आए हैं या बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। ओ ये अच्छी गेंद दूर से खेलने की कोशिश करी है, वापस जाना पड़ेगा जॉनी को। अब 3 गेंदों का शायद खेल बचा है और रन चाहिए 20। यहां से अगर तीनों डिलीवरी, लीगल डिलीवरी अगर डाल देते हैं तो मैच जीतना बहुत ही मुश्किल है। शायद अब सोचने के लिए मजबूर हो रही है मांद्रेम बॉयज की टीम कि हमने गलतियां कहाँ करी है। जो अच्छा मुकाबला लग रहा था पहले 3 ओवर में, वो 17, 15, 15, वो 3 ओवर ने मुकाबले का रुख ही बदल दिया, और जिसके चलते हुए एक बड़ा टोटल 7 ओवर में शाम के वक्त इस मैदान पर। इसलिए कहा जाता है बाद में पछतावा करने से फायदा क्या जब चिड़िया चुग जाए खेत। और इस बार हवा में खेल बैठे हैं, खिलाड़ी दूर है, मिलेगा मात्र सिंगल, सिंगल से फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब लगभग 1 पांव जीत की कगार के ऊपर खड़ी कर चुके हैं। 2 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और जीतने के लिए 19 रनों की है आवश्यकता। स्लोवर 1 डिलीवरी, यहां पर वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ, अतिरिक्त और एक सिंगल। अब 2 गेंदों का खेल बाकी है और 18 रनों की आवश्यकता। अगला मुकाबला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा।
इस बार बल्ले को लगी, सिंगल जरूर निकलेगा, लेकिन जीत की मोहर लगभग एम क्रिकेटर्स के नाम के आगे लगती हुई। अगला इस आज के दिन का आखिरी मुकाबला शाम का अभी खेला जाएगा। इस मुकाबले के बाद जो कि क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होगा, इसमें जीतने वाली टीम तुएम के साथ, तुएम की टीम के कप्तान आइए, टॉस के लिए आइए जल्दी। और लीगल डिलीवरी, इसके साथ ये मुकाबला जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं एम क्रिकेटर्स की टीम। अब उनका मुकाबला होगा तुएम के साथ। तुएम के कप्तान आइए टॉस के लिए। और तब तक हम मैन ऑफ द मैच के और रुख करते हैं। अमित असाने आनंद मांजरेकर बॉल कितले खेळले बॉल ह्यो कमी खेळला, आनंद कमी खेळला बॉल। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच देखिए, यहाँ पर नॉट आउट पारी खेली 27 रनों के अनंत अमित ने, और लेकिन आनंद मांजरेकर का वो मैदान के ऊपर आना और रन का फ्लो बढ़ना और एक शानदार पारी, झटपट पारी, 13 गेंदों का सामना किया, 24 रन बनाए और इस मैच के मैन ऑफ द मैच अनंत मांजरेकर। आइए आनंद जी, आप मैन ऑफ द मैच का स्वीकार किए, आइए। धन्यवाद। ले चलते आज के दिन का आखिरी मुकाबले के लिए हरीश काकोडकर सर के पास। धन्यवाद। रिक्वेस्टिंग एम क्रिकेटर्स मातशे बॅट्समॅन जातीतले बेगीन येवचे, कारण ही लॅस मॅच आसतली आनी आमकां लायट जो आसा ती पळोवपाक जाय। सो अंपायर्स ते डिसिजन घेतले, डिले करपाचो ना बॅटिंग सायड, जे टॉस जिखला एम क्रिकेटर्स आनी टॉस जिखून बॅटिंग घेतिल्ली आसा आनी लास्ट मॅचाची दिसाची there is not going to be bad light appeal because time slot has been given. जर टाइम स्लॉटा भितर बॉलिंग कंप्लीट केली ना जाल्यार ताका पेनल्टी आसतली, सो ती एडवांटेज आसतली। सो रिक्वेस्ट करता मातशे बॅटिंग सायड मातशे जातीतले बेगीन आपल्या बॅटर्स जे मातशे बेगीन भितर ग्राउंडार धाडचे। एक बरी स्पिरीट अशी क्रिकेटीची आमकां पळोवन एक बरी संद मेळपाक जाय की एक बरी क्वॉर्टर फायनल, जेणे करून सेमी फायनलिस्ट जे आसा ते बऱ्या रित्यान हांगा फायनलीक सेमी फायनलाक प्रवेश करपाक जाय। एक क्वॉर्टर फायनल मॅच, ज्या क्वॉर्टर फायनलीक अंपायर्स आसतले सुजीत राणे आनी राजू दाबोलकर, एक बरे नावाजलेले गावजलेले अशे क्रिकेटर आनी अंपायरय बी। सो रिक्वेस्ट करता बॅटिंग सायड एम क्रिकेटर्स मातशे जातीतले बेगीन ग्राउंडार देवचे।
पयली क्वार्टर फायनल आणि जे सेमी फायनलिस्ट जे आमकां मेळिल्ले आसा ते आसा ए स्ट्रायकर्स हे टीम डायरेक्ट सेमी फायनलाक पयली टीम जाल्ली आसा. पळोवया दुसरी टीम कोण सेमी फायनलाक प्रवेश करता. बॅटिंग मातशे बेगीन येयात. रिक्वेस्टिंग द बॅटर्स मातशे बेगीन करात. Umpires are very strict in rules and regulations, so all the things are being noted. Sati Mahalakshmi of Tuve versus AM Cricketers is going to be the second quarter-finals. What a match, what a day it has been. We have seen some big names coming all the way from Mumbai, Maharashtra, Karnataka and other places as well. But finally, some good plays, not the big names that have shined today. Some good players and very sensible and smart players shown by some of the good teams have made it into the semi-finals. Yes, I can understand a strikers were a full outfit from Maharashtra where they have performed very well as a team, but not as individual performances. 12th man of Sati Mahalakshmi is required here in the commentary box. 12th man of Sati Mahalakshmi Tuve. ट्वेल्थ मॅन आयिल्लो आसा दोन्ही टिमीचो आनी आमी आतां एक बरीच क्वार्टर फायनल पळोवपाक मेळटली. दुसरी क्वार्टर फायनल आयच्या दिसा ती सती महालक्ष्मी तुवें वर्सीस AM क्रिकेटर्स. पयलो बॉल घेवन येता मंदार. सनम साळगांवकर बॅटिंगेक आसतलो आनी नॉन स्ट्रायकर आज परत एकदा अमित. पयलो बॉल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. बरो मारिल्लो आसा. कॅच आसपाक शकता आनी फिल्डरान कॅच धरल्या. पयल्याच बॉला व्हडलो झटको लागिल्लो आसा AM क्रिकेटर्साक आनी ह्या झटक्या फाटल्यान पयली मोठी विकेट पॅव्हिलियनान परत वता AM क्रिकेटर्साची. सनम साळगांवकर आउट ऑन 0. So very good initiative here. There are some lines stretched here in the dugout. If the new batsman doesn't come out, if the new batsman chance of a run out at the non-strikers and direct hit, but the throw was little offline. अनंत मांद्रेकर हांगा बॅट्समॅन बरो एक खेळगडी जाणे ओदोच्याच मॅचीक हाजे फाटल्या मॅचीक एक प्लेयर ऑफ द मॅचाचो जबरदस्त असो अवॉर्ड घेतिल्लो. 24 रन काडिल्ले फक्त 12 बॉलांक. एक बरी इनिंग्स जेणे करून जी मोमेंटम आशिल्ली रन रेट आशिल्ली स्ट्रायक रेट बरी दवरून ताणें आपल्या टिमीक 70+ आंकडो पार केल्लो. परत एकदा संद आसा. परत एकदा उखलून मारपाचो प्रयत्न लेग सायडीच्या दिशेन पूण फक्त मेळटा 1 रन. जी बॉलिंग करपाचो हो जो एक हे गडी आसा आतां ही टीम आसा आतां ही पलटन आसा ती इतली बरी आसा की पयल्या मॅचीक ताणें एक नावाजलेले गांवांतले अशे प्लेयर आयिल्ले. प्रथमेश मात्रे, प्रथमेश पवार आनी गोंय राज्याचे अशे नामवंत खेळडू हांकां पटकनी दिल्ली. फक्त 53 रनाचेर आडोवन दवरिल्ले त्या एक गडगंज अशा बॅटिंग ऑर्डरीक. आनी AM क्रिकेटर्स हांणी तो परफॉर्मन्स पळयलो आसतलो आनी म्हाका दिसता ज्या रित्यान बॉलिंग आसा तांचे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स एक स्पिनर्स आनी ऑफ कटर्स एक बरे खेळगडी. परत एकदा उखलून मारपाचो यत्न करता पूण खंय तरी बॅटाक लागना. फक्त 1 रन अजून पर्यंत 1च रन मेळत आसा.
स्कोर जाल्लो आसा 4. अजून पर्यंत बरी बॉलिंग मंदारान पहिल्याय मॅचीन बरी बॉलिंग घाल्ली. परत एकदा बरो बॉल, सुंदर बॉल, वायड यॉर्कर जो मारपाक खूप कठीण, कारण बॅट उखलपाक आणि बॅट मारपाक टायमच दिना वायड यॉर्कर. आणि ह्या रित्यान एक बरी सुंदरशी ओव्हर परत एकदा मंदारा कडल्यान पहिल्याच बॉला विकेट काढली सनम साळगांवकाराची. आणि परत एकदा फक्त एक रन दिवन ह्या एक ओव्हरीन स्कोर जाल्लो आसा 4 रन. एक खेळगडी जो मोठो आसा तो परत एकदा पॅव्हिलियनान डगआउटान बशिल्लो आसा सनम साळगांवकर. आणि दुसरी ओव्हर घेऊन येता रमेश, जाका गांगुली म्हणटात. रमेश जाका गांगुली म्हणून सगळे नावान वळखतात, तो सती महालक्ष्मीचो गांगुली. परत एकदा बरो बॉल, एक सुंदर अशी म्हाका दिसता जी टीम आसा ज्या रित्यान बॉलिंग घालता आणि खंयच्याच बॅटिंग सायडीक उखलपाची संद दिना. जे मोठे फटके पळोवपाची सदांच आतुरतेन वाट पळयतात सपोर्टर्स आसता प्रत्येक टीमीचे, ते खंय तरी बॅट घुंवडावपाची संद हांगा बॉलर्स दिना. फक्त 1 रन स्कोर जाल्लो आसा 5. दुसरी ओव्हर चालू आसा. परत एकदा शॉर्ट बॉल मारपाचो यत्न केल्लो पण यत्न असफल. परिणाम विपरीत वता. परिणाम अजून पर्यंत फक्त एक रन मेळत आसा. 1 रना फाटल्यान परत स्कोर जाल्लो आसा 6. पण ज्या रित्यान एक्सपेक्टेशन आसता, एक आशा आसता की आपल्याक 6 मेळटल्यो 4 मेळटल्यो, पण त्या तरेची बॉलिंग हांगा अजून पर्यंत दिश्टी पडना. पयल्या इनिंग्सान इतली दमदार आणि सुंदर दर्जेदार प्रदर्शन घडोवन हाडिल्लें की एक सुद्धा वायड आणि नो बॉल दिसूना. उखलून मारपाचो यत्न केल्लो, मारला, 6 वता काय कॅच, आणि कॅच धरिल्ली आसा बाउंड्री भितर. एक बरो खेळगडी असो अमित, जाणे बरो खेळ केल्लो. 27 रनाची पारी पहिल्या मॅचीन, पण आता दोगांय ओपनर्स जे आसा ते बॅक टू पॅव्हिलियन. आणि अशा रित्या दुसरी विकेट घेतिल्ली आसा. रमेशाक 1 विकेट आणि मंदाराक पहिल्या ओव्हरीन 1 विकेट. रुद्रा नवो बॅट्समॅन. परत एकदा फक्त उखलून मारला. लकी आशिल्लो कारण फिल्डर थंय आशिल्लो पॉइंटाच्या दिशेन, पण फक्त मेळटलो 1 रन. अजून पर्यंत बॅटांतल्यान फक्त एक रन येवन स्कोर जाल्लो आसा 7. 2 खेळगडी बाद जाल्ले आसा. एक बऱ्यांतली बरें बॉलिंग प्रदर्शन या क्वार्टर फायनलीक घडोवन हाडटा सती महालक्ष्मी तुयेची टीम. ज्या रित्या त्यांनी पयले मॅचिंग परफॉर्मन्स केल्ले तशीच कन्सिस्टंट बॉलिंग परफॉर्मन्स बॉलर्स सगळे घडयतात. आकांताची बॉलिंग परफॉर्मन्स जबरदस्त, ज्या रित्या आम्ही गोंयकार म्हणटा उजो तशी एक बॉलिंग परफॉर्मन्स दमदार. सेकंड विकेट पडिल्ली आसा या ओव्हरीन आणि स्कोर फक्त जाल्लो आसा 7. म्हणल्यार 7चेर 3 खेळगडी बाद जाल्ले आसा AM क्रिकेटर्स पंगडाचे. आता खेळगडी जो आयला तो निखिल दिवगीकर.
बरो बॉल, सुंदर बॉलिंग, एक उत्कृष्ट असे दर्जेदार बॉलिंग प्रदर्शन घडोवन हाडटा दोन्ही ओपनिंग बॉलर्स. पयल्या ओव्हरी आयिल्ले 4 रन 1 खेळगडी बाद आणि दुसऱ्या ओव्हरीत जी रमेशान घाल्या थंय आयल्या 1 ओव्हर 3 रन आणि 2 विकेट. म्हणल्यार 2 ओव्हरी उपरांत स्कोर जाल्लो आसा फक्त 7 रन आणि या पंगडाचे 3 खेळगडी बाद जाल्ले आसा. सूर्य ज्या प्रमाणे अस्त जाता त्या प्रमाणे आम्ही पळयता जे सांजवेळ असता त्या टायमार सिक्सरी आणि फोर्यो मारपाचो यत्न करतात बॅट्समॅन, पूण तितले केन्नाच सफल जायना. एक बरें कनेक्शन, बरो पावर लागलो जाल्यार सिक्सरी आणि बाउंड्रीज मेळपाची संद मेळटा. आणि खंय तरी ज्या रित्यान टॉस जिखले एम क्रिकेटर्स, बॅटिंग घेतले, एक रायट डिसिजन आशिल्लें, पण तितलेच बरें दर्जेदार अशें बॉलिंग प्रदर्शन घडोवन हाडटा प्रत्येक बॉलर. तिसरी ओव्हर घेवन येता सागर. आणि बॉलिंग पॉवर प्ले जो कंपल्सरीली घेवपाक जाय 3 ओव्हरी भितर तो आता घेवपाक पडला. कारण 3 ओव्हरीन कॅप्टन जो आसा बॉलिंग सायडीचो ताणें घेवपाक जाय. जर घेना जाल्यार तिसरी ओव्हर आसतली ती बॉलिंग पॉवर प्ले आसतली. आणि हांगा एक संद आसा बरो स्कोर करपाचो बॅट्समॅनाक. येता सागर. बरो मारला शॉट, फक्त 1 रन मेळटलो मिड ऑफाच्या दिशेन. आणि ज्या रित्यान आमी पयल्या मॅचीकय पळयलें की सागर जो बॉलिंग घालता तो योकल लेंथ डिलिव्हरी ट्राय करता आणि म्हाका दिसता 3 ते 4 बॉल ताजे योकल लेंथार पडटा. शॉर्ट रनमाचेर बॉलिंग घालून एक बरी पेस निर्माण करता. एक बरे अशे बॉलर्स या टिमीक या पंगडान आसात. आनी एक बॉलर तसोच घेवन येता तो सागर. पयल्या बॉलाक आयल्या फक्त 1 रन. परत एकदा मारपाचो यत्न केल्लो आणि वायड, लेग सायडीच्या दिशेन वायड डिक्लेअर केला अंपायर राजेंद्र दाबोलकर, जो एक बरो नामवंत खेळाडू. वेटरन्स टुर्नामेंट जाल्लो हालींच जेन्ना नॉर्थ गोवाचो विनर आशिल्लो आणि गाझियाबादा वचून ऑल इंडिया लेवलाचेर BCCI टुर्नामेंटाक बेस्ट बॉलर ऑफ द टुर्नामेंट अवॉर्ड मेळिल्लो आमचो अंपायर, नामनेचो अंपायर राजेंद्र बाब दाबोलकर. आणि हो एक बरो बॉल. होदोळी तेच सांगतालो की ज्या रित्या हो बॉलिंग घालता, शॉर्ट रन अप आणि यॉकर कन्सिस्टंटली हिट करपी असो एक बरो बॉलर सागर. परत एकदा फक्त 1 रन. परत एक लो फुल टॉस बॉल. ज्या बॅटाक उखलून मारपाचो यत्न करतात बॅट्समॅन, पण सदांच फक्त मेळटा तो एक सिंगल. अजून पर्यंत एक्क्याचेर काम चालू दवरिल्लें आसा. फक्त एक्को. स्कोर जाल्लो आसा 10 सिंगल 10 रन. परत एकदा उखलून मारपाचो यत्न केल्लो सोक्या खातीर मेळटा परत एकदा 1च रन. एक्या फाटल्यान स्कोर जाल्लो आसा 11. एकार 1 11. पूण 1 रन काडून म्हाका दिसना एक बरी जी बॅटिंग टीम आसा, ज्या रित्यान 10 विकेटींनी जैत मेळिल्ले ह्या टिमीन सती महालक्ष्मी तुवें. परत एकदा उखलून मारपाचो यत्न केलो. फिल्डर आसा, बॉल वता पयस फिल्डराच्या आणि मेळपाक शकता चौको. बरी शॉट, एक कवर ड्रायवाचो आमकां एक नमुनो हांगा मेळिल्लो आसा. एक बरो शॉट जो चौकोयार जो राविल्ले ताची टीम ती मेळिल्ली आसा कवर्साच्या दिशेन. लेदर बॉलाचो शॉट टेनिस बॉलाच्या क्वार्टर फायनलीक. परत एकदा बऱ्यातलो बरो खेळ आणि रनआउटाचो चान्स आसा, पण थ्रो वीक आशिल्ल्या कारणान 1 रन आरामशीर घेतिल्लो आसा निखिल जिवगीकरान. आणि अशा रित्या ह्या 1 रना फाटल्यान 3 ओव्हरीची खेळाची समाप्ती जाल्ली आसा आणि स्कोर जाल्लो आसा स्कोर बोर्डाचेर 16 रन आणि 3 खेळगडी बाद. A 16 for the loss of 3 wickets after completion of 3 overs. And here the batters just getting the first boundary in the 3rd over. Rudra and Nikhil playing steadily, but I think they require the big sixes. They require the big over somewhere.
the singles and doubles are not going to get them to a big total, just like the total that was posted by Ganpati Warriors, total of somewhere around 50-55. But we have seen turnarounds happening. Just 1 over. Just 1 over is enough to change the momentum in any side's favor. Nikhil is a very good cricketer, and especially in leather ball cricket, he gets the shot just like he plays in the covers region, inside out. The previous boundary that fetched him 4 runs. A high caliber player in leather ball cricket, and he can certainly play well on a wicket like this. Once again, hitting the Yorker. Chance of a run out. Should be an easy run out. Oh. And this might be going towards the third umpire referral here. So Vishal, the bowler, starts off. No chance of a single. The bowler bowling and coming on his follow through. There was no reply from the non-strikers. He hesitated, and then opportunity to the strikers and by the keeper. So this might be close. So the decision coming out is the 4th wicket is out. So good here, good fielding from the bowler and also good collection from the keeper. So the wickets are falling one after the other here. Not looking good for AM cricketers. Here comes Vishal, just steps around in the point region. Softly played, just nudges around and gets a single. So now Pritesh, the batter, we have seen he can hit the big sixes, but I think he's right here, just taking the single, just getting a feel how the bowlers are bowling. It's not easy when 4 wickets are down and the new batter comes in. The expectations are high. There's a mountain of expectation from their teammates, their supporters, but it's all easy when you are expecting up too high. But when the bowlers are bowling so well in a big way, it's not easy to get the sixes. This time a wide signal here. So finally a wide conceded by the bowler. There was 1 wide conceded by the bowler Sagar, and this is the 2nd wide coming from the team Vishal. Otherwise they have been very good as far as line and length is concerned. No extras given away, nothing free on offer here for the batting unit of AM cricketers. That's really good bowling. That's high class bowling here from the bowlers. They are hitting this area on a consistent and persistent basis. Nothing given away to free their hands. The free offers are available in the mall, they say, but not here. This is really top class bowling. Pritesh is asking for a wide. Don't know why. Umpire is saying it's well inside. At this pace, you are trying to cut that ball. Tennis ball, you're not going to get that power. So something different has to be done by the batter here. 19 on the board still. 4th over in progress, just 1 ball left.
Once again, this is inside half and the ball is not going anywhere. Just landing safely to the keeper. 3 dot balls in a row and Vishal also bowls very good wicket taking over. So 4 overs have gone out of AM cricketers' calculations and they have managed to get a score of just 19 with the loss of 4 wickets. Certainly, people expecting some of the strong teams to enter into the semi-finals, quarter-finals. One of the team definitely has performed well is a Strikers. They struck some good blows. They were out in a dejected position in the first over when 3 wickets were lost, but they finally come back strongly in the quarter-finals and enter into the semi-finals. But here, I guess the bowling is so strong of this team of Sati Mahalakshmi. Of Tuve, it is very difficult for the other batters around of the opposite camp to get themselves going, get the big ones. Just like how the previous batters struggle, the same story continues here. Just the 1 boundary in the first 4 overs. In comes the batting power play. Trying the switch hit, way too late, way too late. He has been really good. He fires it in Mandar. He bowls in the first over, and whenever they require the services to be bowling in the batting or bowling power play, he comes for their rescue. What an asset to have you on their team, left arm medium pacer. This is in the air. He has timed it well. This might be 6 runs. This is the first 6. Big blow coming up, little late, but I guess still there is a lot of time. The timing was missing, but this time, no. The time is left in the match, and they require a little more timing. Good 6 here from Rudra, and now Rudra needs to play a Rudra Avatar innings here for his team. This is magnificent hit. This is a super shot here over the covers region, just falling short of the boundary and getting a little move on here. Little spike in this innings at the fag end. This is the 5th over and they are taking on the best bowler. Once again, Mandar, slightly expensive, 10 of 3. This is once again, this might be 6 runs, going up and over and catch dropped. Catch dropped outside the fence, but it's still 6 runs. This is a good comeback here by AM cricketers. I told you they require a Rudra Avatar's innings and he's doing that. Well, there were hardly any boundaries in the 60s and Rudra is doing Tandav over here. Tandav in the quarterfinals. Oh, he missed an opportunity. That was full toss ball. Just gets a single. He was going so well. Got 16 of 3 and there was also an opportunity. If he had even got it over the covers region fielder or the point region fielder, he would have got a boundary at least. Just gets a single. Sometimes it's an anti-climax. You put good balls away for 6s and bad balls gives you just a single. This is it nicely, straight down. No fielder there. And it goes in the hands of the spectator there and he wins the prize of 100 rupees. What a great over. This is for AM cricketers. So 5 overs gone, an expensive over from one of the bowlers. First time we are witnessing this. Mandar has been taken to cleaners here by both these batsmen, especially by the batsman on strike, Rudra. 23 runs coming off the previous over, and after 5 overs, the score is 42 for the loss of 4. So in comes Sagar. That's a good ball. That was
Maybe he could have tried to play at a long on the region. He went across batted shot. Sagar this time missed his Yorker length delivery or Yorker length, the area he consistently bowls. This is fantastic here. Appeal and is clean. Plum in front. He was shuffling across on the offside, trying to hit that flick shot on the leg side and hit in front of the wicket. No hesitation whatsoever to raise the fingers here from the umpire. 5th wicket going down at the score of 42. So wicket at the right time when both the batters were taking the game away, and especially the wicket of Rudra. Played a very good knock of 21 runs, quick fire 21. This is high. He has lifted on top, but didn't get the distance. Fielder takes it easily. So 2 wickets of 2 balls. Sagar bowling like the depth of ocean here for his team. And he is taking wickets successively. So Vivek just comes, Vivek just walks in, walks back, and now new batter Rohit. Yeah, they need a big hit from Rohit. Maybe 2 will do here at this stage. 42 is the score on a hat-trick. This strikes it well. This might be a catch. This might be the first hat-trick, and it's taken. Sagar takes a hat-trick in the quarterfinals for his team. What a performance from Sagar. See how the cricket changes. First we thought the way the bowlers were bowling, it was all going towards the bowling unit. Then it was a 1 over of 23 runs from the bat of Pritesh and Rudra that got back AM Warriors side, and suddenly hat-trick here. The graph is not consistent. The graph is just sometimes on top, sometimes down. It's like the Indian share market. The stock exchange, suddenly it is up, suddenly it is down. In the red, in the green as well sometimes. Once again, this is clean strike. This might be 6 runs. Tried hard here by the fielder, but all in vain. This was right in the slot and goes outside to a separate plot. Yes, 1 more 6. The 6 takes the score to 48 after completion of 6 overs. Well, if they get something past 60 runs, especially during this time, is going to be a good total. The ball definitely is not going to fly, just like how we have seen when the sun was shining brightly.
48 on the board with 6 overs and 1 over left. If they get around 12 or maybe 12, 15 runs, certainly might be a good total, might be a competitive total. 48 for the loss of 7 wickets. And in comes a new bowler, Prasad, the last bowling option here for Sati Mahalakshmi. Bowls the leg spinners, had to wait for that ball. Bowls nicely and accurately enough. Good throw from the deep, very good throw from the deep. Safe in the hands of the keeper. No chance of going for the second, not even thinking about it. So one shot of the 50 in the last over. Pritesh on strike. Oh, what a shot! Shuffled across, maximum power, maximum result. Well, although started little late, like the diesel engine, which takes a little time to get the speed going. But never mind, once it gets the speed, it keeps on going at a quick pace. Same is happening to AM cricketers. Certainly they have gone past 50, moved on to 55 runs. And still 4 balls left. Good batting here from the new batter. Oh, this is humongous. This is colossal strike. This is a mammoth hit. Goodness gracious me. Suddenly, from where this man has come. 3 sixes of 3 balls and we still don't know the name of the player. There is no extra person coming and to tell us the name. But whoever it is, he is striking big, just like the big players we have seen in IPL. Shailesh. Well, he has shaken the team of Sati Mahalakshmi. Shaken with those 2 sixes. Once again, this last over has changed the complexion of this entire match. Well, that was sudden lull. That was sudden lull in the camp of that AM cricketers. Suddenly they are waking and they are making a big noise. Well, don't play with cricket and fire. You will burn yourself. That's one of the examples. The game was heading in one direction. Suddenly it has shifted. That's a good ball, but I think the damage has been done. You expect them to get to a total of 60 plus, which has been done here by Shailesh. Shailesh wanted the strike, but it was not there. And just gets the single. 68. We didn't expect a score of even 55. They are getting 68. Somewhere 15 plus, I guess. In comes the last ball of this innings. Short ball and goes out. Goes out for the maximum. What an over this is. This has changed the complexion of the quarterfinals on its head. Pritesh and Shailesh, they are going with their heads high, and when AM cricketers coming on this ground, they will come with a lot of positive attitude and positive mindset. We are witnessing one of the finest comebacks, you can say, in the first innings in one of the grandest tournament held across Goa, Ujwala, Tukaram, Chopdekar Memorial Trophy, and this is the second quarterfinals. 1 point, it never looked as if this team is going to post a total like this one, but in cricket, in tennis ball cricket, it's just a matter of one good innings, it's just a matter of one good over, it's just a matter of one partnership. That's exactly what has happened here, and after completion of 7 overs, is 74 and 75 runs required for Sati Mahalakshmi to win this match. By saying that, I'll just take a leave in the commentary box, hand over the mic for the next 7 overs to Jai Bhosle, and see you tomorrow, all the spectators and viewers on 70-70
and it's bye for now. हॅलो हॅलो मातशे न्यू बॉल धाडात. हेलो 12th मैन प्लीज आइए आप कमेंट्री बॉक्स में. धन्यवाद हरीश सर, हार्दिक स्वागत है फिर एक बार आज के दिन का ये अंतिम मुकाबला. देखिए दोस्तों, क्रिकेट में मैं हमेशा कहता रहता हूँ उल्टा फेर कभी भी हो सकता है. एक तरफ ऐसा लग रहा था 5वें ओवर तक अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, शायद 60 का आंकड़ा भी मुकम्मल नहीं लग रहा था, लेकिन वो शानदार शैलेश के वो 4 छक्कों वाली पारी, नॉट आउट अभिजीत 25 रनों के वो शानदार पारी, और जिसके चलते हुए 75 रन बनाए हैं टोटल स्कोरबोर्ड पर. 75 रनों की आवश्यकता. पिछले मैच 74 बने हैं, 75 रनों की आवश्यकता है. नरेश स्ट्राइक पर, नॉट स्ट्राइक एंड पर. पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच साइश, और गेंदबाजी के लिए विकी. अंपायर का इशारा हमारे ओर आता हुआ मुकाबला शुरू होने का. क्वार्टर फाइनल का मुकाबला कौन सी टीम को इस मैदान पर फिर दोबारा, ये सूरत हाल इस मुकाबले का. 75 रन चाहिए निर्धारित 7 हाथों से खेला, सिंगल, खुद का खाता खोला नरेश. आउट यहाँ पर बनाए थे चेस करते हो, लेकिन वो मुकाबला अलग था, टीम अलग थी, टोटल अलग था. लेकिन साथ अगर बात की जाए गणपति वॉरियर्स का वो खेमा था, बड़े बड़े स्टार प्लेयर थे, लेकिन वहां पर अच्छी गेंदबाजी हुई थी. लेकिन यहाँ पर आखिर का ओवर बहुत ही खराब ओवर, 25-26 रन निकले उस ओवर में. और रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहा, एक काफी बाहर, ऑफ जंप से काफी बाहर, शायद वाइड रेखा से बाहर. अंपायर का इशारा वाइड का. अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल जो कि आगे बढ़ेगा 2 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर. क्या करना है अब, यहां से बल्लेबाजी तो करनी पड़ेगी आपको, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे. लगभग 11 के आसपास का औसत आपको बरकरार रखना पड़ेगा इन 7 ओवर में. फिर एक बार वो, इस बार अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, लेकिन इस बार छोटी गेंद, बल्ला ऊपर, गेंद नीचे से विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर. ऐसा लग रहा था 49 के ऊपर जो है रहा है, लेकिन वो 26 रन पूरी तरह से मैच को पलटा देने वाले. बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर. अच्छी
तो इस बार निश्चित रूप से खेला पॉइंट पर खिलाड़ी डीप पॉइंट पर गली से आते गेंद को फील्ड करते, 1 रन और खाते में अपना खाता खोला यहाँ पर साइश ने। टोटल रन संख्या 3 रन बगैर किसी नुकसान पर। तो हर गेंद के ऊपर रन बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। ओ ये हटकर खेलने की कोशिश, अजब और गरब तरीका है ये स्ट्रोक डीप के दिशा में। जब तक फील्डर फील्ड करते दूसरे के लिए पलटे, दूसरा रन आसानी के साथ पूरे करते हुए हमारे सामने से अभी अभी गुजरे हैं मिस्टर सिक्सर के नाम से जाने जाने वाले हमारे करीबी दोस्त राजेश वांगनकर। इनका खेल देखने के लिए दर्शक आज भी उतने तादाद में मौजूद रहते हैं। 2 रन निकले, 2 रन के साथ टोटल पहुंचा है 5 पर। ओ ये अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक लेग विपर के अपील, लेकिन शायद का इशारा अंपायर का आता हुआ। पहले ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त। इस ओवर में 6 रन, कोई रनों के जवाब में अभी भी 6 ओवर का खेल बाकी और इन 6 ओवर में चाहिए अभी और 70 रन। मैच की अगर बात की जाए तो मैच जिस तरह से बना है शाम के वक्त इस मैदान पर रन इसमें बनना मैं कहूँगा थोड़ा सा खतरे की घंटी होगी सामने वाली टीम के लिए। लेकिन जिन्होंने रन इतने बनाए 74, आपको सिर्फ एक सिंगल अब ज्यादा बनाना है और जिसे चलते हुए इस मैदान पर उतना मुश्किल होगा नहीं, क्योंकि अगर सामने वाली टीम बल्लेबाजी करती है तो आपके पास भी वो बल्लेबाजी मौजूद है। और अंपायर का इशारा पावर प्ले लेना अनिवार्य, पहले ओवर से लेकर तीसरे ओवर तक। ये दूसरा ओवर और गेंदबाजी के लिए रोहित आएंगे। पिछले मुकाबले में शानदार गेंदबाजी दोनों टीमों के ओर से देखने को मिले थे। अब यहाँ पर देखना है रोहित और उनके सामने नरेश, इनफॉर्म बल्लेबाज। इस शानदार स्ट्रोक सुबह के सत्र में आपको देखने को मिले दूसरे सेशन में। पटकी हुई गेंद इस बार खेल दिया डीप के लेग की दिशा में, पीछा किया जा रहा है खिलाड़ी। जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करने की कोशिश होती तब तक 2 रन और खाते में जुड़ते हुए नरेश के साथ साथ टीम के और 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 8 रन पर। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश लेकिन ताकत नहीं प्रदान कर पाए। जहां पर बल्ले का स्टिकर होता है लगभग वहां पर गेंद लगी, वहां पर स्ट्रोक नहीं निकला जो स्ट्रोक खेलना चाहते थे। पटके हुए आड़े बल्ले के साथ लॉन्ग ऑन मिड ऑन पर खिलाड़ी अनंत वहां पर आते हुए काफी तेज तो देखिए बहुत ही बढ़िया मिलेगा सिंगल, सिंगल के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ जो कि 9 रन बगैर किसी नुकसान पर। 2 बड़े शॉट हर ओवर में आपको लगाने पड़ेंगे मैच में वापसी करने के लिए, लेकिन वो 2 ओवर का इंतजार भी करना पड़ेगा। साथ साथ विकेट बचाकर अपने टीम की टोटल को आगे लेकर जाना पड़ेगा। एक बार गेंदबाज के सर के ऊपर से बीच में खिलाड़ी तैनात निखिल नजर आते हुए और बैकअप जो कि अनंत मांद्रेकर उनको करते हुए 1 रन और खाते में, 1 रन के साथ साथ स्कोर अब डबल फिगर में यानी कि 10 रन बगैर किसी नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी 6 ओवर लेकिन वो 26 और 23 का वो ओवर यानी कि 2 ओवर में वो 49 रन निकले, वो चुभेगा, कहाँ पे चुभेगा। पटकी हुई गेंद इस बार हवा में खेल बैठे हैं, शायद कैच का मौका हो सकता है, लेकिन कैच देखिए किस तरह से पकड़ा। दोनों हाथ लेकर आए थे लेकिन एक हाथ में गेंद फंसी, विकेट निकला नरेश का, पहले विकेट का बदन। 10 रन पर यह पहली सफलता वापस खेमे की ओर लौटती हुई। न्यू बैटर मैदान पर शुभम। अगर यही टोटल 60 के आसपास का होता ना तो शायद बल्लेबाजी कुछ अलग तरह की नजर आती। ये 10-15 रन जो ज्यादा बनाए ना ये दबाव में डालने वाली बल्लेबाजी रही है,
लेकिन एक विकेट निकला, सेट बल्लेबाज को आउट कर दिया। नरेश रन बना रहे थे, उनको चलता कर दिया। शुभम आए नए बल्लेबाज बाएं हाथ के, सामना करेंगे रोहित की अगली गेंद का। ये अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, सिंगल जरूर मिलेगा। सिंगल से खासा फर्क पड़ेगा नहीं एम क्रिकेटर्स टीम को, क्योंकि जानते हैं अगर ये बड़ा टोटल पीछा करना है तो बड़े शॉट के लिए बल्लेबाज जाएंगे, उनसे दूर गेंद रखने की कोशिश कर रहे हैं। यॉर्कर लेग की गेंदबाजी आज सागर मोरजकर की अगर बात की जाए, बहुत ही शानदार यॉर्कर देखने को मिले। लगातार एक ओवर में 4 गेंदे यॉर्कर लेग की डालना उतना आसान नहीं होता, लेकिन वो उन्होंने कर दिखाया है। लेकिन आखिरी ओवर ने वो उसके ऊपर पूरा पानी फेर दिया। ओ इस बार खड़े खड़े खेला हुआ स्ट्रोक आनंद मांद्रेकर के सीधे हाथ में, और एक विकेट का पतन। साई शावड़कर पवेलियन में वापस। डबल विकेट वाला ये ओवर रहा रोहित का दूसरा, यानी कि सलामी जोड़ी अब मात्र तंबू में लौटती हुई। थैंक यू। न्यू बैटर मैदान पर सूरज, यानी कि सर्वेश, जो कि मैदान पर सातपुते के नाम से जाना जाता है ये खिलाड़ी। और निश्चित रूप से आज कुछ चमत्कार करना पड़ेगा, आज चमकना पड़ेगा मैदान पर, वो बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अपने टीम के लिए। खतरा मंडरा रहा है, वो खतरे के लिए आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, तो भी याद रखा जाएगा आपका नाम इस मैदान पर। पहले ओवर का 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, और टोटल जो कि 11 रन स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में फिर एक बार नजर आ रहे हैं विकी। अपना कोटे का दूसरा ओवर और टीम के ओर से तीसरा ओवर लेकर ये पावर प्ले का ओवर पूरी तरह से गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष में रहा। स्ट्राइक पर शुभम, सामना करेंगे विकी की गेंदबाजी का। ओ तेज रफ्तार वाले, देखिए सटीक यॉर्कर, ऑफ स्टंप यॉर्कर, बहुत ही बढ़िया शानदार गेंदबाजी विकी की। यह अनुभव है, कंधे का इस्तेमाल पूरेपूर, कंधे की ताकत का इस्तेमाल, गेंद के पीछे लगाते हुए तेज पे गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में। अच्छी गेंदबाजी विकी। जब आपके पास बड़ी पूंजी हो ना तो गेंदबाजी अच्छी होती है। और इस बार उठा कर खेला है, क्या इसमें दूरी है, निखिल नहीं रोक पाएंगे, होते तो भी क्या, गेंद निकली सीमारे का बाहर, 6 रन के लिए। थैंक यू। बहुत ही शानदार छक्का, जिस छक्के की आवश्यकता थी, बेहद आवश्यकता थी, वो छक्का आ चुका है अब मात्र इस मैदान पर। शुभम के बल्ले से इस बार खेल दिया, लेकिन जमीन के सारे सिंगल मिड विकेट पर खिलाड़ी आते, जब तक गेंद को फील्ड करते, थोड़े से फंबल हो गए लेकिन फायदा नहीं मिलेगा। एक रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 18 रन पर। ऐसे छक्के आपको लगाने पड़ेंगे, लगातार लगाने पड़ेंगे, हर ओवर में लगाने पड़ेंगे, तभी बात बनेगी। क्योंकि आपने रन तो इस तरह से खैरात में बांटे, उसका तो भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। सामने वाली टीम को आपको अगर हराना है तो आपको अटैकिंग बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। क्रिकेट में हमेशा कहा जाता है अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, और वही दर्शाना है आपको मैदान पर। सर्विस ऑफ स्ट्राइक पर सामना करेंगे विकी की अगली गेंद का। ओ इस बार हवा में खेल बैठे, ऊंची ज्यादा चली गई, गेंदबाज खुद आए गेंद के नीचे, और सर्वेश हो गए गोल्डन डक का शिकार। थोड़ी सी स्लोअर वन जैसी डिलीवरी थी, और शॉट थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे क्या सर्वेश। मैं कहूँगा थोड़ी सी उंगलियां भी फेरी थी, और ये मिट्टी जो है ना वो इस मैदान पर थोड़ा सा लाल मिट्टी का मैदान जो कि पिच बनाया गया, तो गेंदबाज को थोड़ी सी मदद मिलती हुई।
थोड़ा सा गेंद रिवर्स के जैसा यहाँ पर टिप्पा गिरने के बाद निकल आता है और बल्लेबाज थोड़े से दिक्कत में आ जाते हैं। अजय न्यू बैटर, और इस बार का एक अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला। आते आते अजय के बल्ले से सिंगल मात्र निकलेगा। तो देखिए कितना सटीक यहाँ पर, एक रन और खाते में डीप स्क्वायर लेग से वो जब तक फील्डर फील्ड करता। टोटल 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नरेश, उसके बाद सलामी जोड़ी साइश और उसके बाद निकले सर्वेश। क्या यहाँ पर कोई वापसी का दरवाजा खुल जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फुल टॉस गेंद इस बार हवा में खेल बैठे, फिर एक बार ऊंची चले गए और एक विकेट। इस ओवर में भी निकले हैं 2 विकेट। शायद जिस तरह से पिछले मुकाबले में साइश और नरेश ने शुरुआत करी थी, लड़ेगी टीम ऐसा लग रहा था, लेकिन शाम के वक्त थोड़ा सा धीमा हो जाता है पेच, और मैदान की अगर बात की जाए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है जब चेस करना, और वो भी 70 के ऊपर का टोटल 7 ओवर में, तो थोड़ी सी दिक्कतें तो आएगी। न्यू बैटर मैदान पर सुदेश, विकेट कीपर बैटर मैदान के अंदर दाखिल होता हुआ। 3 ओवरों का खेल अब समाप्त होता हुआ 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर। विपरीत परिस्थितियां मैदान पर उत्पन्न हो चुके हैं, लेकिन अगर दोनों टीमों की बात की जाए ना, उसी तरह का टोटल था। जब पहले 3 ओवर में तो 16 रन बने थे, अगर बात की जाए तो कोई विकेट, उनके भी 3 विकेट जा चुके थे पहले 3 ओवर में अगर बात की जाए, लेकिन वहीं से वो चौथा ओवर भी 3 रन का निकला था, 5वां ओवर 23 और आखिरी ओवर प्रसाद का वो 26। वैसे 2 ओवर आपको ढूंढने पड़ेंगे, किसी गेंदबाजों को आपको टारगेट करना पड़ेगा, इंतजार तो आपका करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए सामना करना है। गेंदबाज अब निखिल, गेंदबाजी में पहला बदलाव निखिल ड्यूजीकर, ये गेंदबाज आपको नजर आएंगे। सामना करेंगे अजय, आगे निकलकर खेलने की कोशिश, वाइड का इशारा अंपायर का, थोड़ी सी बाहर की तरफ निकले। अतिरिक्त सिंगल के साथ साथ 20 रन पर पहुंचा है टोटल। अभी भी 55 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। ओ अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, इस बार पूरी तरह से चकमा दे दिया। स्लोअर 1 डिलीवरी, और जिसके चलते और बल्लेबाज पूरी तरह से खामोश नजर आ रहे हैं। काफी दर्शक इस आज के पहले दिन में इस मैदान पर उपस्थित है, उनको भी कमेंट्री बॉक्स से हमारा प्यार भरा नमस्कार है। आगे निकले थे खेलने के लिए, बल्ले के ऊपर से लगे और स्लिप में से निकली गेंद फील्ड की जाती, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ सिंगल के साथ टोटल 21 रन 4 विकेट के नुकसान पर 76 रनों के जवाब में। क्या मैच का ये सूरत हाल देखिए, पहले 74 रन बनाए, 75 रनों का पीछा करते वक्त शायद ऐसा लग रहा था तगड़ी शुरुआत मिलेगी सलामी जोड़ी से, लेकिन वो जल्दी लौटी और उसके बाद मानो गेंदबाजी वरचढ़ होकर हावी होकर बोल रही है मैदान पर। निखिल फिर एक बार, ओ इस बार खेलना चाहते थे, लेग बिफोर की अपील जरूर किया, अंपायर का इशारा जरूर आ जाएगा हमारी तरफ पर। लेग बाइट्स का 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 1 रन के साथ टोटल पहुंचा 22 पर। 4 विकेट गंवाने के बाद अनुमान तो इस तरह का टोटल हमेशा दूसरे ओवर में नजर आता है, दूसरे या तीसरे, लेकिन ये थोड़ा सा मैं कहूंगा विकेट 2 ज्यादा निकले हैं। ओ दूर से खेलने की कोशिश, बल्ले के अंदरूनी किनारे से निकली, लेग गली की दिशा में जब तक फील्ड की जाते, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। 1 रन के साथ टोटल 23 रन, 23 लॉस ऑफ विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। शानदार गेंदबाजी देखने को मिली, रोहित की शानदार गेंदबाजी, फुल टॉस गेंद विकी की देखने को मिली, इस बार सीधा विकेटों के सामने पाए गए और 1 विकेट। अब आधी टीम वापस कर चुके खेमे में, 5वां विकेट, सुदेश आउट होकर बैल में वापस।
थैंक यू। मैदान पर अब आए हैं विशाल। विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए विशाल ये नए बैटर मैदान पर। यहां से अगर किसी एक बल्लेबाज ने मैच जिता दिया ना तो शायद वो हीरो रहेगा, साल भर उसके गुणगान यहाँ पर सुनने को मिलेंगे। लेकिन वो बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, सामने वाले गेंदबाजी के ऊपर आपको धावा बोलना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा, हावी होना पड़ेगा। निखिल फिर एक बार निकलते हुए, इस बार खेल दिया, थोड़े से बैकफुट पर जाकर स्टीयर कर दिया था इस गेंद को। एक रन और खाते में जुड़ा। सिंगल के साथ साथ ओवर समाप्त होता है चौथा। 4 ओवरों का खेल समाप्त। 6 के औसत से 24 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 5 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदों का खेल बाकी और 51 रनों की है और आवश्यकता। अंपायर का इशारा हमारे ओर आता हुआ। बैटिंग चॉइस पावर प्ले का। अब 18 गेंदों का खेल बाकी है और जीतने के लिए 51 रनों की आवश्यकता। प्रति ओवर 17 के औसत से रन बनाने, यानी कि 3 बड़े हिट आपको लगाने पड़ेंगे हर ओवर में। 17 रन, लेकिन वो अगर बात की जाए ना, 2 ओवर आपको बड़े ढूंढने हैं, एक 23 रनों का, एक 26 रनों का। और गेंदबाजी के लिए रोहित ये गेंदबाज आपको नजर आएंगे। गोवा राज्य की बात की जाए, बहुत सारे अनगिनत क्रिकेट खिलाड़ी की बात जुबा पे आ जाती है। राजेश वांगनकर, सनम सालगांवकर, संजू नागवेकर, सत दत्ता, साहिल। ओ ये अच्छी गेंद देखिए, गेंदबाजी देखिए, ऊपर से नीचे हाथ लेकर आते हैं। शायद ऐसा लगता है गेंद बाउंस हो जाएगी, लेकिन टिप्पा गिरने के बाद गेंद लगभग घुटनों के बल से विकेटों के ऊपर से निकल जाते हैं विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। यह सोच भरी गेंदबाजी है रोहित की, समय लेते हैं गेंदबाजी करने के लिए। ये देखिए गेंद, बार बार देखिए, लगातार देखिए किस तरह से टेनिस बॉल क्रिकेट में ऐसी गेंदबाजी, लाजमी गेंदबाजी मैदान पर बहुत ही शानदार, पूरी तरह से बल्लेबाजों को बांध कर रख दिया है। कोई मौका नहीं बल्लेबाज को हाथ खोलने का। अब हाथ खोलते खोलते बहुत देर हो जाएगी। इस बार भटके थोड़े से दिशा से, ऑफ स्टंप से बाहर। अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। अतिरिक्त सिंगल, अतिरिक्त सिंगल। 50 रनों की और आवश्यकता है। शायद ऐसा होता कि और 25 रनों की आवश्यकता तो मैच बन जाता, ये 50 रन बनाने हैं। और खाते में 1 रन के साथ टोटल पहुंचा 26 रन पर। मैं बार बार जो 2 ओवर की बात कर रहा था तो यही है वो, 50 रन 50 रन, वही 49 रन, वही काम कर गए जो कि सामने वाली टीम के लिए। और आखिर का ओवर शैलेश की बल्लेबाजी, 4 छक्के। ओ ये अच्छी गेंद, लेकिन काफी बाहर थी। अंपायर का इशारा, अतिरिक्त और एक सिंगल, अतिरिक्त सिंगल के साथ 48 रनों की और आवश्यकता। 8 छक्कों का ये मुकाबला है। 8 सिक्सर अगर लग जाए ना, मैच वापस, मैच जीत सकती है। ओ ये अच्छी गेंद, ऐसे गेंद के ऊपर छक्का लगाना उतना मुश्किल, बल्ले से गेंद नहीं लग रही तो छक्का कहां से निकलेगा। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, पूरी तरह से होश आवाज में बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी भी करते हुए, किसी बल्लेबाज को बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। इस बार खेल दिया निश्चित रूप से, और एक सिंगल निकलेगा। सिंगल के साथ साथ टोटल आगे बढ़ेगा। टोटल पहुंचा 28 रन स्कोर बोर्ड पर। हमारे और एक करीबी दोस्त साहिल वांगनकर यहाँ पर नजर आते हुए, जिनको हाल ही में एमजीपी ट्रॉफी में बेस्ट ऑलराउंडर का किताब उनको दिया गया है, नवाजा गया है। इस साल गजब के फॉर्म में है। ओ इस बार दूर से खेला हुआ, वो शॉट पर खिलाड़ी तैनात है, अकेले भाग रहे थे लेकिन वापस जाना मुनासिब समझा। कोई रन नहीं, ओवर समाप्त होता हुआ। और एक 5वां ओवर, एक नपतला ओवर समाप्त। 28 रन, इस ओवर में सिर्फ निकले हैं 4 रन।
है क्यों कल इस मैदान पर आपको देखने के मिलेंगे ढेर सारे गोवन टेनिस बॉल क्रिकेट स्टार। गोवा पुलिस की टीम दिखाई देगी, वहां पर पुनाजी कलगुटकर दिखाई देगी, साथ साथ साहिल वाइंगनकर की टीम लड़ती हुई दिखाई देगी, नरेश आसलकर द लीजेंड खिलाड़ी उनकी भी टीम आपको दिखाई देंगे। ढेर सारे कल गोवन स्टार इस मैदान पर देखने को मिलेंगे। आज काफी खुश रहे होंगे मोहित चोपड़ेकर, उनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। ये खुशी की नींद है। ओ इस बार खेल दिया, हवा में कैच का मौका हो सकता है और एक ओ हो, जाते का है सोनिए, दबोच लिया आखिरकार और एक विकेट निकला। कल इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन और दूसरे दिन में पहला मुकाबला सुबह ठीक 9 बजे शुरू होगा। साई गणेश वर्सेस अमेजिंग अस्नोला। ध्यान दीजिए, सुबह 9 बजे साई गणेश वर्सेस अमेजिंग अस्नोला के बीच आपको असोलना के बीच यहाँ पर ये मुकाबला शुरू होगा, कल के दिन का पहला मुकाबला। और अब यहाँ से अब मैं तो कहूंगा औपचारिकता इस मुकाबले की बची है इस मुकाबले के दौरान। और रोहित आए हैं, रोहित हड़नकर गेंदबाजी के लिए। ये फिर की गेंदबाजी, बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं। अब बची हुई गेंदें सिर्फ आपको खेलनी है क्योंकि मैच का नतीजा लगभग स्पष्ट हो चुका है। आपने जिस तरह से रन खैरात में बांटे वो बनाते बनाते खुद के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है मैदान पर। ओ ये खड़े खड़े खेलने की कोशिश, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। पहले सेशन में ए स्ट्राइकर्स की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और लगभग दूसरे सेशन में आज की दूसरी सेमीफाइनलिस्ट हमें लगभग एम क्रिकेटर्स की टीम मिल चुकी है। लगभग औपचारिकता बाकी है सिर्फ इस मुकाबले की। कुछ गेंदें बची है इस ओवर की। टोटल स्कोर की बात की जाए तो 29 रन स्कोर बोर्ड पर। ओ दूर से खेलने की कोशिश, बल्लेबाज बेट, विकेट कीपर बेट, डॉट गेंद, बिंदी गेंद निकलती हुई। कुल 7 गेंदों का अभी भी खेल बाकी है। तो बहुत सारे रन बनाने, 46 रन बनाने हैं 7 गेंदों में। इस बार खेल दिया है पॉइंट के ऊपर से, लगभग गेंद आ रही है थर्ड मैन की दिशा में 4 रन के लिए। बहुत देर के बाद लगा चौका। थैंक यू। टोटल पहुंचा 33 पर, आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है। और आखिरी ओवर डालने के लिए गेंदबाज पांडुरंग। यहां से अब सिर्फ आपको बची हुई 6 गेंदें खेलनी है और रन तो नहीं बनेंगे। आज इस प्रतियोगिता का पहला दिन आप देख रहे थे सुबह से मुकाबले, ये विकेट जरूर निकलेगा, लेकिन तब तक बात करते हैं उज्ज्वला तुकाराम चोपड़ेकर मेमोरियल ट्रॉफी स्पॉन्सर बाय मोहित चोपड़ेकर। और इस मैदान पर आपने सुबह से देखे छक्के चौकों के बरसात देखे, सुबह काफी खुश हो गए थे मोहित चोपड़ेकर और अब काफी खुश होंगे आशीष नाइक क्योंकि उनकी टीम यहाँ पर सेमीफाइनल में लगभग प्रवेश कर चुके हैं। देखिए चमत्कार इसे कहा जाता है, चमत्कार को नमस्कार किया जाता है और आनंद जहां जहां है वहां पर तो आनंद ही आनंद होगा। ये ग्राउंड देखिए कि जिस तरह से ग्राउंड बनाया गया, यूट्यूब के ऊपर क्या व्यू दिखता है। बहुत सारे कमेंट आए थे हमें, क्या मैदान बनाया है, क्या मैदान है। इस मैदान पर हरा भरा मैदान कम देखने को मिलता है। गर्मी का एहसास भी नहीं हुआ इस मैदान के ऊपर खेलते हुए, कमेंट्री करते हुए अंपायर को भी कुछ गर्मी का एहसास नहीं हुआ। इस बार खेला जरूर, हवा में खेल बैठे और एक विकेट का बतन, बैक टू बैक विकेट निकले हैं अब तक।
ऑन हैट्रिक के ऊपर आ चुके हैं पांडुरंग। इस इनिंग में, पहली इनिंग में हैट्रिक बनाई थी सागर मोरजकर ने, लेकिन उसके ऊपर पानी फिर गया। देखना है ये इस आखिरी ओवर में एक ही मुकाबले में दूसरी हैट्रिक हो पाती है या नहीं। अब थोड़ी सी ठंडी लग रही है। सुबह से यहाँ पर गर्मी का वातावरण था, अब पूरी तरह से ठंडा हो गया है, ठंडा ठंडा कोल कोल। 4 गेंदों का मात्र खेल बाकी है, औपचारिकता बाकी है। दर्शकों को भी पता चल चुका है, दर्शक अपने घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। पूरी तरह से एक तरफा मुकाबला। कल सुबह फिर एक बार आपके साथ मिलेंगे ऑन हैट्रिक के ऊपर। ओ इस बार हैट्रिक नहीं मुकम्मल होने दी, डिफेंसिव स्ट्रोक खेल दिया यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी पांडुरंग के। 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। बड़ा शॉट आएगा, 4 रन जरूर निकलेंगे, लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। चौका निकला और चौके के साथ टोटल 37 पर आधा फासला अभी तय हो चुका है और गेंदे बचे हैं सिर्फ 2। यानी कि इससे पता चलता है बल्लेबाजी किस तरह से रही और गेंदबाजी किस तरह से रही। 2 विकेट पांडुरंग के खाते में, एक चौका निकला है, 2 गेंदे अभी भी शेष है। एक अच्छा माहौल बनाया है इस क्रिकेट टूर्नामेंट के जरिए और इस बार घूमकर खेलने की कोशिश। गेंद और बल्ले का शायद संपर्क हुआ है। 22 जी नहीं, 22 का ये मिलेगा चौका। जाते जाते कुछ रन बनाते हुए टोटल इस चौके के साथ पहुंचा 41 रन पर। बात की जाए तो उज्ज्वला तुकाराम चोपड़ेकर मेमोरियल ट्रॉफी 2023 आज का पहला दिन। दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम हमको मिल चुके हैं, एम क्रिकेटर्स। और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। टोटल 47 पर यह पारी यहां पर समाप्त होते हुए और इस मुकाबले को 27 रनों से जीतकर एम क्रिकेटर्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। और इस मैच का टर्निंग पॉइंट देखिए, 49 पर था वो, टोटल 48 पर था और आखिर के सिर्फ 6 गेंदों में आए, मैदान पर छाए, 25 रनों की शानदार बारी खेली 4 छक्कों के साथ। वो शैलेश इस मैच के मैन ऑफ द मैच घोषित किए जाते हैं। आइए शैलेश जी, मैन ऑफ द मैच आप स्वीकार करें। आज के दिन के लिए इतना ही, कल सुबह फिर 9 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, धन्यवाद।